हाज़रीन महफ़िल से गुज़ारिश है तालियों से इस्तक़बाल करें। आइए महफ़िल का आगाज़ करते हैं उस बारी ताला की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करके, जो बड़ा रहीम है, जो बड़ा करीम है, जो बड़ा रहमान है, बड़ी अज़मत वाला है और बड़ी बरकत वाला है। मेरी गुज़ारिश है क़ारी जनाब आरिफ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की चंद आयात की तिलावत फरमाएँ। क़ारी जनाब आरिफ साहब, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हिम्मत अफजाई का शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मदऊ किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की उन तमाम शैतानी मज़रतों से, और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है और मेहरबान है। आई सीक प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह फ्रॉम ऑल satanic evils in the name of Allah, the most merciful and the most compassionate. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. O Prophet, read in the name of your Lord who created you. ऐ नबी, अपने उस परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने तुम्हारी तख्लीक की है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, read in the name of your creator who is the most generous, और पढ़िए उस अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और इज्जत देने वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम. He is the creator who taught human beings the knowledge by the pen, and he taught human beings what he did not know. उसने इंसान को कलम के जरिए नॉलेज सिखाया, और वो इंसान जो इससे पहले कुछ नहीं जानता था। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजआ. And ultimately you have to return to the Almighty who had created you. और आखिर में हम सबको उसी के पास जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉट। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। क़ारी साहब, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था।
जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था. Ladies and gentlemen, we began with the light of knowledge, and we will now proceed to physical light, Nurun ala Nur. I request everyone present here on the dais to please proceed to the digital lighting of the lamp before we begin with the proceedings. Thank you so much for doing these honors. जबान कोई भी हो, जज्बा एक ही होता है. ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं. तुम्ही हमरे हो सहारे, तुम्ही हमका हो संभाले, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं. Honorable Lieutenant General Zamiruddin Shah Sahab, Professor Syed Wasim Akhtar Sahab, Janab Shahid Siddiqui Sahab, Dr. Najib Jain Sahab, Professor Javed Musarat Sahab, many dignitaries amongst the audience, ladies and gentlemen, I take this opportunity to welcome you all to the National Conference on Education and Development, Empowering and Uplifting the Underprivileged, organized by the Alliance for Economic and Educational Development of the Underprivileged, here at the Integral University today on the 29th day of April 2023. Ladies and gentlemen, this conference has been jointly organized by the IDU, as now it's becoming a household name, and the Integral University, Lucknow, which is also by now a household name. We thank our sponsors, the PA Inamdar University, Azam Campus, Pune, the School of India, the Rekhta Foundation, a Future Tech School, the Tahira and Idris Farooqi Foundation, and the London Dairy. We thank the sponsors for collaborating with us, the organizers, in having put this beautiful gathering together. ख़वातीन व हज़रात, मेरा ये इदराक नहीं, रुतबा नहीं कि मैं आप सबका खैर मकदम कर सकूं, और इस महफिल की ये खुशकिस्मती है कि इस महफिल में जनाब लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब मौजूद हैं, जो कि आप सबका खातिर ख़्वाह इस्तकबाल करेंगे अपने वेलकम एड्रेस में. He has been the former Deputy Chief of Army Staff and the former Vice Chancellor of AMU. And I bear testimony of those 5 years that we saw an unprecedented rise in the academic standards, quality and excellence at the AMU. We were accredited NAC A+ during his tenure, under his leadership. We saw so many developments like the bridge course, the Madrasa Academy, like the newly founded 13th faculty of the Aligarh Muslim University, namely the Faculty of International Studies. We saw a record induction of teachers in the university and promotions of teachers in the university. After a very long time, until now not repeated, we saw 5 consequent convocations in the university. And all this because our leader was Lieutenant General Zamiruddin Shah. His mission continues with the Sir Syed Public Schools, and very much in alignment with the IDU, he is contributing to nation building and to the development of the underprivileged in whatever way he can, mostly by inspiring young people like us. Zamiruddin Shah Sahab, जब अलीगढ़ से 5 साल के एक बहुत कामयाब टेन्योर के बाद रुखसत हो रहे थे, तो उनकी खिदमत में एक सिपासनामा पेश किया गया था, नाचीज़ ने तहरीर किया था, और उसके आखिर में हमने इकबाल का ये शेर दर्ज किया था कि जहाँ में अहले ईमान
सूरत खुर्शीद जीते हैं। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। Lieutenant General Zamiruddin Shah Sahab for the welcome address, please. Assalamu alaikum. Jai Hind. You would have noticed some changes which we insisted on. I think it is time to change. अभी तब्दीली का जमाना आ गया है. कोई फ्लावर बुके नहीं पेश किए गए. हमारी कोशिश ये थी कि टाइम पे शुरू हो, क्योंकि मैं देखता था कि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, खासकर मुस्लिम गैदरिंग्स में, वक्त की पाबंदी बिल्कुल नहीं. So we tried, but since there were just 5 of us, we postponed it. So, ladies and gentlemen, if we don't change, we are going to suffer. I would like to thank the Chancellor of Integral University for 2 things. One is for the miracle which he has performed. I see it on the ground. All of you can see it yourself. Also for hosting the conference of IDU. Another change you would have noticed is that I didn't take a list of 30, 40 names. Honorable so-and-so, 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 so-and-so. I think it's a sheer waste of time. We need to get on to the facts instead of wasting time on small tokens and other things. Ladies and gentlemen, please change. Nobody will honor and give you dignity. I'm repeating. Nobody will honor and give you dignity if you yell for it, if you cry for it. No. You've got to earn it. And you've got to earn it in 2 ways. One is through education, ilm. And secondly, ekta. That means we have to be the underprivileged, have to be one team to put up a united front. That is absolutely essential. There are few other things which the underprivileged have got to give up. One is caste. There's no such thing as caste. I mean, it's the first time I'm hearing of Pasmanda Musalmans, Farana Musalman, so-and-so Musalman. There's no such thing. Islam does not recognize it. And we must give it up. If we don't, we will be the losers. The second is wasteful expenditure. We are wasting money on marriages, birthdays, anniversaries. Use that money for the education of your children. Use that money for the education of the underprivileged. I am using the word underprivileged because we are part of the underprivileged community. And there are a whole lot of us, the Adivasis, the tribals and everybody else. And we want to project a unified front, and we want to work for all underprivileged, not solely for the Muslim community, but we all know which is the largest underprivileged community. We don't have to mention that. Please utilize your money for the cause of education. I don't want to get into controversy. I've been trying to rake it up that education should be the first priority.
nothing else. We got to change our subjects. We got to teach, number one, artificial intelligence. Information technology is now pushed to the back. Artificial intelligence is the key to modern living and education. I recently visited Chile, where my daughter is, and to my horror, I found that very few in the embassy staff knew Spanish. Fortunately, my son-in-law, who's a naval officer, and my daughter are fluent. Absolutely, I was so impressed with their efforts at learning Spanish. They were fluent. They were talking, they were giving speeches and everything else. And the ambassadors of the other countries told me, Janil Shah, your son-in-law and your daughter have mastered this. And because of this, they could do something for the country of their birth. So, my advice to you all is, if you got an educational institution, give priority to speaking abilities. Students must be able to speak and write properly. Otherwise, they cannot become leaders. जो ठीक बोल नहीं सकते, वो खाली जिंदगी में ऑर्डर्स ही लेते रहेंगे, ऑर्डर्स नहीं दे सकेंगे किसी को. The underprivileged have to be so strong. The underprivileged have to be so strong that they become decision makers, not receivers of discipline, of decisions. We must make a concerted effort to have our young boys and girls into positions of authority. And I must compliment Zakat Foundation for doing that very, very great service for the community. They are training young boys and girls of all communities to become officers in the IAS, IPS. Unless we enter these services, we cannot become a vibrant and strong community. Research. क्या रिसर्च कर रहे हैं साहब? मैं फलाना कर रहा हूं. No use. Do research in things which matter for our country. What are the things that matter? Food. भूखा कोई नहीं होना चाहिए. Water. मैंने अभी फिलहाल गवर्नर उत्तराखंड से मुलाकात की और मैंने कहा, गवर्नर साहब, गंगा की शुरुआत तो उत्तराखंड में हुई, तो आप क्यों नहीं कदम बढ़ाते ताकि हमारे जो दरिया हैं हिंदुस्तान के वो साफ हो जाए. और मैंने बतलाया कि जो स्टेशंस आपने कायम किए 100 कुछ 20 या 30 sewage treatment plants, they are a waste of money. अच्छा, मैंने एक तो ऑल नॉन ऑपरेशनल, दूसरा I explained to him, you are trying to use engineering technology to a biological problem. गंद है, engineering से साफ नहीं होगी. You have to regenerate the life of the river. You have to regenerate fish and everything else. And I sent him a paper. Why can't the underprivileged take a lead in this? You know, you can shout, I'm being discriminated, I'm being this, I'm being that. Nobody is going to listen to you. Nobody is going to help you. But if you take steps
like this, cleaning the Ganga, cleaning the Yamuna. You will be heard. आपकी आवाज लोग सुनेंगे. अगर आप रोते रहेंगे कोई नहीं सुनेगा. Nobody is going to listen to you. Next is energy. मैंने एमयू में बहुत जोर दिया था सोलर पावर पे. आप अगर जाएंगे तो वहां सोलर फार्म दिखलाई देगा जो भट्टे की जमीन थी. तो अभी हाल में मुझे रिपोर्ट मिली है कि हमने 20 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए थे सोलर पावर पे. 6 साल में जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की थी सोलर पावर पे पूरी वसूल हो गई हैं. We've got it. 20 crores in 6 years. So concentrate on things which matter for the country. I'm just telling you what are they. Food, water, energy. I am not in the habit of speaking too much. I always say, speak little, speak sense. But my last word to you is that the iron is beaten into shape in the heat of the furnace. आपको फर्नेस की गर्मी लग रही होगी. Let us beat ourselves into shape and, like the Jews of the world, let the underprivileged become the leaders of this country. Thank you very much. Thank you very much, sir, for this address, inspiring as ever. And I'm sorry, when I was mentioning his credentials, I skipped the renewable energy program that was started by him there. And because of this, as sir has just mentioned, we are one of the front runners in the area of renewable energy amongst higher education institutions. And another aspect that I must mention here is gender equality. My colleague, Professor Asia, is here. We must bear this, that we are living testimonies that it was the best time to be a woman on the campus in a male-dominated society that was here. As Lieutenant General Zamuddin Shah Sahab has just referred to Professor Syed Wasim Akhtar Sahab as a living miracle, I must endorse this. And before I invite him to speak to this gathering here today, I will extend a word of very sincere gratitude for all his cooperation in collaborating with the IDU and helping this new alliance organize its second national conference here after having organized the first last year at the Jamia Hamdard. Professor Syed Wasim Akhtar Sahab is the founder and chancellor of the Integral University, Lucknow. He was born on January 20th, 1959 in a humble background, and he is the recipient of the UP Ratna Award. And he began from very simple beginnings. He started his career with a small maktab in Lucknow, where the course content was purely theological, but he had an inclination towards studying science. He completed his higher secondary education in 1972 and his BSc from Jamia Islamia, New Delhi in 1975. He started his professional career as a science teacher with the world-renowned Arabic institution Darul Uloom Nadwatul Ulema in Lucknow. His good command of spoken and written Arabic earned him recognition, and he got a call from Libya to join as a translator and interpreter at Hindustan Steel Construction Limited. He envisioned providing technical education to the downtrodden so that they might attain some technical knowledge and start their own small self-employed ventures. He made his first attempt at realizing his dreams and formed an NGO dedicated to productive education. He took on the responsibility of General Secretary of the society named Islamic Council for Productive Education and started a school named Techno Academic School in an underdeveloped locality on Kursi Road. Recognition of his relentless efforts in the field of education has brought about fruition in the form of the first enacted minority university of the country, Integral University,
which came into existence on February 21st, 2004, and at present runs 13 faculties and about 250 programs. It is accredited by National Assessment and Accreditation Council in 2015, and Agriculture Institute, named as Integral Institute of Agricultural Science and Technology, and Faculty of Law have also been established in 2014 and 2016 respectively. A full-fledged medical college named as Integral Institute of Medical Sciences and Research and Directorate of Distance Education has been established in 2013 after getting approval from NCI and Directorate of Distance Education. University Polytechnic at Lucknow has been established in 2010, and many renowned personalities of national and international eminence have accredited the laudable contributions of Professor Syed Wasim Akhtar. His journey continues towards inspiring excellence. मैंने ये जो सीरी पढ़ा इसमें कुर्सी रोड का जिक्र आया। मैं आप सबसे एक बहुत दिलचस्प हिकायत शेयर करूं। अलीगढ़ के शोबे उर्दू के मशहूर अफसाना निगार और नावल निगार हुआ करते थे काजी अब्दुल सत्तार साहब। कुर्सी में उनकी ससुराल हुआ करती थी। तो अपनी नावलों में उन्होंने दर्ज किया है कि जब मेरी बीवी नाराज होती थी तो मैं लोगों से कह दिया करता था कि कुर्सी के चारों पांव बराबर नहीं थे। तो यकीनन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का क़याम होने के पहले ये कुर्सी एक फर्नीचर हुआ करता था, ये दुबग्गा एक जानवर हुआ करता था। But thankfully, because of the tireless, untiring efforts of Professor S.W. Akhtar, we have this beautiful, beautiful institution here today contributing to nation building. सर सैयद अहमद खान ने जिस तालीम की रोशनी का ख्वाब देखा था, उसकी एक छोटी शमा यहाँ पे चल रही है, और उनके खिताब के लिए उन्हें दावत देने से पहले ये शेर उनकी नजर करूंगी। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। प्रोफेसर एस.डब्ल्यू. गो के ज़मीरुद्दीन शाह साहब ने ये रस्म तोड़ी है कि मेहमानाने गिरामी का नाम न लिया जाए, मगर मैं उनसे मुआज़त के साथ यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों का, खुसूसन हमारे भाई कुरैशी साहब, हमारे जावेद मुसर्रत साहब, नजीब जंग साहब, खुद शाह साहब और शाहिद सिद्दीकी साहब, हमारे सामने बैठे हुए बासर मेहदी साहब वाइस चांसलर तेरा यूनिवर्सिटी, और जफ़र महमूद साहब, खालिद रशीद फिरंगी महदी साहब, डॉक्टर फुरकान कमर और बहुत मशहूर शख्सियत इनामदार साहब यहाँ मौजूद हैं। अगर इनका नाम न लिया जाए तो हक अदा न होगा। मैं आप सब लोगों का अपनी तरफ से, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से और एडू की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद करता हूँ। हज़रात, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बारे में अभी डॉक्टर फायजा, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर फायजा का नाम चुन दिया था। डॉक्टर फायजा ने तो सारी बायोग्राफी जो है वो बता दी। मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत इस सिलसिले में नहीं है कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको इस सदी की आखिरी दहाइयों में ले चलूँ, जब एक बहुत ही मुश्किल दौर से हम गुजर रहे थे और जहालत और इल्म से दूरी और बेरोज़गारी अपने उरूज पर थी। समझ में नहीं आता था कि ये नई नस्ल ये किस तरफ जाएगी और इसका क्या मुस्तक़बिल होगा, क्योंकि जो हालात थे उसमें इस कदर कहना चाहिए कि इस कदर बेचैनी थी, खुसूसन जब जहालत और भुखमरी का दौरा हो और ये नई नस्ल जो आ रही है उसके मुस्तक़बिल का ख्याल हो। जहाँ तक भुखमरी का ताल्लुक़ है इस कौम, इस मिल्लत में, तो मैं अर्ज़ करूँ कि
ये हालात थे, बल्कि चंद अशार से अगर मैं आपको रूबरू करूं तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ इस माँ की ज़बानी कोई बात सुने, बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे की जो मजबूत कड़ी, अपनी इज्जत के भरोसे की जो मजबूत कड़ी आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती है। इसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब को मिटा देते हैं। इसलिए ये ख्याल हुआ कि एक ऐसे मुतवाज़िन तालीम की बंदोबस्त की जाए जो दीन और दुनिया दोनों को मिला दे। आपको याद होगा कि एक ज़माना ऐसा था कि हमारा रुझान सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम पर था और हम ये समझते थे कि नजात इसी में है कि अल्लाह अगर राज़ी हो गया तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि ये सबब की दुनिया है, असबाब की दुनिया है। और आपने वो मशहूर किस्सा तो सुना होगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, कि वो वहाँ आसमान से उतरे और गाज़ मुक़द्दस की एक मस्जिद पर जिसके हरे मीनार थे वहाँ पर आके ठहर गए और लोगों से कहा कि ए लोगों, सीढ़ी लाओ ताकि मैं नीचे उतरूं। लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये क्या बात हो गई, आसमान से यहाँ तक गुंबद तक आप आ गए और इस गुंबद से ज़मीन का क्या फासला है और यहाँ आने में आपको सीढ़ी की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि वो आलम दूसरा था, यह आलम असबाब है, यहाँ हमें सबब पैदा करना होगा तब होगा। इसी ख्याल से नाचीज़ हकीम ने यह ख्याल किया कि हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जो आने वाली नस्लों के लिए एक मशाले राह साबित हो। ज़रूरत इस बात की थी कि हमारे कौम और मिल्लत में कोई मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियत पैदा होती, कोई मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी की शख्सियत पैदा होती ताकि ये हो। बहरहाल मैंने ये बेड़ा उठाया कि एक इदारा कायम किया जाए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा तजुर्बा भी थे अपनी पिछली ज़िंदगी में कुछ इदारों में बहैसियत उस पर काम करने की, लेकिन मेरी सोच और उनकी फिक्र में बहुत बड़ा फ़र्क था। लिहाजा ये तय हुआ कि एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जो फिटनेस फॉर सर्वाइवल होने के साथ साथ लोगों के लिए एक नजात का रास्ता भी साबित हो। हमने यहाँ इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी का तो उस वक्त नाम भी नहीं था, एक स्कूल टेक्नो एकेडमिक स्कूल, उसके लिए एक ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा कर्ज उधार और व्यवहार करके वो एक्वायर किया और उसके बाद उसमें एक 20 बाई 20 का छप्पर डाला और उस छप्पर में 4 बच्चों, क्लास 6 के 4 बच्चों से अपनी मुहिम का आगाज़ किया। वही छप्पर हमारा ऑफिस भी था, वही छप्पर स्टाफ क्वार्टर भी था, वही छप्पर क्लासरूम भी था। बहरहाल वो छप्पर तरक्की करते करते फिर उसके बाद वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक पहुंचा। उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि ड्रॉप आउट होता था बच्चों का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के दरमियान। तो उसके लिए एक सबील ये निकाली कि हाई स्कूल की तालीम के दौरान ही हम उनको एक टेक्निकल एजुकेशन का भी इंतज़ाम करें और उनको इक्विप करें किसी भी टेक्निक से, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंजीनियरिंग हो, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से करके फिर एक इंटरमीडिएट तक हमने वो इंतज़ाम किया। लेकिन ख्याल ये हुआ और लोगों की डिमांड ये हुई कि आखिर इंटरमीडिएट के बाद मुस्तकबिल क्या होगा बच्चों का। तो इत्तेफाक से उस वक्त हमारे दोस्त सैयद इकबाल अहमद जो चीफ इंजीनियर थे जल निगम में, वो भी हमारे साथ शरीक सफ़र थे। उन्होंने
AICT के लिए अप्लाई कर दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। मैं बेइंतहा परेशान हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत बड़ी चीज़ है, कैसे होगा। लेकिन बहरहाल वहाँ से AICT से एक टीम आ गई इंस्पेक्शन के लिए। हमारे पास सिर्फ हाई स्कूल लेवल की या इंटरमीडिएट लेवल की सिर्फ 3 लैब्स थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी वगैरह की। और इंस्पेक्शन टीम में कौन था? IIT कानपुर के बहुत ही सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, जिनका नाम आज भी मुझे याद है, प्रोफेसर प्रभु। उन्होंने ये जब हमारा छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और कहा कि अख्तर साहब, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैंने कहा कि साहब हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप इस वक्त अपनी नज़र करम करें और हमको ये अप्रूवल दे दें। उन्होंने बेचूं जरा जाके रिकमेंड किया और हमको फिर वो AICT अप्रूवल मिल गया और हमने इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करने के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन AICT में तकरीबन 50 लाख रुपए सिक्योरिटी का इंतजाम था, सिक्योरिटी मांगी। हम फकीरों के पास, जिसको कहना चाहिए कि 60,000 रुपए का इंतजाम करना होता था कि हमारी एक छत पड़ जाए, हमारी एक सरिया आ जाए, 100-200 बोरी सीमेंट आ जाए, उसके लिए 50 लाख रुपए बहुत ही मुश्किल वो था। लेकिन कुर्बान जाइए उस हस्ती का कि उसने यूं इंतजाम किया कि समझ ही में नहीं आया कि आखिर ये क्या हो गया और कैसे। हमने वो सिक्योरिटी AICT में जमा की और उसके बाद कहना चाहिए कि हमको अप्रूवल मिल गया और इंजीनियरिंग का पहला शोबा 1998 में शुरू हुआ और रफ्ता रफ्ता फिर तमाम इंजीनियरिंग के तमाम शोबे और दूसरे कोर्सेज वगैरह जैसा जिक्र किया भी डॉक्टर फायजा ने, वो सब शुरू किया। और आज ये यूनिवर्सिटी जो आपके सामने है, ये इस वक्त जो आपके सामने है, इसमें तकरीबन 13,000 बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं, मुख्तलिफ किस्म के, और तकरीबन 2,000 एम्प्लॉइज़ हैं, इंक्लूडिंग टीचिंग, नॉन टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। इसी तरह से 40 कंट्रीज के बच्चे इस वक्त यहाँ ज़ेर तालीम, और तकरीबन 300-350 PhD स्कॉलर निकल के यहाँ से जा चुके हैं, जो दुनिया के तमाम कोने कोने में अपना कहना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम सिर्फ इससे मुतमईन नहीं हैं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी बन गई और यूनिवर्सिटी, हम ये चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी, जैसा इसका स्लोगन भी है, इंस्पायरिंग एग्जिस्टेंस, ये यूनिवर्सिटी का नाम तमाम मशहूर यूनिवर्सिटियों के साथ साथ, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे जामिया मिलिया हो, और चाहे दूसरी और यूनिवर्सिटीज़ हों, उसके साथ साथ IITs और IIM के नाम के साथ जो है इसका लिया जाए। आज मैं बेइंतहा मशकूर हूँ आप तमाम शख्सियात का, और दिल में ये ख्याल आ रहा है कि वो मशहूर शेर पढ़ूँ कि वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। हम एक दफ़े फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमको मौका दिया इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो इन्होंने ऑर्गेनाइज की है जॉइंट वेंचर में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और उसमें, और उम्मीद के इस कॉन्फ्रेंस के डेलिब्रेशन के में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो अमली तौर से हम अपना सकें। जैसे शाह साहब ने भी कहा कि बहुत वो चीज़ें हैं कि हमें वाटर और गंगा की सफाई और पानी और उसके लिए भी सोचना चाहिए और आगे बढ़ के हमें कोई उसमें लीड लेनी चाहिए। यकीनन ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे अपने हालात, मुझे हालात का रोना नहीं आता,
और मैं इन हालात से थक कर बैठ जाना भी नहीं चाहता। थक कर बैठ सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन हारना नहीं चाहता। तो हम सब लोग कोशिश करें और इस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई ऐसी चीज़ लाए, अमल में हम लाएं जो अमली हो और इस आने वाली नस्लों को ऊपर उठाएं। यकीनन जैसे जिक्र किया अभी हमारे जफर महमूद साहब मौजूद हैं, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये इतना बड़ा हमारे पास सोर्स है ज़कात फाउंडेशन का कि अगर आप इसको यकजा कर लें और कोई ऐसा कहना चाहिए कि हल इसका तलाश करें कि ये ज़कात एक जगह इकट्ठी हो जाए, तो आप यकीन माने कि हर महीने एक मेडिकल कॉलेज, हर हफ्ते एक इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे कॉलेजेस आप कायम कर सकते हैं। ये इतना बड़ा सोर्स है, लेकिन मसला यही है कि एक हो अंजुम तो बन सकता है खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम चले। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और एक दफ़े आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने आए हुए मेहमानों का भी इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रिया जनाब वसीम अख्तर साहब, और बेहद खराज तहनीक कि ये इतना चश्मकुश बसीरत अफरोज़ खिताब आपने किया। और हमारी भी दुआ है कि आप तादम आखिर न थकें न हारें, और इसी तरह से ये जो सफ़र आपने आगाज़ किया है जारी व सारी रहे। Ladies and gentlemen, we will now listen to Mr. Shahid Siddiqui. As we know, he is the former MP and editor of Nai Dunya, a senior journalist, educationist, parliamentarian, and social reformer. He was professor of political science in University of Delhi from 1974 to 1986. He launched weekly Nai Dunya in 1973 as a student and has been its chief editor since then. As a journalist, he has been writing in English, Urdu, and Hindi, and regularly appearing on various national news channels as a political analyst. He was member of Rajya Sabha from 2002 to 2008. He is the member of National Integration Council from 2000 onwards. As vice chairman of the NCPUL, he worked for the digitalization of Urdu as early as in 1994 and brought about a revolution in dissemination of Urdu language and publications. Shahid Siddiqui Saab has served as the chairman of Congress Minority Cell and general secretary of Samajwadi Party. नाचीज़ खुद तहे दिल से इसकी बेहद कदर करती है कि जो बेशबहा खिदमात शाहिद सिद्दीकी साहब की रही हैं उर्दू के सिलसिले में। और 19 साल कबल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक जलसा, एक तकरीब थी जिसमें शाहिद सिद्दीकी साहब बहैसियत मेहमान खुसूसी मौजूद थे और बबांग दुहल ये ऐलान किया कि अगर हम उर्दू को अपनी मातरी ज़ुबान मानते हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि उर्दू का बोलबाला यूं ही रहे जैसे पहले था, तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हम हुकूमत पे जोर डालें कि उर्दू का नाता रोज़ी रोटी से जोड़ा जाए। क्या हमारी माँ जब रोटी नहीं बना पाती तो हम उसे घर से निकाल देते हैं। जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब, आपसे खिताब की दरखास्त। बहुत शुक्रिया। नाम लेना सबका मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं नाम लिए बगैर भी नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पे ऐसी शख्सियात मौजूद हैं। जनाब इनामदार साहब जिन्होंने सारी जिंदगी तालीम के लिए खिदमत की है और जिस तरह से काम किया है वो हमारे लिए एक बिल्कुल मशअले रहा है। और जनाब अपने कमर साहब, गोपलानी साहब, इतने नाम हैं, तमाम लोग मौजूद हैं कि जिनके नाम लेना जो है मुमकिन नहीं है। बात तो उर्दू की थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज क्योंकि तालीम का मामला है तो थोड़ा सा अंग्रेजी में गुफ्तगू कर ली जाए। और मैं आमतौर पे लिखकर नहीं बात करता हूँ, लेकिन आज मैं लिखकर इसलिए लाया ताकि हम फोकस रहें। और बहुत सारी बातें हमारे बुजुर्गों ने कर ली है। उसके अलावा मैं कुछ चीज़ों पे तवज्जो देना चाहूँगा कि friends, we have assembled here today to talk about empowering and uplifting the underprivileged through education. However, our objective is not just education, but quality education. Demographically, India has emerged globally at the top, with the youngest workforce population in the world. This demographic dividend
is our biggest strength and asset today. यानी आबादी के लिहाज से हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। ये आबादी हमारे लिए एक अजाब है, ये हमारे लिए एक जरिया बनने वाली अपॉर्चुनिटी है। और ये आबादी अपॉर्चुनिटी कब होगी? जब हम इनको बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे और बेहतर हेल्थ दे पाएंगे। ये असेंशियल है। However, it can be achieved, it cannot be achieved automatically. To achieve that potential, we have to invest heavily in health, education, skill development, entrepreneurship, and professional training, especially in our rural sector among underprivileged groups and women. To achieve that, we have to focus on quality professional education. We have to go for massive online courses and establish digital schools, colleges and universities. Not just these universities, but these digital universities and digital schools have to be established in a big way now. There is a disparity in the demographic dividend window. Kerala with 100% education is already aging, while UP and Bihar's young workforce is projected to grow till 2051. तो यहाँ से जो आने वाले वक्त में सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो वर्कफोर्स जाएगी वो यूपी और बिहार और इस नॉर्दर्न बेल्ट से जाएगी, अगर हम उनको बेहतरीन एजुकेशन दे पाएंगे। This demographic divide between South and North India, rural and urban India, privileged few and underprivileged majority is to be bridged by providing quality education, the best possible infrastructure, good dedicated teachers, and a healthy environment both at home and in schools. While 95% of Indian children attend primary schools today, poor infrastructure, malnutrition, and scarcity of well-trained teachers lead to high dropout ratios, especially among the underprivileged. This demographic dividend won't come automatically. The government, society, social organizations, education institutions, and every one of us would have to work systematically to achieve this goal. Without good health and education, the 60% workforce will become a burden instead of an asset for the nation. The future of India depends on how we deal with this young population. India will emerge as a developed, industrialized, healthy nation only if we are able to provide the best education, good health, and enough jobs to our people. The very purpose of establishing the Alliance for Economic and Educational Development of Underprivileged, that is IDU, is to act as an umbrella organization to bridge this gap and to help the nation in taking advantage of this demographic dividend. We at IDU से हम सिर्फ underprivileged की खिदमत नहीं करना चाहते। अगर इस मुल्क को हमें ले जाना है जहां देखते हैं खड़ा हुआ पहले दूसरे मकाम पर, तो उसके लिए हमें इस अंडर प्रिविलेज जो है उनको बेहतरीन एजुकेशन के जराए देने होंगे। तो आईडू जो है वो एक कौमी खिदमत के तौर पे इस काम को कर रही है। जो हुकूमतों की जिम्मेदारी है उसमें हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आईडू आर फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस and good teaching among the underprivileged. We are reaching out to NGOs, educational institutions, and teachers to come together to bridge this gap as fast as possible. This is the purpose of this conference, and many more such meetings and workshops we will be organizing in the future. In the last few years, a huge digital revolution has taken place in the field of education. Education has moved beyond classrooms to a virtual world of knowledge, where sometimes students are a step ahead of the teachers. Today, the real problem before the younger generation is too much information, too fast, and from too many sources. That's where teachers and schools have to play a very important role by equipping students with the skills to sift through this avalanche of information. Today, teachers need to retrain, re-equip, and reorient themselves to guide and mentor the younger generation. As an educationist, John Davis said, if we teach today's students as we taught yesterday, we rob them of tomorrow. जनरल साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी। आज हमारे स्टूडेंट बहुत सारे जानते होंगे कि चैट जीपीटी जो है उसके जरिए दे कैन डू वंडर्स। आज रेलेवेंट हो गई हैं बहुत सारी चीजें। इन द कमिंग 5 to 10 years you are going to create so many new jobs in that new era, and old jobs are going to become defunct and they will not be used. हमें प्लान करना पड़ेगा अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, अगले 50 साल के लिए, and we will not have to, जनरल साहब ने कहा, will not start from where others have reached. We will have to start, we will have to take a stride, a long jump to start where they are going to be after 20 years or 25 years. तो अगले 20-25 साल की हमें प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। जो अंडर प्रिविलेज है वो पीछे नहीं चल सकता दूसरों के, उसे दूसरों से छलांग लगा के आगे जाना होता है। वो हमारी जिम्मेदारी है,
उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस को काम करना है। वही आईडू का मकसद है कि हाउ टू ब्रिंग दैट टू the small institutions, madrasas, small schools in rural areas. That will be our effort. I do realize that this digital revolution in education can and should be used to the advantage of the underprivileged and institutions with inferior infrastructure, fewer resources, and a lack of good teachers. We should use these digital tools more efficiently and intelligently to provide quality education at much lesser cost in areas with poor infrastructure. However, to take advantage of this, we must move ahead with a plan. I would like to point out that many of our institutions, especially in South India, are providing cheaper, better quality education to our children, and we appreciate their work. अब्दुल सुभान साहब मौजूद है यहाँ पे, वो काम कर रहे हैं इस पे। शाहीन ग्रुप भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इनामदार साहब का जो पुणे में जो आजम कैंपस है, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है। फारूकी साहब मौजूद हैं, फारूकी साहब का ग्रुप जो है वो काम कर रहा है। Institutions like integral universities are to be congratulated for the wonderful work they have done in providing professional quality education. However, we need many more such institutions. More than anything, we need good schools in rural areas, in minority and underprivileged areas. Girls' education, who form 50% of our population, has to be given special attention. To achieve these goals, IDU will be focusing on the following objectives in the near future. ये मैं जो IDU अगले हमारे सामने जो प्लान्स हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी में डालना चाहूंगा। ये नंबर 1, एस्टैब्लिशिंग टीचिंग रिसोर्स सेंटर्स इन वेरियस स्टेट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्योंकि हमारे जैसा अभी कहा कि वी हैव चेन ऑफ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक जो हमारे कॉलेजेस कायम हुए थे, हमारे बुजुर्गों ने कायम किए थे, आज उनकी हालत जर्जर है, बहुत खराब है। तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके लिए हमें प्लान बनाने पड़ेंगे, उनके पास जाना पड़ेगा, और वहां पे टीचिंग की जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव करने के लिए हमें टीचर्स को रीओरिएंट करने के प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमने सोचा यह है कि टीचिंग रिसोर्स सेंटर हम पहले तो दिल्ली में कायम करें, उसके बाद हर स्टेट के अंदर एक टीचिंग रिसोर्स सेंटर हो, जहां पे हमारे मदरसों के और स्कूलों के टीचर बैचेज में आए और उनको हम दोबारा से ट्रेन करें, ताकि डिजिटल वो आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल वो कैसे करेंगे, उन्हें पता नहीं होगा कैसे होगा। हाउ कैन दे रीच आउट टू द स्टूडेंट्स तैयार होके आएंगे, टीचर तैयार नहीं होगा, तो टीचर्स हैव टू बी रीट्रेन्ड टू डू दैट। ओनली देन वी विल बी एबल टू रीच द हाइट्स वी आर प्लानिंग टू डू। सेकंडली, एस्टैब्लिशिंग अ चेन ऑफ स्मार्ट क्लासेस इन स्कूल्स एंड मदरसास एंड प्रोवाइडिंग डिजिटल एजुकेशन मटेरियल टू द इंस्टीट्यूशन। तो एक ख्वाब है मेरा कि स्मार्ट क्लासेस का एक नेटवर्क हम बनाएं। शुरू में हम हर जो इम्पोर्टेंट मदरसे हैं, इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, वहां पे स्मार्ट क्लासेस हो, जहां पे हम साइंस, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी पहुंचा सकें, जहां पे अच्छे टीचर्स नहीं पहुंच पाते, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता ये स्मार्ट क्लासेस का जो नेटवर्क है ये हम बढ़ाते चले जाएं। शुरू में हम चाहे 50-100 क्लासेस से शुरू करें, जिसके लिए लोग जिम्मेदारी लें कि एक क्लास की या 2 क्लास की जिम्मेदारी फला साहब लेते हैं, उनके नाम से वो बन जाएगा, जो भी खर्चा उसके लिए आएगा उसका हम एक प्लान तैयार कर लेंगे, वो उसको ये दे सकते हैं, उसको हम आगे ले जा सकते हैं। तीसरा है टू क्रिएट सिनर्जी एंड कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इससे मुराद ये है कि साउथ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत कामयाब हुए हैं। तो आपके सामने यूनिवर्सिटी है, एआर मेडिकल कॉलेज है, मेरी साहब मौजूद है, कितना जबरदस्त काम उन्होंने किया है। वी वर रियली सरप्राइज्ड टू गो एंड सी वंडरफुल वर्क ही हैज डन। और जो काम यहाँ पे जफर महमूद साहब कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, उसको हम कैसे आपस में इंटरेक्शन पैदा करें। जो हमारे इदारे कामयाब नहीं है, उनके साथ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस बने, ब्रदर ऑर्गेनाइजेशंस बने, ब्रदर स्कूल्स बने, जहाँ पे एक्सचेंज हो टीचर्स का, एक्सचेंज हो स्टूडेंट्स का। कुछ उनके टीचर आपके यहाँ आके 2 महीना रह जाएं, कुछ आपके टीचर वहां जाके महीना 2 महीना रह जाएं, जिससे कि क्या होगा कि आपस में सिनर्जी पैदा होगी, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पैदा होगा, और सब इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी इंप्रूव करेगी। हमें अब आपस में कंपटीशन नहीं करना, आपस में कोऑपरेशन करना है। बदकिस्मती हमारी रही है कि अगर हम में से कोई आगे बढ़ता है तो हम उसकी टांग खींचने के फराक में रहते हैं। हमारी कोशिश ये हो कि हम उसको किस तरह से कंधा दें और उसको उठाएं ऊपर, कि हमारे कंधे पे पैर रख के वो और ऊपर जा सके। तो जो कामयाब हैं उन्हें, जो कम कामयाब हैं उनके लिए आगे आना होगा, ये हमारी आईडू की कोशिश होगी। चौथा ये कि टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस सो दैट स्कीम्स फॉर द एजुकेशन ऑफ द अंडरप्रिविलेज्ड मे बी यूटिलाइज्ड टू द मैक्सिमम बाय द इंस्टीट्यूशंस। हम जब भी
अब तो खैर मामला दूसरे हैं, लेकिन पहली हुकूमतों में भी जब हम गए हैं लेके मसाइल, तो कहते थे हमारी स्कीमें बहुत है, आपके लोग आते नहीं, हमसे जैन ले जाते हैं, हमसे सिख ले जाते हैं, जो माइनॉरिटीज के लिए भी हैं वो नहीं आ पाती हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए जो फाइल का पेट भरना है, उसके लिए जो फॉलो अप करना है, वो भी आई डू कोशिश कर रहा है। उसके लिए हमने प्रोग्राम तैयार किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका फायदा हमारे पास, अगर हम लोग आज 20% फायदा नहीं उठा पाते, उसे हमें देखना है कि 80% फायदा हम उठा पाए गवर्नमेंट की स्कीम्स का। हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उन्हें कैसे हम यूटिलाइज कर सके। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स हैज टू बी डन। पांचवा ये कि एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन स्कूल एंड मदरसास टू ब्रिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशनल एजुकेशन टू देम। मेरा अरसे से मानना यह है कि जो मिस्टर और मदरसे, मिस्टर और मौलवी के बीच जो गैप हुआ 1857 के बाद से, एक तरफ मदरसा आ गया, एक तरफ यूनिवर्सिटी आ गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दारुल देवबंद। उस वक्त की जरूरत थी, हालात थे। सब सैयद अहमद खान लेके चले एक तरफ तहरीक को, एक तरफ मौलाना कासिम नानूफी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग लेकर चले। लेकिन आज जरूरत है कि मिस्टर और मौलवी साथ मिलकर काम करें। मदरसे में हमारे टीचर्स जाके पढ़ा सकें, उन मदरसों के कुछ टीचर्स हमारे बीच आ सकें। तो मदरसों में जो चेंज लानी है, वो चेंज लाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज अगर नहीं है, उनके पास टीचर्स नहीं है, तो टीचर्स और रिसोर्सेज हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो उन्हें देने की कोशिश करें। और मैं समझता हूं कि वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उस पर सिर्फ सोचने की और फोकस करने की जरूरत है। To work for better utilization of available infrastructure and establish schools and colleges। इससे मेरी मुराद क्या है कि कितने हमारे स्कूल ऐसे हैं, कॉलेज ऐसे हैं कि जहां पर कई कई एकड़ जमीन है। अब आप फैज आम कॉलेज में, चाहे मेरठ में, आप शाहजहांपुर के इस्लामिया कॉलेज में चले जाएं, बड़ी बड़ी जमीन है। यहाँ पे शिया कॉलेज जो है उसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर हम प्लान बनाएं उनके यूटिलाइजेशन के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बेहतरीन खड़ा कर देंगे, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी खड़ी कर लेंगे, और हम बेहतरीन टीचर्स भी पैदा कर सकेंगे। तो जब तक हम एग्जिस्टिंग जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं उसके इम्प्रूवमेंट का हम प्लान नहीं तैयार करेंगे, हम नए स्कूल खोलते रहें, लेकिन जो हमारे पुराने स्कूल हैं उन्हें हम सीट करने दें, उन्हें बर्बाद होने दें, ये इससे हमें निकलना पड़ेगा। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की स्कीमें हम तैयार करें। ख्वाब हमारे बड़े बड़े हैं, लेकिन ख्वाब देखते हैं, जैसा कहा, तभी जो है कुछ उसमें से हमें अमल नजर आता है। ब्रीफली मैं बहुत तेजी से आप कोशिश करूंगा कि टू ऑर्गेनाइज वर्कशॉप वेयर एक्सपर्ट्स में ब्रिंग देयर नॉलेज टू द ग्रासरूट्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये हम कॉन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि छोटी छोटी वर्कशॉप्स हो अलग अलग जिलों में। जैसे एक वर्कशॉप मैं चाहता हूं कि मैनेजमेंट के ऊपर हो, स्कूल और इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट। उसमें अगर इनामदार साहब जैसे लोग, या हमारे बम्बई के अंजुमन इस्लामिया के जो काजी साहब हैं, वो आगे बताएं अपने तजुर्बे से कि कैसे बेटर इंस्टीट्यूशन मैनेज किया जा सकता है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन फेल इसलिए भी होते हैं कि वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट बहुत कमजोर है। उसको हमें लाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो focus on health programs in schools, create gyms, provide sports facilities and organize sports competitions for underprivileged students। हमारे मदरसों में अनफॉर्चुनेटली जोर नहीं दिया जाता फिजिकल हेल्थ के ऊपर, के सुबह बच्चे जो कुरान करीम पढ़े, उसके बाद दौड़ने भी जाएं, उसके बाद कोई छोटे छोटे जिम भी हम बना सकते हैं मदरसे के अंदर, कोई रोकता नहीं है। लेकिन हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, स्कूलों में तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो वो भी हम चाहेंगे कि उसका भी एक प्रोग्राम जो है शुरू किया जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हम लोग कर रहे हैं वो डाटा जमा करने का है एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि डाटे के बगैर हम अपना केस ना तो कोर्ट में रख पाते हैं, ना हुकूमत के सामने रख पाते हैं, ना मुल्क के सामने रख पाते हैं, ना पार्लियामेंट में रख पाते हैं। तो हमारा मेन फोकस इस वक्त जो है वो डाटा जमा करने पे है। उसके लिए कुल्लू साहब की क़यादत में और हमारे जंग साहब और कुरैशी साहब की क़यादत में तो हम काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में जो सच्चर कमेटी के बाद से आपका डाटा नहीं आया, तो सच्चर कमेटी के बाद से एक बहुत वक्त गुजर गया है हमें उस सबको सामने लाने का। वो बड़ा लिमिटेड था, उस लिमिटेड डाटा के बजाय हमें एक्सटेंसिव डाटा जो है वो लाना होगा और अपना केस जो है आगे के लिए बिल्ड करना होगा। उसकी बेसिस पे हम काम कर सकेंगे। और आखिरी बात ये कि वी विल बी एक्टिंग एज अ थिंक टैंक फॉर सोशल चेंज एंड वर्क फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। क्योंकि नेशन जो बनती है वो प्लानिंग से बनती है, और प्लानिंग बगैर थिंकिंग के नहीं होती है। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो जो थिंक टैंक बने हैं और आज सबके बने हैं। आज अगर एक पार्टी आई है पावर में, तो उनके थिंक टैंक पिछले 15-20 साल से काम कर रहे थे, उसका नतीजे में वो पार्टी जो है आज इतने प्रिवेल कर रही है सारे के ऊपर। दूसरी पार्टियों ने अपनी थिंकिंग पे ध्यान नहीं दिया, प्लानिंग नहीं की।
उन्होंने की। अगर आप अमेरिका में जाएंगे, जो थिंक टैंक्स हैं वो प्रेसिडेंट बनाते भी हैं, हटाते भी हैं, तो आपको हर जगह पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके थिंक टैंक होंगे, पॉलिसी प्लानिंग होगी, एजुकेशन के फील्ड में, सोशल फील्ड में, रिलीजन के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में, तो आप आने वाले वक्त में बहुत कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, डोमिनेट कर पाएंगे, बहुत आगे जा पाएंगे। सिर्फ शिकायत करके, लड़ाई करके, हंगामा करके, शोर मचा के, नारे लगा के आपको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मिलेगा तो आपको प्लानिंग से और इन तमाम चीजों से मिलेगा। मुख्तसरन मैंने ये प्लान रखे हैं, बाकी हमारे साथी और आने वाले आज और कल में बहुत कुछ इसके ऊपर बात होगी। मैं एक बार फिर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वसीम अख्तर साहब हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जिस तरह उन्होंने काम किया है और जिस तरह वो लेकर चले हैं इस यूनिवर्सिटी को एक छोटे से छप्पर से। यानी मुझे बताया था कि पानी भी नहीं, गर्म पानी छत पे से टंकी थी, उसमें से आता था, किसी के घर पे वो बैठा करते थे क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो गर्म पानी जो खौलता हुआ होता था वो पीते थे। तो वो आके कहते थे कि हमसे फ्रिज का पानी थोड़ा सा ठंडा ले लो। लेकिन वो डेडिकेशन जो था, अगर उन जैसे डेडिकेशन के हमें 10-15 लोग मिल जाएं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप नक्शा कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर तालीम का आप नक्शा बदल लेंगे। वही हमें जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब, वेरी क्विक बट सो फुल ऑफ आइडियाज, एंड all of us wish that this action plan is successful sometime in future. I will now request Dr. S.Y. Qureshi sir, former Chief Election Commissioner of India, the 17th CEC actually, and the first Indian Muslim to be one. He also served as Secretary, Ministry of Youth Affairs and Sports. He has a PhD in Communications and Social Marketing, and presently he teaches at the DU Cluster Innovation Center as an honorary teacher, and he has also authored a book entitled The Undocumented Wonder, The Making of the Great Indian Election. Dr. S.Y. Qureshi sir, for your address. ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा कि मैं लेट हो गया, फ्लाइट लेट हो गई थी। मुझे नहीं मालूम कि जब मैं आया उस वक्त जमील साहब बोल रहे थे क्या कुछ वो कह चुके हैं और क्या रह गया, लेकिन कोई बात नहीं है, रिपीटिशन आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। कोई गैप है तो वो फिल हो जाएगा, जो चीज़ रिपीटिशन हो रही है तो वो रीइटरेशन उसको समझ लीजिएगा। मैं 3 बातें मुख्तसरन करूँगा। सबसे पहले तो इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में कि मुझे जो एक बहुत तकलीफ और दुख होता है कि वो मजहब जिसमें तालीम पर सबसे ज़्यादा जोर है, किसी मजहब में तालीम पे इतना जोर नहीं है जितना इस्लाम पे है। पहला ही वर्ड वही का इकरा, और सबसे पिछड़े हुए लोग तालीम में मुसलमान। क्यों? अभी मैं आ रहा था यहाँ पे, रास्ते में आपके वो जो फोटो लगे हुए हैं, वो मैं तो और 3 मिनट इसी में लग गए कि वो देख के वो याद जब करता हूँ फैसिनेशन से कि मुसलमानों ने दुनिया में 500 साल 600 साल तक जो तालीम, साइंस, मेडिसिन, हर चीज में जो लीड दी थी, कहाँ गए वो लोग? क्या उनकी वापसी मुमकिन है? अगर हम सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम बना ले कि ये जो आपके कॉरिडोर में ये सब लगे हुए हैं, हम इनको नए जनरेशन, नए रूप में इन सबको वापस ला सकें। जूस लेस देन 1%, 95% नोबेल प्राइजेस उनको मिलते हैं। उसको सैनिक से कहेंगे कि वो तो इसलिए मिलते हैं कि जी वो पॉलिटिकल रीजन है, और लीडर भाई वो लिखने पढ़ने पर उनका इतना जोर है, और पिछले 100 साल से ये ट्रेंड चल रही है। जो काम कभी मुसलमान करता था कहाँ रह गया? इधर इंडिया में ही आप देखिए, क्रिश्चियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक से एक अच्छा, बड़े बड़े कम्युनलिस्ट भी हैं, लेकिन क्रिश्चियन स्कूल और कॉलेज में जाने के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी तालीम हो रही है। और क्रिश्चियन तो यहाँ पे कोई बहुत रिच कम्युनिटी भी नहीं है, वो भी हमारी तरह ही है, ज्यादातर गरीब ही है, लेकिन इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन वो कैसे चला पा रहे हैं, हमें सीखना चाहिए। क्या हम नहीं चला सकते? गौर करें। दूसरा, इसमें जो हमारी एक ओवरऑल इमेज, हर चीज में हमारी जो इमेज है वो ऐसे डिस्टॉर्टेड है कि तालीम में हम सबसे पीछे, विमेंस इक्वालिटी, ये इंप्रेशन दुनिया भर में ये कि मुसलमान औरतें बड़ी बैकवर्ड होती हैं।
जो इक्वालिटी औरतों को इस्लाम ने 1400 साल पहले दी थी, वो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड में तो 100 साल पहले, 80 साल पहले आनी शुरू हुई है। हमारी 1400 साल पहले ये टोटल इक्वालिटी। तालीम में, बिजनेस में, लड़ाई में शोल्डर टू शोल्डर औरतें लड़ाई लड़ती थी। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का राइट आज तक फॉरवर्ड कम्युनिटीज इन इंडिया उनके पास ये नहीं है। हमारे कौम में तो 1400 साल पहले दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी औरतें पिछड़ी भी मानी जाती हैं। क्या वाकई पिछड़ी हुई है? अगर है तो अफसोसनाक है, अगर पिछड़ी हुई नहीं है और सिर्फ बदनामी है तो उसको हमें दूर करना चाहिए। इसी तरह डेमोक्रेसी, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक रिलीजन जहाँ पे हेरिडिटरी सक्सेशन का कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, इलेक्शन होके आता है, वहां पे हम देखेंगे पूरी दुनिया में मुस्लिम डेमोक्रेसी कामयाबी नहीं होती, डिक्टेटरशिप आ जाती है। उसमें ऑफ कोर्स वेस्टर्न पॉलिटिक्स भी मौजूद है। अमेरिकन वगैरह वो डिक्टेटरशिप से डील करने में ज्यादा खुश है, उनको डेमोक्रेसी भाती नहीं है। इस्लाम सबसे पीसफुल रिलीजन, जिसके नाम में ही पीस शामिल है, टेरर से जोड़ दिया गया। इस प्रोपेगेंडा का इसका भी हमने जवाब देना पड़ेगा। चैरिटी, जो 5 जो बेसिक बुनियादी उसूल हैं इसमें, जिसमें चैरिटी उस वन ऑफ द 5 है। हम उस चैरिटी में हम ये देखते हैं कि फिलॉसफी में लोगों को उंगलियों पे गिन लीजिए कितने मुसलमान हैं, जो कितनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, 5, 7, 10, 20 लोग होंगे। तो मैंने इसको एक टर्म दी थी, एक आर्टिकल भी लिखा था, इस्लाम बनाम मुस्लिम, इस्लाम वर्सेस द मुस्लिम। इस्लाम कुछ कह रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं, तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। और हमारा जो ये सारा मिशन है, एक्चुअली इस इस्लाम की ओरिजिनल जो टीचिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, जो विजन है, उसको रेस्टोरेशन की तरफ ले जाना है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो ऑलरेडी जनरल साहब ने और शायद सिद्दीकी साहब ने तो बड़े तफसील में लिखित में बहुत अच्छा बोल दिया है कि हम चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं। देखिए आजकल के हालात जिसमें हम बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं, तालीम के अलावा तो कोई तरीका है नहीं, तो एक ही रास्ता है तालीम तालीम तालीम। तो उसमें हमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके, उसको अगर हम ब्रेक डाउन कर लें और उसमें हम स्पेसिफिक बात करें। साल भर से हम लोग मिले हुए बातें कर रहे हैं। हमारी कॉन्फ्रेंस भी जुलाई में हुई थी, उसमें ऑफ कोर्स एक दूसरे से हमारा इंट्रोडक्शन जरूर हो गया, लेकिन हम कुछ बहुत आगे बढ़ पाए ऐसा मैं नहीं समझता। सबसे पहले इनरोलमेंट, स्कूल इनरोलमेंट, कॉलेज इनरोलमेंट मुसलमान सबसे पीछे हैं। इसके लिए जो कुंडू साहब के साथ मैं ट्रैवल में अभी हम यही बात करते आ रहे थे कि सबसे पहले तो हमें एक स्टेटस पेपर बनाना पड़ेगा, एक व्हाइट पेपर बनाना पड़ेगा कि वेयर डू वी स्टैंड, वेयर आर वी, और वेयर डू वी वांट टू गो, और उस गोल की तरफ जाने के लिए क्या क्या करना है, वो कदम हमने आइडेंटिफाई करना है। ड्रॉप आउट रेट सबसे हाई है मुसलमानों का, खासतौर से लड़कियां बलूगत की तरफ बच्ची जाने लगी, पराया धन कह के हम उसको निकाल लेते। हमारी कौम में ही ये प्रॉब्लम नहीं है, औरों में भी है, लेकिन इस्लाम में मुसलमानों में जरा ज्यादा है कि उस नाम से, लेकिन उस लड़की को हम इस बहाने के पराया धन है, उस पे लोगों की निगाहें होंगी, वो होंगी, खतरे में है, जो इसको घर बिठा लो, नहीं मंजूर। वोकेशनल स्किल में हम किस चीज के लिए जानते हैं? टायर का पंक्चर लगाने के लिए, जिनको हमारे बहुत बड़े देश के नेता ने जिसका तंज कैसा था, लेकिन अगर हम देखें तो क्या वाकई क्या वो वही हकीकत है? तो इस किस्म के ही वोकेशन के हम होके रह गए हैं, इसे भी बदलना पड़ेगा। ये जो कॉरिडोर में जो हमने नाम देखे, ये उधर हम क्यों ना जाए, पंक्चर ही लगाते रह जाए, नहीं चलेगा। क्वालिटी एट ऑल लेवल, ये है क्वालिटी। देखिए मैं 40 साल से सरकार में रहा हूँ, नजीब सरकार में रहे हैं। एक तरफ इतनी बेरोजगारी है, दूसरी तरफ जो हम किसी नौकरियों को के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं और कैंडिडेट्स आते हैं तो बड़ा अच्छा बायोडेटा,
और जैसे ही कैंडिडेट मुंह खुलता है उसकी पोल खुल जाती है, एक से एक नालायक, एक से एक निकम्मा। तो एक तरफ हम अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयबल। 10 में से अगर 9 अनएम्प्लॉयड हैं, उसमें से 8 अनएम्प्लॉयबल हैं, किसी लायक ही नहीं है, उसको कोई क्यों नहीं। और आप, मैं नालायक होने की वजह से आप उसको नौकरी न दें और मैं डिस्क्रिमिनेशन का इल्जाम आप पे लगाता हुआ चला जाऊं और गुस्सा हुआ निकल जाऊं, ये तो समझदारी की बात नहीं है। तो हमें क्वालिटी का हर उस पे क्या करना चाहिए, ये स्पेसिफिक चीजें अभी हम सब जनरली ही बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्या करें, ये जवाब हमें इस कॉल से आएंगे। आपके कई इंस्टीट्यूशन इस किस्म के काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे, लेकिन इसको एक्शनेबल फॉर्म में हम कैसे करें। स्कॉलरशिप ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और ये एक सैड रियलिटी है कि अभी जो अवेलेबल स्कॉलरशिप थे वो भी छीन लिए गए। तो एक तरफ तो उसका हम सबको कलक और दुख तो है, लेकिन जो आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, मैं समझता हूँ उसको हम मान लेते हैं। हम अपने आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं क्या हमारे पास, हमारे कौम में इतने लोग नहीं हैं कि वो एक एक बच्चे को अडॉप्ट करके इन सारे स्कॉलरशिप को कॉम्पनसेट कर दें जो छीने गए, वो दूसरे रूट से हम आपस में अपने आप ही दे पाए, उस पर फोकस करना चाहिए। तो स्कॉलरशिप के लिए हमारा क्या विजन और क्या एक्शन, ये हमें सोचना चाहिए। इन जो भी हम काम कर रहे हैं, मैंने सरकार में जो देखा है, इंडिस्पेंसिबल होना जरूरी है। आप अगर इतने अच्छे हैं तो कितना भी वहां पे कोई कम्युनल आदमी, कितना भी हॉस्टाइल आदमी है, वो आपको छेड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके बिना उसका काम ठप हो जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हमारे सारे बच्चे इंडिस्पेंसिबल हो, जो भी काम वो करें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक एक्शन प्लान। और जैसे कि शाहिद भाई ने भी कहा कि लैक ऑफ क्वालिटी टीचर, हमारे टीचर बड़ा खराब है, 3rd क्लास है। और जिन स्कूल से, बल्कि हम लोग जब बेंगलोर गए, रहमान खान साहब ने हमको ऑफर की, मैं शाहिद भाई जिस स्कूल से एसोसिएटेड में हम पढ़े हैं, वहां पे जाके डिप्रेशन होता है। तो उन्होंने कहा कि साहब आप अपने टीचर्स को मेरे पास बेंगलोर भेजिए 1 महीने के लिए गर्मी की छुट्टियों में, मैं उनकी पूरी मेहमानदारी करूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा और पढ़ाऊंगा और उनकी कोई क्वालिटी बढ़ा के वापस भेजूंगा। अभी तक हमने उस ऑफर का फायदा नहीं उठाया है, हमें ये करना चाहिए। लेकिन हमने वो अपने स्पेसिफिक स्कूल का तो हमको पर्सनल नॉलेज है, कितने ऐसे स्कूल और इंस्टीट्यूशन है जिनको इस किस्म की हैंड होल्डिंग और अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें उनको आइडेंटिफाई करके एक दूसरे से मिलाना है। और ये मेरा दूसरा था कि हमारे हम जो काम करेंगे उसके एलिमेंट क्या है, उसको ब्रेक डाउन करें। मैं एक जगह गोपालानी साहब, आपका जो कन्वर्सेशन पहला ही जुबैर गोपालानी साहब हैं, आप में से आप पता नहीं कितने लोग उनसे मिल चुके हैं, नहीं मिलते कि मुलाकात हो जाएगी। एक दफा इनको फोन आया, मैं जा रहा था बड़ौदा, कि कुरैशी साहब आप फला किसी कॉन्फ्रेंस में आप आ रहे हैं और हमारा भी आप पे हक है। मैं हिल गया, मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल आपका हक है, बताइए क्या डॉक्यूमेंट। कहने कि हमारा बड़ौदा से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसमें एक स्कूल है, हम चाहते हैं वो आप विजिट करें। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, 1 दिन पहले आना पड़ेगा, 1 दिन में आऊंगा और आपके उसमें चलूंगा। उस विजिट ने मेरी आंखें खोल दी और मेरी लाइफ लाइन बदल दी। वहां गया, एक गांव, मुस्लिम गांव, और उसमें वहां के बच्चे और बच्चियां को एजुकेशनल, लड़कियां हिजाब में, लड़के अपने सूट में टाई के साथ, और इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है कि जितनी अच्छी अंग्रेजी मैं और शाहिद भाई नहीं बोल सके, शायद नजीब तो बोल सके, लेकिन मैं और शाहिद भाई इतनी अच्छी नहीं बोल पाए। ये जो गोपालानी साहब के स्कूल के बच्चे बोल रहे थे। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज और देखने में आई कि उसकी टीचर एक सिख थी, सरदार नहीं थी, मिसेस ढिल्लन, और 65% टीचर हिंदू थे। मैंने इनसे कान में पूछा कि क्या आपकी ये पॉलिसी है कि मुसलमानों को जॉब आप नहीं देते? कहने नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बेस्ट टीचर चाहते हैं, क्योंकि उससे जो मुस्तफीद होंगे वो बच्चे सारे मुसलमान हैं।
तो अच्छे टीचर से फायदा उठाने वाले सारे है, तो हमारा फोकस बच्चों के फ्यूचर पे है। मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने इसको वहाँ एक दो फोटो लिया और इसको ट्वीट किया, आप मुझे सोशल मीडिया पे कोई लोग, तो उस ट्वीट पे 2 दिन तक तो बड़ा अच्छे कि यही हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। उसके बाद एक जो बड़ी मशहूर आईटी सेल है उसने टेक ओवर कर लिया। वो शुरू हो गई कि ये आप इसको प्रोग्रेसिव स्कूल कहते हैं, लड़कियां हिजाब में हैं, 7th सेंचुरी में हैं, और लड़के लड़कियां अलग अलग बैठे हुए हैं, गोद में क्यों नहीं बैठे हुए, इस किस्म की बेवकूफियां शुरू कर दी, क्योंकि उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। 2 दिन तक मैंने इस किस्म की गालियां सुनी। हालांकि ऐसे लोगों से जब आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन कर दिया, उनको मैंने एक चीज हाईलाइट की। मैंने कहा भाई तुम ये चीज भूल गए कि इसमें फोकस में ये कह रहा था कि गांव का मुस्लिम स्कूल, लेकिन सिख प्रिंसिपल और हिंदू टीचर वो मिलके ये इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन बना रहा है, आप उनको भूल गए। उसके बाद वो चुप हो गए, लेकिन एक ही अच्छा इंस्टीट्यूशन। हालांकि दूसरी तरफ ये भी है कि अगर मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट आप भी नहीं देंगे तो फिर कौन देगा, कोई तो देगा। तो हमने उसका भी जवाब करना होगा कि हमको एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। टीचर्स की ट्रेनिंग पे जो शाहिद भाई ने बताया कि हमारा एक ब्रॉड विजन तो है, उसको इम्प्लीमेंट अभी करना बाकी है। मैडम आखिरी पॉइंट है, मैं देखी तो इसमें जो अब हम लोग कर रहा है, जिसमें जनरल साहब ने और शाहिद भाई ने बोला ही था, उसमें हम नर्सरी स्कूल भी नहीं खोलेंगे, कोई प्राइमरी स्कूल हम नहीं खोलेंगे। हम 5 में से कोई शायद जनरल साहब तो हैं, हम में से कोई इस लायक नहीं है जब प्राइमरी, तो ये तो हमारी उम्र भी इतनी हो गई, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, एनर्जी वो हमें नहीं है। लेकिन जिन्होंने प्राइमरी स्कूल खोल रखा है, सीनियर स्कूल खोल रखा है, कॉलेजेस खोल रखे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब खोल रखे हैं, आप लोग उनको एक अंडर वन रूफ लेके आएंगे। और आज की मीटिंग भी उसी की तरफ एक कदम है। इनामदार था, तालीम की नाम करो तो 2 नाम ध्यान में आते हैं, सर सैयद और इनामदार था। Why can't we है, इतना बड़ा देश है, why do we have only 1 इनामदार, why not 10? So of course 19-20 और 20 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है और उनसे गाइडेंस लेके उनकी सरपरस्ती में कुछ सीखना है। तो पहले तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन खुद कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो करेगी जो कोई और नहीं कर रहा। हम सब आप सब के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहेंगे कि सब एक छत्र के नीचे, एक छत्र छाया के नीचे आए, ताकि एक दूसरे को जाने। हम जब तक पहले हम साउथ गए, बड़े इम्प्रेस, बेंगलोर में, हैदराबाद में, बीदर में, जगह जगह, और हम ये कहते थे कि साउथ हैज प्रोग्रेस अ लॉट, और नॉर्थ में पर्टिकुलरली यूपी बिहार में बहुत पिछड़े हैं। लेकिन जब हम अख्तर साहब जब हम आपके इस यूनिवर्सिटी में आए तो हमारी आंखें खुली और हमारा मोराल ऊंचा हुआ। ये ऐसी बात नहीं है कि यानी नॉर्थ में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा हो रहा है। एक और भी यूनिवर्सिटी है, उसमें गए, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, तो काम ही हमें हो रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम था। हम तो पढ़े लिखे हैं और काफी एक्सपोजर वाले हैं, नहीं पढ़ा था। लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसमें हम एक दूसरे को जाने और उनके बीच में बल्कि एक लफ्ज मैंने क्रूडली बोला था, लेकिन किसी ने मुझे बाद में कोट किया कि हम सिर्फ शादी.com का रोल प्ले करेंगे, मैच मेकिंग कर देंगे, कौन जरूरतमंद है, कौन उस जरूरत को पूरा कर सकता है, उनको मिलाने के लिए अगर हमने काम कर दिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैंड होल्डिंग के जो पुअर और इंस्टीट्यूशन है उसको रिचर और मोर एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे कर सकती है। फिर ब्रिज, जैसे कि शायद भाई ने बोला कि ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट, स्टेट की और सेंटर की स्कीमों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन स्कीमों को पता ही नहीं होता। मैं भारत सरकार में सालों साल रहा और ज्यादातर उन मिनिस्ट्रियों में जहाँ पे हमारे पास दर्जनों स्कीमें ग्रांटेड की होती थी, जो आप को यकीन नहीं आएगा, लेने वाले नहीं होते थे। लोगों को लगता है कि हमने इसको ग्रांट दे दी, इसको ग्रांट दे दी, बड़ा एहसान किया। फैक्ट ये होता था कि हमसे जो मांगने आता था वो हम पे एहसान कर रहा होता था,
क्योंकि अगर हम अनयूटिलाइज बैलेंस दिखा दिए तो पार्लियामेंट में हमारी पिटाई हो सकती थी कि साहब आपको फंड इतने मिले, खर्च क्यों नहीं किए। तो जो लोग आते हैं, तो ये चीज हमने लोगों को, इंस्टीट्यूशन को बताना कि कहाँ का, बल्कि मैंने एक दफा इस पे एक एक्सरसाइज कराई हरियाणा में, मैंने कराई कि कितनी NIC उस वक्त तादाद आया था कि मैंने कुछ दो अपने बाबुओं को भेजा कि 10-15 मिनिस्ट्री जहाँ पे NGO के लिए ग्रांट होती है उनकी लिस्ट बना के लाओ, स्कीमों की कॉपी ले आओ, और उसकी हमने एक सिनॉप्सिस बना लिया, क्या स्कीम किस पर्पस के लिए, कितना पैसा किसको मिल सकता है, एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह, ये सारी 350 स्कीमें हमने आइडेंटिफाई की सिर्फ 10 मिनिस्ट्रीज की। मैंने अपने स्टेट हरियाणा जिसमें मैं था, मैं रेजिडेंट कमिश्नर था, उसका मैंने फायदा उठाया दिल्ली में। मैंने 19 जिले थे, 19 डिप्टी कमिश्नर और 19 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो डेवलपमेंट के इंचार्ज होते हैं, उन 38 को मैंने ये एक चिट्ठी भेजी कि मैं आपको ये 350 स्कीमों की लिस्ट भेज रहा हूँ। यहाँ डॉक्टर कुंडू बैठे हुए, रिसर्च की बात होती है। एक रिसर्चर एक बड़ी गलती ये करता है कि जब रिसर्च करना शुरू करता है तो वो सब बाप दादा परदादा हर चीज की 2000 क्वेश्चन लगा देता है, सिर्फ एसेंशियल 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन नहीं है। मेरे क्वेश्चनर में कुंडू साहब आप गेस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? मैं आपको 350 स्कीमों की लिस्ट भेज रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब बताइए आपने इसमें से कितने का नाम सुन रखा है? सिर्फ ये थी, क्योंकि अगर मैं पूछता कितने में आप स्कीम में पैसा ले चुके हैं, किसको दिया, क्या दिया, जवाब ही ना था। किसी ने 5 का, किसी ने 7 का, किसी ने 8 का नाम सुन रखा था 350 में से। तो हमारा काम बड़ा क्लियर हो गया कि हम इस स्कीम की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। और तो जो शाही साहब ने इसमें कहा कि इसकी ये मेरा तजर्बा, नजीब साहब तो बड़ी फैंसी मिनिस्ट्रियों में होते थे, मैं जरा गरीबों वाली मिनिस्ट्री, सोशल वेलफेयर इस टाइप की में था, जहाँ पे ग्रांट का कि वो ग्रांट का प्रपोजल बनाना नहीं आता। आप ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रपोजल बनाने नहीं आता। प्रपोजल बनाने वाली प्रोफेशनल वो है, वो अच्छे प्रपोजल फैंसी ग्लॉसी पेपर पे बनाएंगे, रिपोर्ट अच्छी बनाएंगी, सारा पैसा वो खा जाते हैं, और जो रियल अच्छा काम करने वाले वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम ये स्किल पैदा करें ताकि वो अच्छी रिपोर्ट बनाना सीखें, प्रपोजल कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखें, और उसके अलावा फाइनली फॉलो अप एंड फैसिलिटेशन। अब चेन्नई से, त्रिवेंद्रम से, गुवाहाटी से कोई प्रपोजल हेल्थ मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है, वो बेचारे आते हैं, जाते हैं। हम चाहे तो हमारी कोशिश होगी कि वो न हो। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, जैसे कि हर स्टेट का एक रेजिडेंट कमीशन होता है, इससे हम वो रोल प्ले करेंगे कि हम उन 8-10 मिनिस्ट्री से में एक नेटवर्क पैदा करेंगे। उसके लिए लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो जो जा के आपका काम करा के भेज दें, आपकी कितनी मेहनत उसमें हो जाएगी। तो हमारा ये 3 मोटी चीजें इसमें मैं कहना चाहता था। वक्त ज्यादा ले गया, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि रहमान खान साहब नहीं आया, उनकी जगह मैंने बोल दिया, ठीक है। और चीफ गेस्ट भी नहीं आया, उनका भी मुझे दे दीजिए कोटा। तो फातिन आजाद, मुझे बड़ी खुशी है, मैं इतने एमिनेंट लोग यहाँ पे देख रहा हूँ, इनसे हमने अगले 2 दिन यहाँ सीखना है कि आप हमको ये जो हमारा एक ब्रॉड विजन है, इसको प्रैक्टिकल शेप हम कैसे दें, ये हमें आपके गाइडेंस से ही मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बेहद सादा मगर पुरमग्ज खिताब रहा, और यकीनन एक फ़आल और मुतहर्रिक ज़हन से बात आती है तो हम सब के लिए तहरीक आमेज़ रही। मुझे याद आ रहा था वो 2018 का अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जश्न यौम सर सैयद, जब जनाब SY कुरैशी साहब वहाँ बहैसियत मेहमान खुसूसी के मौजूद थे। इनके खिताब के दौरान पंडाल तालियों से गूंज पड़ता था, और तालियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं, तलबा और तालिबात अलीगढ़ की तालियां। तो आपको बहुत मुबारकबाद इस खिताब के लिए। Ladies and gentlemen, we are very happy to have amongst us as chief guest Dr. Najeeb Jung Sahab. As we know, he retired from the Indian Administrative Services and served as the 20th LG of Delhi
and also the 13th Vice Chancellor of the Jamia Islamia. He studied from St. Stephen's College and from the London School of Economics. He's been a part of many, many prestigious positions and committees, and also been involved with the preparation of several documents. And Dr. Najib Jang Saab is here with us as our chief guest. I will request Dr. Najib Jang Saab for his address. मैसेंजर तकरीब भी काम आएगी। चांसलर जनाब अख्तर साहब, I2 के प्रेसिडेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब, याकूब कुरैशी भाई, शाहिद सिद्दीकी साहब, वाइस चांसलर सर साहब, बम्बई से आए हमारे दोस्त ज़हीर काजी साहब, कोपलानी साहब, मेरे दोस्त दिल्ली के बहुत पुराने प्रोफेसर कुंडू साहब, माना रशीद फिरके महली साहब, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त और साथी फुरकान कमर साहब, इनामदार साहब, हमारे इंस्पिरेशन प्रोफेसर नदीम, और मेरे IAS के बैचमेट और बहुत पुराने दोस्त अनीस अंसारी साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा है। इतनी बातें कही गई तो ज़्यादातर तो सब कुछ हो चुका। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि दूसरा नज़रिया आपके सामने रखूं कि ये कॉन्फ्रेंस का असली मकसद है क्या। शाहिद भाई ने कहा कि लोगों को जोड़ दें। मेरा अपना नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि इतने एजुकेशन से वाबस्ता लोगों के सामने कोई एजुकेशन पे लेक्चर देना मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन एजुकेशन के बारे में हम 2-3 दिन से ये गुफ्तगू कर रहे थे शाहिद साहब से कि तरह तरह की बातें हो रही हैं मुस्लिम समाज में, दलित समाज में, पिछड़े वर्गों में। हर एक तबका एजुकेशन के ख्वाब देख रहा है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ें, आगे बढ़ें। हमारा मकसद ये है कि वॉक द ड्रीम, ये जो ख्वाब है उसको लेके हम चल सकें और जो ख्वाब की दुनिया में है उनको जगा के इसकी बात कर सकें। और इसलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा था। खलील गिबरान साहब बहुत मशहूर राइटर, उन्होंने एक छोटी सी बात लिखी थी कि बेरूत में एक स्लेव कॉर्निश पे मुंडेर पे सो रहा था। तो एक साहब गए कि ये तो स्लेव है, गुलाम है, मैं इसको उठा दूं, ये शायद अपनी आज़ादी के ख्वाब देख रहा है। इसको तो किसी ने कहा कि नहीं इसको सोने दीजिए। उनका नहीं, मैं इनको उठाऊंगा क्योंकि मैं इनसे आज़ादी की बात कर सकूं। तो जो हम लोग अपने मुख्तलिफ इदारों में ख्वाब देख रहे हैं, वक्त अब ये है कि उस ख्वाब को किस तरह साकार किया जाए। और हम बार बार ये बात करते हैं मदरसों के मेन स्ट्रीमिंग की, साहब वहाँ पर दीनी तालीम हो रही है, उर्दू पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम किया जाए। ये मेन स्ट्रीमिंग क्या है? दीनी तालीम बहुत उम्दा है, होनी चाहिए। और जिस मेन स्ट्रीमिंग की आप बात कर रहे हैं ये भी एक डेकेड पीछे है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं आज कि हम दीनी तालीम के साथ फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, ये सब पीछे रह चुका है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है। तो जब तक आपका बच्चा फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बातें करेगा, ज़माना उसको छोड़ के आगे निकल चुका। तो ये जो ख्वाब की तामीर की बात थी कि अगर हम नहीं जागेंगे आज और कंप्लीट मॉडर्न एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेटेस्ट यूनिवर्सिटीज अब्रॉड
अगर उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचेंगे तो हम कैच अप नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो कैच अप कर लेते हैं। याकूब भाई बार बार अपने स्कूल का एग्जाम्पल देते हैं कि साहब मैं एंग्लो-अरेबिक में पढ़ा, मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं सेंट कोलंबस में था, लेकिन कैच अप तो कर ही लिया, मुझसे सर्विस में भी 2 साल सीनियर है। तो ये यूनिक एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स दैट आर प्रॉपर टू गिव। कैचिंग अप बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एक स्टेज के बाद। सो the point which I always make, और ये भी बात कही जा चुकी है कि तालीम से क्या फर्क पड़ता है, ये एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ। इधर 1948 में इजराइल की अरब मुल्कों से जंग हो रही थी, इजराइल की आज़ादी नहीं हुई थी, तो इजराइल वाज सराउंडेड बाय 6 अरब नेशंस। तादाद में वो कहीं ज्यादा थे, लेकिन इजराइल वो जंग जीता, और इसलिए जीता सिर्फ एक वजह से कि उसका जो सिपाही था वो पढ़ा लिखा था, और जो अरब सिपाही था उसको बताया गया था कि बंदूक चलानी है, लेकिन बंदूक का इस्तेमाल किस तरह और कब किया जाए, किस मौके पे किया जाए, किस पे किया जाए, इसका इल्म उसको नहीं। ये चीज हम मिस कर गए, और वो फायदा आज तक यहूदी कौम ने उसका फायदा उठाया है। देखिए, कोई कौम दुनिया में इतनी नहीं है, आप पार्टीशन भूल जाइए, हिंदुस्तान का इतनी तकलीफ नहीं हुई, कोई कौम इतनी परेशान नहीं हुई है जितने यहूदी हुए थे बिटवीन 1933 टू 1944। ये 10 साल 6 मिलियन जूस वर किल्ड, और किस तरह मारे गए। जो लोग आज ऑस्ट्रिच जाते हैं और वहां देखते हैं, तो जो लोग बाहर आते हैं उनकी पर्सनालिटीज बदल जाती है आज की तारीख में, जो उन्होंने वहां देखा है। और वो लोग आज दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल्स पे राज करते हैं। आप लोग चले जाएं, लाइechtenstein चले जाएं, आप लग्जमबर्ग चले जाएं, आप पेरिस चले जाएं, आप लंदन की स्ट्रीट्स पे चले जाएं, the Jews are dominating the financial markets, और फाइनेंशियल मार्केट डोमिनेट करने की वजह से आप पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। कोई भी पार्टी हो, किसी मुल्क की पार्टी हो, हर एक पार्टी खरीदी जाती है, चाहे वो सेनेटर हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो खरीदा जाता है, और उसके लिए सरमाया सिर्फ उन्होंने अपनी अक्ल से हासिल किया है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, जफर यहाँ मौजूद हैं, इनकी ह्यूमन सर्विस है, मैं समझता हूँ कौम के लिए, लेकिन सिर्फ सिविल सर्विसेज में आना, एक एम्बिशन रखना, मेरे लिए वो इतना काफी नहीं है। एक और मैं उदाहरण आपको देता हूं कि किस तरह कौमें बदल रही हैं इल्म से। जब पार्टीशन हुआ तो दिल्ली में एक बहुत तब्दीली आई थी, सब रेफ्यूजीज आ गए थे, ज्यादातर पंजाब से रेफ्यूजीज थे, और उन्होंने बिजनेसेस एस्टैब्लिश की, दुकानें खोली, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई, और जो तकलीफ में रहे थे उन्होंने 1950-60s तक बहुत अच्छा आसूदा अपनी जिंदगी बना दी थी। लेकिन 1980 के बाद एक तब्दीली आई। वो जो उस जमाने का पंजाबी रेफ्यूजी था, वो आज दिल्ली की बिजनेस डोमिनेट नहीं करता है। दिल्ली की बिजनेस दूसरी वैश्य कम्युनिटी डोमिनेट करती है। अगर सरनेम है, गुप्ता है, गोयल है, अग्रवाल है, उन्होंने सब इंडस्ट्रीज पे आज कब्जा कर रखा है। आप अच्छी से अच्छी आज दिल्ली की सोसाइटी में जाएंगे तो लोग जिनको भी घर खरीद रहे हैं वो एक विशेष कम्युनिटी के हैं। क्यों? एक वजह कि ये जो कम्युनिटी है, ये मैथमेटिक्स में हमेशा अच्छे रहे, नंबर्स केम नेचुरली टू देम, और आज के जमाने में पिछले 20 साल से superiority of their knowledge of mathematics has helped them dominate business. तो ये एक टाइम निकलता है हर कम्युनिटीज का, हर समाज का, कि कौन पीछे रह जाए। ये 20 साल में परिवर्तन हो गया। याकूब भाई ने बच्चियों की बात की, और मैं आपको बताऊं कि
हम लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जामिया में ज़्यादातर हम बच्चियों को भेज रहे हैं उर्दू अरबी पढ़ने के लिए। बहुत कम बच्चियां हैं जो इंग्लिश डिपार्टमेंट में हैं, जो इंजीनियरिंग में हैं, जो आर्किटेक्चर में हैं, जो डेंटिस्ट्री में हैं। मैंने कई पेरेंट्स को बुला के, पहले तो बच्चियों को बुलाया कि तुम क्या करोगी इसके बाद, बीए कर लेंगे तो बीए कर लेंगे, चलिए उसके बाद एमए भी कर सकते हैं, और एमए के बाद सबसे पहली चीज कि इनकी शादी कर दी जाए। और एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं कि हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाए। आप लायबिलिटी का मतलब समझें कि आप अपनी बच्ची को खानदान में लायबिलिटी समझते हैं, उसको अपना पार्टनर नहीं समझते। लड़का जो है वो तो आगे, उसको तो आप मैथ कम्युनिकेशन में भी भेजेंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, लेकिन बच्ची को उर्दू और अरबी पढ़ा के उसकी शादी कर दें। और 19 साल की, 20 साल की, 21 साल की उम्र में उसके फिर बच्चे होंगे और उसका क्या फ्यूचर होगा। लेकिन उसी बच्ची ने आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है, वो सीएए के मूवमेंट में, कि पूरा जो सीएए का मूवमेंट है उसमें लीडरिंग हमारी बच्चियों ने की है। तो अब मुझसे मिलने एक जामिया के साहब आए थे, किताब क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा ये लड़कियों से करो, उन्होंने तुम्हें लीड की, तो उन्होंने तुम्हें लीड किया था। वो फरमाते हैं नहीं साहब, नहीं ऐसा नहीं था, पीछे तो हम ही थे खड़े हुए। सो जो क्रेडिट जहां दिया जाना चाहिए वो भी हमारी कौम के मर्द आज देने से झिझकते हैं। ये चीजें हमें अपने स्कूलों में बतानी पड़ेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, प्रॉफिट की बेगम का, प्रॉफिट की बीवी का, हजरत आयशा का एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, हजरत खदीजा का एग्जाम्पल आपको बार बार देना पड़ेगा कि इसी कम्युनिटी में लेडीज ने लीडरशिप प्रोवाइड की है। और अगर कोई भी स्कूल 50% से कम लड़कियां रखता है तो इट्स नॉट रियली वर्थ इट, इट्स ट्रूली नॉट वर्थ इट। दिल्ली में, गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी है जिससे मैं भी कुछ संबंधित हूँ, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। वो एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के पास 900 बेडेड हॉस्पिटल है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में 65% लड़कियां। तो जब आप जाते हैं तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, एक अच्छा लगता है कि कितनी एडवांस्ड। और जो वहाँ के साहब हैं जिन्होंने वो यूनिवर्सिटी शुरू की है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने, वो खुद पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन उनका एक विजन था। उन्होंने पैसे कमाए लॉटरी से, वो लॉटरी चलाते थे, उससे बहुत पैसा कमाया, और एक दिन उनको ख्वाब आया कि मुझे कुछ काम करना है, और उन्होंने यूनिवर्सिटी, जैसे अख्तर साहब आपने बनाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूनिवर्सिटी बनाई। लेकिन ये भी ख्वाब था साथ साथ कि बच्चियों को तरबियत देनी है। 65%। अब मैं मोटी बात पे आता हूँ। एक चीज होती है जो स्कूल में आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा देना, माने लिटरेसी। मेरी किताब में पढ़ने लिखने का अंत लिटरेसी नहीं है। लिटरेसी कोई भी कर सकता है, ABCD EFG। इसके दूसरी है कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको नॉलेज इम्पार्ट करना, उनको एजुकेशन के जरिए नॉलेज देना, क्योंकि नॉलेज से ही आपकी कम्युनिटी में लीडरशिप आएगी। विदाउट नॉलेज you will produce leaders like Atiq and Ansari and all those people that are being closed, और ये जो रेसलिंग चैंपियन है, ये लीडर्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आज। We need leaders who are thinking, और इंडियन पूरी नेशनल मूवमेंट उन लीडर्स पे बना है who had knowledge। आप चाहे जवाहरलाल की बात करें, चाहे बोस की बात करें, चाहे गांधी की बात करें, चाहे पटेल की बात करें, these people were extremely well read, they were knowledgeable people, some were even philosophers. Jawaharlal could write one of the greatest books sitting in jail without reference books, The Discovery of India and The Glimpses of World History. Letters which he wrote to his daughter are examples of profound knowledge. तो कहीं ना कहीं लिटरेसी के साथ हमें
तवज्जो देनी है टू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, और उसका बेसिस है हमारे टीचर्स। अगर टीचर में ये नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या नॉलेज देगा? हमने टीचर्स की ट्रेनिंग पे तवज्जो दी ही नहीं। They have to come and be better trained. They have to be thinking people. They have to have studied philosophy. They have to have studied literature and poetry, without which वो टीच नहीं कर सकते, उनको अधिकार ही नहीं। आज सच्चाई ये है कि मैं अभी अपना घर रिपेयर कर रहा था, तो 80% जो कारीगर आते हैं दिल्ली में, 80% वो मुसलमान। बिजली का काम वो कर रहा है, बढ़ाई का काम वो कर रहा है, पॉलिशिंग का काम वो कर रहा है, जो ठेकेदार उनका इंचार्ज है वो भी मुसलमान। तो हाथ की स्किल जो आदमी इतनी अच्छी अक्वायर कर सकता है, इतनी आउटस्टैंडिंग प्लम्बिंग कर सकता है, इतनी अच्छी बिजली का काम कर सकता है, उसको जरा सा अगर मौका हम लोग देते तो वो आज एजुकेट हो जाता, अच्छा इंसान है। 30 के 30 रोजे रख के वो दिल्ली की गर्मी में 40 डिग्री में हमारे घरों में काम करता है। It's 40 degrees temperature. He works in her house as a labor. ये हम लोगों को सोचना है कि जरा सी एजुकेशन की तरफ जो पुश है, तो ये जो आई डू का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, महज इसलिए है कि आप जैसे जीनियसेस, गोपलानी साहब, काजी साहब, इनामदार साहब, अख्तर साहब, इनको अगर हम इन सब की ही मैरिज करा दें एक कमरे में बंद करके, पोप का जो सिलेक्शन होता है ना साहब, कि बिशप्स को बंद कर दिया जाता है एक कमरे में, और जब तक कोई रजामंदी नहीं होती तो सिस्टीन चैपल से धुआं नहीं निकलता। अगर आप लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए कि भाई एक ऐसी योजना बनाइए, ये 5 लोग नहीं कर सकते, जलील साहब और शाहिद साहब, याकूब भाई, ये हम लोगों का बस का नहीं है, हमने तो एक आइडिया दिया है। अगर आप लोगों को एक कमरे में बंद करके ये कहा जाए कि साहब अब आप हमको प्लान बना के दीजिए, प्लीज गिव अस एन आइडिया टू लीड दिस कम्युनिटी आउट ऑफ दिस डार्कनेस। वी आर इन अ डार्क होल। You are today worse off than what the Dalits are. Please understand this. Thanks to the reservation systems, the Dalits have acquired political power. The caste system still exists in this country, but they have acquired political power. Today, from Kashmir up to Bihar, there is not a single Muslim member of parliament. अब देखिए, कश्मीर से चलिएगा, अब फारूक अब्दुल्ला साहब को छोड़ दीजिए, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, आप एक आदमी नहीं दिखता। आप लोगों ने बहुत बातें की कि साहब हम तो 20% हैं, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना सकता, आपको बना के दिखा दिया। So the myth has been exploded. And the myth that has been exploded is, and the truth is, that without education, you are going nowhere. To acquire power, to acquire respect, to acquire stability, you will have to resort to education. तो आप लोग सब जो स्कूल चला रहे हैं, यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस हमने की थी कि सिर्फ ये सोचना शुरू कर दें कि ख्वाब का टाइम खत्म। Let's get down to the brass tacks of giving quality education through quality teachers, borrowing. देखिए हमारे जो young हैं, they will be our leaders. There is a young boy here, Rehan, I don't know where he's sitting. There is Subhan here. They are doing enormous work. ये हमारे उदाहरण हैं. If we can take a leaf out of their careers and emulate them, so there is a future. So thank you very much. Thank you very much, Dr. Najib Jain Saab, for this address and raising some very, very valid points indeed for enlightening the audience. जो आपने जिक्र किया कि यहाँ मौजूद इनामदार साहब और मुअज़्ज़िज़ ज़फ़र महमूद साहब और तारिक काजी साहब, इस इनॉग्रल सेशन में इनकी नज़र ये शेयर करना चाहती हूँ कि इन मुश्किलात से वो यहाँ पहुँचे हैं,
कि क्षमा का रक्त से शोला आतिशी तो सबने देखा मगर, क्षमा का रक्त से शोला आतिशी तो सबने देखा मगर, ये किसी ने नहीं देखा कि परवाने पे क्या गुजरी. IDO certainly is destined to make history with these 5 foundational figures present here, and today IDO is taking some historical steps in this campus premises of the Integral University. An app is being released today, a mobile app named IDO Community Mobile App. I will request President IDO, Janab Lieutenant General Zamiruddin Shah Saab, to press the remote and release this app. And we can have a look at this app on the screen. So everyone present here is requested to make it as popular as possible, this app. Another historical step in this journey of IDO today is the release of its maiden souvenir. I will request all the guests present here on the dais to release the souvenir of IDO. Kindly, the volunteers are requested to hand over. This is quite a coded moment, picture perfect, with everybody there. Thank you so much, and many congratulations to everyone who has been behind this souvenir and everyone who is holding it aloft. Ladies and gentlemen, I can't say much after Lieutenant General Zamiruddin Shah has already said, गुलपोशी नहीं की तो बहुत अच्छा किया, लेकिन सर मेमेंटो तो हक बनता है इतनी मेहनत के बाद तमाम डिग्निटरीज का. So I will now request the host and the legendary Professor S.W. Akhtar Sahab to present a memento to our chief guest, Dr. Najeeb Jung. I will now request Wasim Akhtar Sahab to present a memento to Janab S.Y. Qureshi Sahab. Requesting Wasim Akhtar Sahab to now present a memento to Janab Shahid Siddiqui Sahab. I will now request Janab Wasim Akhtar Sahab to present a memento to Lieutenant General Zamiruddin Shah Sahab. And may I request Professor Javed Masarat Sahab to present a memento to Janab Wasim Akhtar Sahab. And would President IDO Lieutenant General Zamiruddin Shah be kind enough to present a memento
to Janab Javed Masarat Saab. Thank you so much and heartfelt felicitations to everyone on the dais and off the dais. Before we end this inaugural ceremony of the second National Conference of IDO, I will request Professor Javed Masarat Saab, Vice Chancellor, Integral University, to deliver the closing remarks. मेहमान निगरानी और तीनों हज़ार, मैं इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से आप तमाम हजरात का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदूम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। इससे पेशतर कि मैं वो जिम्मेदारी जो मुझ पर आयद की गई है मैं उसको निभाऊं, दो बातें मैं आपसे कुछ अलग कहना चाहूँगा, फिर मैं अपने फर्ज को अंजाम दूंगा। वो ये कि तालीम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एजुकेशन का और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का, अंडर प्रिविलेज के जहाँ हम लोग वीक हैं, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अखलाकियात में, मामलात में आपसी तालमेल, मोहब्बत, इंकसारी, एक दूसरे की मदद, इस पर भी तवज्जो की ज़रूरत है। एक मिसाल मैं देकर अपनी और अपने मोहसिन लेफ्टिनेंट जनरल शाह साहब के ताल्लुक से ख़त्म करके अपने उस किताब को करूँगा जिसके लिए मुझे हुक्म दिया है। बात 2015 की है, जब मेरी तकर्रुरी कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी में बहैसियत वाइस चांसलर हुई और मैं जनरल साहब से टाइम मांगा कि साहब मैं मुलाकात के लिए हाजिर होना चाहता हूँ। 2 साल मैं जनरल साहब की मौजूदगी में अलीगढ़ में रहा, उससे पेशतर बाहर था जब आप तशरीफ लाए। मैं 13 और 14 में आपकी मौजूदगी में वहाँ रहा। 15 को मैं जब पहुँचा 2015 में आपसे मुलाकात के लिए टाइम लेकर, उससे पेशतर नहीं गया 2 साल। ज़रूरत भी नहीं थी वाइस चांसलर के यहाँ जाके उनका टाइम ख़राब करने की। मैं किसी वाइस चांसलर के यहाँ नहीं गया, जनरल साहब के यहाँ नहीं गया। तो जनरल साहब ने कहा कि आइए, मैं शाम में हाजिर हुआ। मुझे जनरल साहब ने अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, कैसे आना हुआ। मैंने वो ख़त जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे कश्मीर के, हमारे मुफ्ती सईद साहब, उनके दस्तखत से वो लेटर मिला था, मैंने पेश किया। मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे मेरा वाइस चांसलरशिप का वहाँ हो गया है कश्मीर में, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करने आया हूँ कि मुझे आप डेपुटेशन दे दीजिए। तो मैं बड़ा मशकूर हूँगा। बहुत खुश हुए। अपने मखसूस अंदाज में अपने ऑफिस के आदमी को बुलाया, बोले वसीम, आई वांट टू सी दिस फाइल टुमारो ऑन माय टेबल। मैं खुश हुआ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। मैंने कहा सर ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ जल्दी है, मुफ्ती साहब ये चाहते हैं कि मैं 3 दिन के अंदर ज्वाइन कर लूँ, 30 तारीख तक, आज 25 है, तो अगर मुमकिन हो तो ये जल्दी हो जाए। नेक्स्ट डे मेरा 5 साल का डेपुटेशन मेरे डिपार्टमेंट में मेरे पास पहुंचा और मेरी बदकिस्मती ये कि मैंने जाके ज्वाइन कर लिया और उसके बाद मैं जनरल साहब का शुक्रिया अदा ना कर सका। मैं टेलीफोन पे भी कर सकता था, ईमेल भी कर सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि उसकी वो खुशबू जाती रहेगी, कभी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। 7.5 साल के बाद जो है आज मुलाकात जनरल साहब से यहाँ हो रही है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर आपका। मेरा फिर इस यूनिवर्सिटी में आने का सिलसिला जब बना तो मैं गया दोबारा से। मैंने कहा साहब वाइस चांसलर साहब के पास के साथ मुझे जो है वो डेपुटेशन चाहिए। दरख्वास्त भेजी, मुलाकात का तो खैर कोई मौका नहीं था, वो दरख्वास्त रिजेक्ट होकर आ गई वापस। उनका नहीं मिलेगा आपको कोई डेपुटेशन। मैंने साहब छुट्टी दे दीजिए, बोले साहब छुट्टी भी नहीं मिलेगी। मैंने साहब लीव विदाउट पे दे दीजिए, बोले ये भी नहीं मिलेगी। 3 महीने में वहीं रहा। बहरहाल
किसी तरह से वो 1 साल का डेपुटेशन मिला। मेरी शिद्दत जो थी शुक्रिया अदा करने की और बढ़ गई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडू का कि उसने ये मौका दिया यहाँ पर। जन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने पहले एट्रीब्यूट्स आपके सामने रखे वो लीडरशिप के अंदर होने चाहिए, तभी आपके स्कूल पनप पाएंगे, तभी आपकी यूनिवर्सिटीज पनप पाएंगी। So now I'll come to my point. In fact, the responsibility that has been entrusted upon me to say the word of thanks, and it is indeed my proud privilege to express my gratitude and my appreciation for the successful conduct and culmination of the inaugural session of this 2-day national seminar on education and development, empowering and uplifting the underprivileged, being jointly organized by EDU and the Integral University. So first and foremost, I would like to extend my heartfelt thanks to the EDU leadership and office bearers for providing the opportunity to Integral University for hosting this event and for their tireless efforts in making this event a reality. The dedication and the hard work of both the EDU executives and our integral team under the dynamic leadership of our young and very dynamic Pro-Chancellor, Dr. Syed Nadeem Akhtar, have been instrumental in bringing together a diverse group of like-minded individuals across the country who share a common goal of empowering the underprivileged and weaker section of our society. I would like to express my sincere thanks to all the distinguished speakers, Lieutenant General Zamiruddin Shah Sahab, Professor Syed Wasim Akhtar Sahab, Dr. S.Y. Qureshi Sahab, Shahid Sahab, for sharing their valuable insights and thoughts during the inaugural session. Your contribution, your valuable ideas are really appreciated. Your willingness to share your time and expertise is a testament to your commitment to the cause of uplifting the underprivileged. We are delighted to have you all here and will do our best to ensure that this conference will be a grand success. We believe that this conference will provide an excellent opportunity for all of us to learn from each other and contribute to the cause of empowering the underprivileged. As we move forward to the technical sessions, I am confident that the session proposed will be excellent and will deliver and will go deep into the issues. They will delve deeper into the issues, rather, I should say, and provide solutions to the problems and challenges faced by the underprivileged. The conference has a mission to find a way forward to uplift the underprivileged and weaker section of our society. I'm pretty sure that the deliberations will help in achieving the objectives. Finally, I would like to reiterate that the Alliance for Economic and Educational Development of the Underprivileged is doing excellent service to the underprivileged and weaker section of society. Their dedication and commitment to nation building are inspiring. And I'm sure that the efforts will bear fruit in years to come. Moreover, ladies and gentlemen, Integral University is a beautiful and serene campus that offers a perfect environment for learning and collaboration. We hope that our honored guests will feel comfortable and enjoy their stay on our campus. Once again, I express my heartfelt thanks to all the dignitaries, guests, and participants who have made this conference a success. Let us continue to work together towards the common goal of empowering the underprivileged and making our society equitable and a better place for all. I once again
assure you that we will prove to be a good host and make sure that the technical session for today and tomorrow are all conducted smoothly. And we look forward for a productive and meaningful conference. I would like to add further, जो हमारे कुरैशी साहब ने अभी कहा कि ये बाहर जो हस्तियां जिनकी तस्वीर यहाँ लगी है दीवारों पर, वो कहाँ चले गए, कहाँ हैं वो लोग, और कौम क्यों उसके बाद बैठी है, क्यों नहीं चली आगे। तो मैं दो मिसरों के साथ अपनी बात यहाँ खत्म करूंगा कि कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, और बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते, और चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे, चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे, अपने पैरों पे अगर चलते तो चलते रहते। Now, Javed Musarrat Saab, thank you for these closing remarks. We also hope that these insightful deliberations will be carried forward in the technical sessions. Now, we are already late by 45 minutes for the first technical session. देवी और सज्जनों, अब हम हर देशभक्त भारतीय की तरह अपने राष्ट्र के राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. Please have a cup of tea and come back for the first technical session in 15 minutes.
May I request the panelists for this session to please come and take their positions, their seats on the dais. जनाब पीए इनामदार साहब, अगर मुझे सुन रहे हैं तो स्टेज पे अपनी नशिस्त पे तशरीफ फरमा हो बराए करम. And I will request Professor Amitabh Kundu, sir, kindly come and take your position on your seat. Dr. Khalid Khan, if he's here, panelist for this session. Dr. Khalid Khan, can you hear me? Let us give a big hand of applause to Professor Amitabh Kundu. One for his presence and two for his punctuality. And let us also welcome Khalid Khan Sahab. इनामदार साहब वो कुछ ठीक नहीं है, बात में थोड़ा आराम करना चाहिए, जैसे कल के रहेंगे. So unfortunately, Inamdar Sahab is not feeling well, so he will not be joining us in this session today. We hope that he recovers and then he joins us tomorrow in some session. And in this session, we will also have Professor Javed Masarat Sahab as one of the panelists. No, that's changed. So if somebody can intimate Javed Masarat Sahab. I request Javed Masarat Sahab to kindly take your seat, sir, on the dais, please. So once again, welcome to this first technical session of the second National Conference of IDU. The session is themed on education and development of the underprivileged in India, status, issues, challenges, and opportunities. We have already heard Vice Chancellor of the Integral University, Professor Javed Masarat Sahab. He is also the patron of the professional development program here. He's a professor of agriculture microbiology, basically, from the Aligarh Muslim University, and academician of renown, a scientist of repute. He's a seasoned professional in higher education administration also. He has extensive international exposure and has served as visiting scientist at Michigan State University, USA. He's also served as the Vice Chancellor of the Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu and Kashmir. And we all know that he has been holding several key positions at the Aligarh Muslim University. As the inaugural address of this session, I will request Professor Javed Masarat Sahab to deliberate upon the theme.
respected dignitaries on the dais, esteemed guests, delegates, ladies and gentlemen. Well, I have been asked to speak 10 minutes on the topic entitled Education and Development of Underprivileged in India, the status, challenges, issues and opportunities, which has wide dimensions and a very large scope. I have no choice except to finish within the stipulated period of time. But please let me know that if I exceed a few minutes, in fact, I hope that the chairman is going to permit me to wind up. Ladies and gentlemen, education is a fundamental right and an essential tool for the overall development of individuals and societies. In India, access to quality education for underprivileged sections of the society remains a significant challenge. Sir Syed said, and I quote, "It is the categorical verdict of all the nations and great seers of the world that the national progress depends on education and training of the people," unquote. And we should keep in mind that the life without education and training is like a bird without wings. If you want to understand the status of the education and development of the underprivileged in our country, we must examine 4 parameters. Number 1 is access to education. Then quality of education. Some of the eminent speakers, they have spoken about the quality of education as well. The learning outcome and higher education and skill development. So as far as the access to education is concerned, India has made significant progress in improving access to education. However, the enrollment and retention of underprivileged students, we were talking about dropouts and other things, remains a challenge. With respect to the quality of education, many underprivileged students, they attend poorly equipped schools with inadequate infrastructure, lack of talented teachers, insufficient teaching material and modern pedagogical tools. That leads to the low quality of education. If we talk of the quality of research and higher education in general, which is measured in terms of the quality of publications, which in bibliometric parlance is measured in terms of the impact factor of the journals, no data is available. Very few data is available to the best of my knowledge. Way back in 2006, such a committee has reported that Muslims in particular, they account for 2.5% of research papers published in scientific journals. That's it. According to ICSSR report, Muslim contributed for 4.9% of the total research publications between 2000 and 2014. A study by the Center for Study of Developing Societies, one of the leading intellectual institutions located in Delhi, have reported that only 1.4% of patent applications were filed by this underprivileged community between 2005 and 2010. Now, these statistics suggest that our representation in terms of, I'm talking of researchers and scientists coming from the underprivileged society, are underrepresented. If we talk of the learning outcome, due to the issues like poorly equipped schools and educational institutions, and I said inadequate infrastructure,
untrained teachers and all lead to the lower quality, as I mentioned. Demonstrates that the lower learning outcome is there because of the identified reasons. Higher education and skill development is another very important factor, and underprivileged students have limited access to the higher education and skill development opportunities, affecting their employability and income generating potential. Now, according to ASHE 2019-20 report, the gross enrollment ratio of this underprivileged community in higher education has been between 12.2%, wherein if you see the distribution among males and females, then it is distributed as males 11.9%, females 12.6%. The national average is 27.3%. Enrollment in science courses was 10.8%, in engineering technology it's 7.6%, medical and paramedical courses 10.4% of the total enrollment in these courses. Representation and research I've already mentioned, but just 6.1% is our contribution as per the data that has been obtained from National Science and Technology Management Information System of DST between 2014 and 18. After this, data is not available. Reason could be socioeconomic factors, could be lack of resources and facilities, maybe discrimination. I'm not very sure about it. However, the fact of the matter is that there is a dire need to address these issues and promote inclusive policies and initiatives that encourage and support the participation of underprivileged researchers and scientists in research and innovation in India. If I touch on the issues and challenges, then I must say that it encompasses poverty, you all know, which is a significant barrier to the education for the underprivileged. Again, social discrimination, the caste, some of these speakers have talked about it, the gender and the religious discrimination and all. Language barrier is another very important aspect of it. Geological disparities. I mean, rural and remote areas, they lack quality education institutions, making access to education challenging for underprivileged students coming from these regions. Of course, inadequate government initiatives, while several government schemes aim to improve education and the educational access and quality for the underprivileged are there, but their implementation and effectiveness and the awareness, our awareness for that, is not that up to the mark, in fact. There's a lot of inconsistencies there. As far as the opportunities are concerned, the underprivileged population, people like us, should participate and reap the benefits of the government schemes and policies and initiatives. There is a substantial percentage of the underprivileged who are the beneficiaries of some of these schemes. For example, if I put up the data available up to June 30th, 2021, under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, 20.05% of PMJDY account holders are from underprivileged section, which needs to be further improved, in fact, because of the awareness we are not, and this is the Ministry of Finance data, in fact. Under Pradhan Mantri Mudra Yojana, 21.3% of the PMYY borrowers are from underprivileged section. Similarly, under Stand Up India, 5.5% loans were disbursed under this scheme and were given to entrepreneurs coming from underprivileged sections of the society. Similarly, National Rural Livelihood Mission, 24% of
NRLM beneficiaries are underprivileged. Pradhan Mantri Awas Yojana 11.7%, mid-day meal to 25% of the total beneficiaries are Muslims and other underprivileged. Sab Shiksha Abhiyan up to March 31st, 2021, 14.8% of Muslim children got enrolled in school under this. So, based on this information which I have shared with you, the conclusion that we draw is that the education is critical for the socio-economic development of the underprivileged community in India. Addressing the issues and challenges faced by the underprivileged communities and leveraging the opportunities available can lead to significant progress, ensuring equitable access to quality education. Ultimately, that will contribute to a more inclusive and developed society. So we must bring awareness to the masses, and I'm so grateful to EDU, in fact, that they have taken this responsibility and they have steered this campaign across the country, bringing people together, in fact, conducting this 2-day conference to deliberate upon all these issues and challenges and providing and thinking about the way forward for providing the opportunities to the people in the community. We must bring awareness to the masses. That is something very, very important, and it's our responsibility. And I wish all the best to EDU for all the success in this endeavor. Thank you very much, in fact, for giving me this opportunity, and I hope that the sessions that we are going to have will be deliberating on some of these points which I have mentioned in my discourse. Thanks a lot. Thank you very much, Vice Chancellor, Integral University, Professor Javed Musarrat Saab, for these insightful deliberations. Ladies and gentlemen, we are fortunate to have with us Professor Amitabh Kundu. He is chairing this session, and he's a senior fellow with the Sustainable Cities and Transport Program at WRI India. Currently, he chairs a committee to monitor the national survey being conducted for Swachh Bharat mission for the Ministry of Drinking Water and Sanitation. He has many, many credentials to his credit. I will request Professor Kundu to kindly deliver his address. ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आईयू के जो लीडरशिप टीम है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ आईयू से एसोसिएट किया, और जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंड आईयू, थैंक्स टू देम फॉर इनवाइटिंग मी to speak to this very distinguished gathering. मेरी उर्दू मुगल आजम से शुरू होती है और उमराव जान पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा काफ़ी जंग लग गया क्योंकि इस्तेमाल नहीं करना पड़ता दिल्ली में। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं हिंदुस्तानी में अपनी बात रखूँगा, जिसमें हिंदी, उर्दू और अगर अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हो तो समझिए ये कॉलोनियल एजुकेशन की दोस्त, उनकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। एक राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी कॉन्फ्रेंस जिसका फोकस अंडर प्रिविलेज्ड इनइक्वालिटी है, उसमें मैं आपकी इजाजत लेकर 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं ग्रोथ की बात करना चाहता हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ and educational development without bringing in the concern for the underprivileged and inequity, and let us see how far we can go. अगर हम inequality, inequity and underprivileged को cold storage में रखकर अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट को देखते हैं, आगे चलें। I just wanted to mention that I'm privileged to have the Vice Chancellor of Integral University and Dr. Khalid Khan, who has been my collaborator and lead author in the India Discrimination Report, which has come out last year, which really focuses on the discrimination pattern against women, against scheduled caste, scheduled tribe population,
and against the depressed minority. And he has been also contributing significantly to this statistical analysis. काम तो वही करता है, मैं सिर्फ अंग्रेजी घुमाता हूँ उसके ऊपर. Can we have the first slide? You see, Asian Development Bank, I have to operate it, perhaps. I'm sorry. आगे. फैजान जी, ये आधा मिनट मेरे हिस्से में मत काटिएगा. I wish I had Dr. Faizan Abbasi's English and Urdu so that I could have spoken much more freely. Asian Development Bank ने एक रिपोर्ट निकाली, उसका नाम है Asia 2050, and there's another one, Asia 2030. And you know what is the conclusion? वो कहते हैं 21वीं सदी एशिया के नाम, 21वीं सदी इंडिया के नाम. The title of the volume is Realizing the 21st Century for Asia, Realizing the 21st Century for India. The projection is that India is going to be the leading economy in the world, and something like 29% of the total manufacturing product will be consumed in India. सिर्फ हमें उसको realize करना है. It's not the only one. This is मेडिसिन इकोनॉमिक हिस्टोरियन वो कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा 58% था 1700 में, सन 1700, और ये घट के 11% हो गया था इंडिया का शेयर ग्लोबल जीडीपी में. लेकिन प्रोजेक्शन ये है, बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स which is quite independent of the politics. This was projection made in 2012, 13, 14, and they have revised it, but the picture is the same, that India will have 52% of the global income by 2050. So ये future project किया है, not by any enthusiastic bureaucrat or academics in India, but the global system. This is projection by Bloomberg Foundation, which has been used by World Bank, which shows जो green patch देख रहे हैं वो इंडिया का शेयर है total manufacturing production में, which is at the moment सिर्फ 7% है, but this will be 29% by 2050. चाइना का शेयर नीचे है, अभी चाइना का शेयर हमसे ज्यादा है, लेकिन by 2050 it will be at least 12% less. ये हमारा ग्रोथ का सिनेरियो है. और finally, this is the recovery. We are talking about V-shaped recovery. Pandemic के बाद में sharply rise हुआ है. Although there are some thinking that हो सकता है K-shaped हो. एक recent study आई है ICE, Indian Consumer Economy, उसमें बताते हैं कि inequality बढ़ी है 2016 और 21 के बीच में. Nonetheless, the future seems to be very bright in the overall growth scenario. लेकिन अब ये लेकिन बहुत important है. ADB कहता है कि ये जो हमने प्रोजेक्शन किया है, it will be only realized if the inequality issue is addressed. And inequality, they point out educational inequality. मैंने बताया था 2 मिनट के बाद में अचानक आपको एक stumbling block आता है that you cannot realize the reality unless you address the question of inequality in the access to basic education and higher education. ये देखिए, हमने assume किया ये जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है, इकोनॉमिस्ट लोग लगाते रहते हैं, forget about that. But हमारी inequality अगर वैसे ही रही जितना आज है, तो actual share 29% नहीं रहेगा, it will be 21%, something around that. और अगर inequality बढ़ती है, जिसका इंडिकेशन हमें मिल रहा है कुछ चीजों में, particularly in the educational field, तो हमारा शेयर जो है 12-13% होगा, 7% से बढ़कर 13% होगा. So basically, I want to submit, Mr. Vice Chancellor, you had made that point, and also in the inaugural session, कि upliftment, educational upliftment is absolutely necessary for the minority community, for the vulnerable community. मैं ये कहना चाहता हूँ, access to education and upliftment of the educational standards of the minority, of the women, of the Dalits is essential for economic development itself.
It is not only for the upliftment of the minorities. India cannot reach the dream that has been predicted by ADB or the World Bank unless we address the problem of inequality. अब कौन सी inequality बात करें? I just want to take the global scenario. मेरी फैजान अब्बास जी से थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, एक आध मिनट मुझे ज्यादा देने वाली है, मुझे बताया उन्होंने. Let us look at Human Development Index. अब पता है Human Development Index में per capita income तो है, purchasing power parity, और दो चीजें हैं, health and education. हम क्या देखते हैं, हमारी Human Development Index काफी तेजी से बढ़ रही थी up to 2015. उसके बाद में देखिए प्लेटो कर रहा है. क्या बात है, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जैसे पहले था. हमने एनालाइज किया अलग अलग कंपोनेंट, जैसे बताया एजुकेशन और हेल्थ, एंड यू फाइंड इन एजुकेशन वी आर रियली लैगिंग मच बिहाइंड. ये देखिए इंडिया की रैंकिंग है, पहला जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. 2010 से यूएनडीपी कह रही है कि हम ओवरऑल इंडेक्स तो देंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, लेकिन आपके मुल्क में अगर इनइक्वालिटी है तो उसका नंबर कट जाएगा, वो डिस्काउंट करके. तो रिवाइज एचडीआई है, वो है इनइक्वालिटी एडजस्टेड. अगर आपकी इनइक्वालिटी ज्यादा है तो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम हो जाएगा. हम देख रहे हैं कि हमारी रैंकिंग जो है 119 था, अभी 132 हो गया. वी हैव गॉन डाउन. Why? Of course, there are some countries which have come in. बीच में 4-5 कंट्री आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रोग्रेस जो है गिरा है. और you look at the human development index in 2019 में अब देखिए 0.647 था, अभी घट गया है. There are not any group of countries, neither most developed, medium, low and very low, कहीं overall human development index नहीं गिरा है. And I'm sorry to say that detailed analysis shows that educational inequality बहुत high है, और educational the mean years of schooling has gone down. मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने जब सुना हमारे जावेद साहब से कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन आउटकम अगर आप देखें तो उसमें देखा है कि इनइक्वालिटी एड्रेस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं. ये हमारा मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है. एंड आई थॉट दैट आई शुड रियली लुक एट दिस प्रॉब्लम ऑफ अनइक्वल एक्सेस. मैं जल्दी बताना चाहता हूं. देखिए इनइक्वालिटी क्या है. 2010 में जैसे इंडिया इनइक्वालिटी, एजुकेशनल इनइक्वालिटी 40% था 2010 में, हेल्थ की 31% था, इनकम की 14%. इनकम की थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में भी बढ़ी है. लेकिन चिंता की बात है, द रियल एरिया ऑफ कंसर्न इज हमारी एजुकेशनल इनइक्वालिटी जो है 40.6 था, वो बहुत ज्यादा नहीं घटा, 37% हुआ है. जबकि हेल्थ इनइक्वालिटी व्हिच इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एलईडी 31 से 16% हो गया है. So basically the point I'm making is that if you really want to achieve the dream that India should be the leading country in the world, $10 trillion economy, we are not talking about upliftment of educational standard of Muslims for their well-being only. You cannot achieve the overall growth rate of 7.5% unless you address the access to educational inequality, which is the conclusion coming out of the general equilibrium model used by ADB. But quickly, I just wanted to tell you a nice story. कहानी यह है कि हमारे यहाँ लिटरेसी एनरोलमेंट जो है 2014 में, उसमें सबसे कम किस कम्युनिटी का है? मुस्लिम का. Just see that this is the bar. I hope this is the bar for the Muslims. The enrollment 2004-05, we have data for 2011-12, we have the data for 2017-18, all from National Sample Survey. And you do find that the enrollment rate of Muslims is the lowest, even lower than scheduled caste, scheduled tribe population. This is the enrollment rate. And you see the little, ये छोटे छोटे जो लाल वाले जो हैं, वो दिखाते हैं चेंज कितना हुआ, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है.
और आप देखते हैं कि सबसे कम चेंज अगर हुआ है तो मुस्लिम में हुआ 2014-2011-12 के बीच में. Not only that it is low, but over time the improvement is also very low, which means the disparity has gone up. अब दूसरा ग्राफ है 2017 का, you get the same picture. The lowest enrollment rate for the children is for the Muslims, and the improvement also is low, which means that inequality जो है बढ़ रही है. अब इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि लिटरेसी रेट का क्या है. लिटरेसी रेट में हम देखते हैं कि मुस्लिम लिटरेसी रेट इज हायर देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब. ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि लिटरेसी रेट में 40, 40 प्लस, 30 प्लस, 60 प्लस आर ऑल इंक्लूडेड. And Muslim literacy at the time of independence was higher than the average literacy in the country. So basically what I am saying is that enrollment में हम देख रहे हैं कि कमी है, लेकिन literacy में Muslims are doing slightly better, basically because the earlier generation, the scheduled caste, scheduled tribe population was much more deprived, but currently the enrollment rate is very much better, and that's why the disparity is increasing. यही कहानी है. I don't want to take much time. I looked at the primary education, I looked at the secondary education, college education, and professional education. I don't want to go over all the slides, but I want to tell you the same story, that as far as the Muslim access to higher education is concerned, at the moment is more or less the same or slightly better than scheduled tribe, but slightly lower than scheduled caste, or equal to that. मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ. 2017-18 में हम देख रहे हैं the Muslims in relation to even scheduled caste population has slid down, basically because I think the reservation thing has certainly helped the scheduled caste, scheduled tribe community. I just want to mention one more thing, that dropout rate, we all know that is very high for the Muslim boys and girls. Boys go to the labor market, girls come back to home to look after the siblings. Lekin the national sample survey shows that the main reason for the dropout for the Muslim boys and girls is non-affordability, economic reasons. 25% of them drop out because of not being able to meet the fees. Whereas for scheduled caste and scheduled tribe, it is 16%, 20%. So I personally think that the government should reconsider the withdrawal of the fellowship, because economic factors is the main factor which is leading to ये जो dropout rate हो रहा है, ये आर्थिक कमजोरी की वजह से ये dropout बहुत ज़्यादा हो रहा है. I just need 1 more minute, Dr. Abbasi, 1.5 minutes. I just wanted to, after telling this story, that basically Muslims are at a low level, but over time they are sliding down, basically because of non-access, dropout rates, and non-affordability. I just looked at there's a convergence as far as rural and urban is concerned, convergence as far as the male and females are concerned, but unfortunately there is no convergence as far as the Muslim minority and other population is concerned. Well, I just wanted to. This is all showing that in graduation, the deprivation of the Muslims is very high, but still it is slightly higher than scheduled tribe population. But over time, this advantage may disappear unless there are supportive programs which are brought in. Now, this is from that 2017-18 data, which shows by 5 expenditure categories what is the situation in for India on an average. And I thought, I look at the situation in Uttar Pradesh, and I will ask this question. I was hoping that there will be people in the government, that how is Uttar Pradesh doing as far as education is concerned? How is Uttar Pradesh doing as far as education of the Muslims are concerned? Are the Muslims in UP better placed than the average Muslim in the country? Compared to Bihar, compared to Madhya Pradesh compared to Rajasthan. So this is the probing which is possible to do on the basis of the national sample survey data, जो आपको आंकड़े अलग-अलग एक्सपेंडिचर कैटेगरी में भी देती है और सोशल ग्रुप में भी देती है. हिंदू, मुस्लिम, एसटीज. मैं
सारा डिटेल में समझाना नहीं चाहता, ऑलरेडी हमारा जो समझौता था 2 मिनट का वो एक्सीड कर चुका है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि take any indicator of educational development, generally you find Uttar Pradesh is doing slightly below the national average, which is understandable. You know, per capita income में भी कम है, affordability लोगों को भी कम है, educational expenditure per capita वो भी कम है, क्योंकि लेवल ऑफ डेवलपमेंट का डिफरेंस है। समझ में आता है कि थोड़ा अगर एनरोलमेंट कम है हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में, रिसर्च में, टेक्निकल एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, कंपेयर टू द एवरेज, दैट इज टू सम एक्सटेंट अंडरस्टैंडेबल। बट द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द मुस्लिम्स इन उत्तर प्रदेश। ऑन एन एवरेज, मुस्लिम्स in Uttar Pradesh are slightly behind the average for the country. Even आप केरला को निकाल दीजिए, चलो केरला में obviously Muslims are much better off. Even then you do find that the average condition of the Muslims in the educational field is slightly worse. So that really poses a challenge for this present government, which talks about equal opportunity for all, you know, confidence of all, cooperation of all. तो ये जो challenge अगर आप नहीं meet कर पाएंगे, your dream of India being realized in 21st century may not be achieved. But last point I want to mention, which is in a way good news or a bad news. मैंने आपको ये बताया कि globally अगर आप देखें, the less developed countries have a higher inequality. This is shocking. India has much higher educational inequality compared to Germany, compared to any developed country, even the countries in the middle level. India has much higher inequality, not only in education, in health also, but educational inequality is starkly looking at our face. The same thing is true in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, as I mentioned, has a lower level of educational development for the average population, for the Muslim population. But there's sharper inequality in Uttar Pradesh. You do find, I'll just show you the last slide, and I promise half a minute. This is per capita expenditure. Can you believe? You know, you might say enrollment is 95%, 98%, so no problem. Poor or rich में कोई फर्क नहीं है. हमने 5 कैटेगरी बनाई है. But think about it. In elementary education, the poorest fellow, total amount that he pays is 2,000 rupees, which includes transport, bus stop, books, food, and all that together. 2,000 is the average, which means a Muslim household, if you calculate separately, you would have much less. In the lowest category, it will not be 2,000, it will be 1,200. Whereas at the highest expenditure category, एक बच्चे पे 25,000 खर्चा होता है. And can you imagine? There are people in the highest category who are spending 1 lakh per month for the child's education because they are studying in some, you know, in hill station. So this is the inequality. Primary education में कहना कि enrollment तो आपका हो रहा है is not important. Quality of education. Imagine the gap 20 times, you know, 15 times in the per capita expenditure. And what we find, I just come to the last slide, so I don't really want to. ये देखिए, ये बताता है कि average Muslim educational development is much worse in Uttar Pradesh compared, slightly worse. I wouldn't say much worse. The red marks show that it is less than the average situation, and this shows Uttar Pradesh compared with total India. सबसे पहला रो जो है वो highest expenditure category में है. You do find that average education in Uttar Pradesh is less compared to average education in India per person expenditure in elementary education, in professional education in Uttar Pradesh is less per person. But if you take the top category, I just want to mention this point because this is the last and the most important point. On an average, in Uttar Pradesh, a household spends less on the education of the children at different levels. But if you take the top 20%, they spend much more than the all India average, which means that there is sharp inequality. In Uttar Pradesh, the richer sections are able to send their children either within the state or within the state to some
good universities like Integral University. But I think it is important that Integral University has concern for the underprivileged. There are fellowship programs, but we really need to see to it that inequality in access to higher and quality education should not be restricted to the top 20%. And that's what is being reflected here. It shows that top 20% of population in Uttar Pradesh are better off in terms of education than the top 20% in the country, whereas Uttar Pradesh on an average is doing worse. And that is a matter of serious concern that a backward state like Uttar Pradesh, less developed, I wouldn't say backward, it's coming up. It might graduate into the middle income category soon, but the sharp inequality that exists in access to education in Uttar Pradesh is certainly a matter of concern for the present government. Thank you very much for your. Thank you very much, Professor Amitabh Kundu. With such substantial presentation, we certainly do not mind you breaking the covenant of time, of course. And if I has to do some policy level development, then this kind of expertise drawn from research like this is certainly going to be very valuable and useful. Next, we have Dr. Khalid Khan, who is an assistant professor at the Indian Institute of Dalit Studies, New Delhi, and he has great research experience, good publications, a young community leader destined to be a community leader. Dr. Khalid Khan, please. I first express my thanks to IDU and its leaders to invite me to this conference. And of course, it is a privilege for me to share the dais with my teacher, Professor Amitabh Kundu, and Vice Chancellor of Integral University, and Ms. Faiza. I'll speak on the issue of education. And this talk is largely based on my latest research paper. It is published with my PhD supervisor, Professor S.K. Thorat, and current chairman of my institute. This talks about the situation of different social groups and religious groups in higher education. And to complete my presentation in 10 minutes, I will focus on 4 major issues. In the question of enrollment of Muslims in higher education, then increase changes in enrollment of Muslims vis-a-vis other groups. I will try to locate Muslims vis-a-vis other social and religious groups, scheduled caste, scheduled tribe, Hindu OBC, Hindu high caste, where Muslims are standing when we talk about higher education. The third issue is, why does this disparity exist? This is a question. Generally, there are 2 types of argument. One is that the low enrollment among Muslims is largely attributed to the internal disparities. Means this is purely internal phenomena. And there is another argument which tells that this is due to external factors, particularly religion-based discrimination, which is pushing Muslims back. Fourth issue, which is I just started working on this particular issue, and I'm planning to publish a paper on this issue, is role of minority universities. How significant the role of minority universities is, because when we talk about the affirmative action and when we expect anything from the government or any pressure group tries to convince the government for any kind of religion-based affirmative action, a section in political, it's a section in politics and in academia argue that Muslims have their own institutions, so they should not have any kind of support from the government institution. And recently we have seen the rolling back of pre-matric and post-matric scholarship, and the argument was that there should be equal treatment among every group, including Muslims. So I will focus on these 4 issues, and I will make some remarks based on the major findings of the recent paper. The first is that the gross enrollment ratio, that is percentage of 18 to 23 years population, which should be in college or university, is lowest among Muslims. At all India level, 26 out of 100 18 to 23 years population are in
higher education. But this number for Muslims is 17. If we see the situation of other groups, only scheduled tribe joins the situation of Muslims. This number is 17 for scheduled tribes also. For scheduled caste, this is 20, means 4 1 from Muslim, then Muslim, 28 for Hindu OBC, and 41 for Hindu high caste. The gross enrollment ratio among Hindu high caste is 2.5 times more than Muslims. So this is the major concern. If we compare the situation of Muslims with other religious minorities, all the other religious minorities are doing better than the all India average. In fact, they are doing better than Hindus also. So Muslims are the only minorities who are doing worse than Hindus and who are below the all India average figure. The question is, why is this happening? If you see, let me share some numbers to further elaborate this point. If you see the total enrollment in higher education, it is close to 3.6 crore according to the latest All India survey on higher education by MHRD. This figure is for 2020. The enrollment of Muslims is 20 lakh. The enrollment of Muslims is 20 lakh, and it is close to 6% of total enrollment in higher education. Muslims share in population is 14%, but their share in enrollment in higher education is 6%. They are highly underrepresented in higher education. When we talk about addressing this issue, generally we think that it is possible to address by the community itself, but this target is a huge target. If you want to improve the situation of Muslims, this 20 lakh needs to be doubled. It must be 40 lakh. Only then Muslims gross enrollment ratio will be close to, in fact, slightly higher than all India average. If we see the enrollment ratio in minority universities, in total enrollment in minority universities, it is somewhere between 25 to 30,000. Jamia 25-26,000, Aligarh Muslim University close to 28,000. So to add more, 20 lakh extra enrollment in higher education, we need 80 such universities. If we can establish 80 universities like Jamia and Aligarh Muslim University, only then we will be able to address this question. Now I am coming to the second point, which is change in enrollment. Sir has already talked on this issue. I will further emphasize by sharing some figures. If we see the situation between 2007-8 and 2018, this is based on the calculation from National Sample Survey data. During this one decade, the gross enrollment at all India level has doubled. In fact, if you compare the situation of all gross enrollment ratio over the decades, this decade is the only decade where we have seen a remarkable expansion of higher education, 7 to 17. And during this period, at all India level, extra 14 students were added into higher education. But this figure is only 9 for Muslims. And this is lowest across all social and religious groups. For example, for Hindus, 15 extra students were added. Then for scheduled caste, it was 13. For scheduled tribe, it was 11. For Hindu OBCs, 15, and for Hindu high caste, 13. Highest increase was for Hindu OBC, not Hindu high caste. In every terms, if you see their situation in private universities or overall private higher education or overall higher education, the situation of Hindu OBC has improved remarkably, followed by Hindu high caste, SCs, and then comes Muslims and scheduled tribe. So the kind of jump we require to improve the situation for Muslim, we have not seen that kind of jump during this one decade. The question is, can we explain it by internal disparity, class disparity within the community? Of course, there is class disparity within the Muslim community. If you divide the whole population of Muslim community into 5 parts, 20% equal with increasing income, we find that the gross enrollment ratio for top 20% is 39%, far more than all India level. And gross enrollment ratio for
bottom 20%, lowest 20%, who are the poorest section of the community, is 7%. Means top 20% population have nearly 6 times higher than the bottom 20% population among Muslims. So there is class disparity within the community. So economic condition may be a criteria for improving the situation of the community. But this doesn't mean that economic criteria is the only criteria, and we should ignore the question of religious identity, and we should forget about the kind of religious discrimination which is largely found in find in literature. And I have the privilege of working on a report sponsored by Oxfam India. In that also we have talked about employment discrimination, and we analyzed the issue of Muslims also in that. If we compare the situation of same class, if means top 20% across different groups, we see that that Muslim community are backward even among the richest community. Means if we control the income with similar income, top 20% of Muslims, they are most backward among the top 20% of community also. So again, I'm sharing some numbers. The gross enrollment ratio for top 20% Muslims is 39%. This figure is 59% for Hindu high caste. 59% for Hindu high caste. Hindu OBC 50%. Scheduled caste 50. Scheduled tribe 63. Muslims are far below the performance of scheduled caste, scheduled tribes also. Hindu OBC and Hindu high caste are the most privileged groups, irrespective of income we consider. And this just story is same if we consider the situation of lowest 20%. All poor are also not equal. All rich are not equal. All poor are not equal. There is the question of identity can't be ignored. We can't improve the situation simply by improving the income level. Any kind of policy or affirmative action should be sensitive towards the religious identity. The question of social identity, caste. I will share some number for OBCs and high caste among Muslim and Hindus. This will tell the story. The gross enrollment ratio for Hindu OBC, for Muslim OBC is 17%. 17 out of 100 enrollment is of 100 youth in 18 to 23 years are Muslim, are enrolled in higher education among Muslim OBC. This figure among Muslim high caste is 16%. So there is no disparity based on caste within the community. OBC and Hindu Muslim high caste among Muslims are at the same position. But if we compare the situation of Muslim OBC and Hindu OBC, we find a huge gap. Hindu OBC, their GER is 28%, but Muslim OBC's GER is 17%. Both are getting same kind of reservation, both are under same kind of reservation policy. Still, Muslim OBC are not getting the benefit of this support. So the question of religious identity becomes relevant. Now I'm coming to the last part of the presentation. This is minority universities. For this, I have taken 3 universities as an example: Aligarh Muslim University, Jamia Millia, and Maulana Azad National Urdu University. If we see the share of Muslim in total enrollment, I have already told it is close to 5%, 5.5%, means close to 6%. In total higher education, including all colleges and university. Again, if we filter this and focus only on universities, universities means those who are at relatively higher level, we ignore the enrollment in college. Then of total enrollment, the share of Muslim falls down to 3.7%, from 6% to 3.7%. But in central universities, the share of Muslim rises to 8.4%. There are more than 50 central universities,
the share of Muslims increases in Central University. It falls down in total university, and it is in between if we consider the situation vis-a-vis overall enrollment in higher education. Why is this happening? This is happening due to the role played by these minority universities. And to explain it, I'm again sharing some numbers. Overall, the enrollment among Muslims is 20 lakh. 20 lakh Muslims are enrolled in higher education. In universities, they are 3 lakh. In central universities, they are 60 lakh. In minority universities, they are 50 lakh. The question is, there are more than 57 central universities. I have taken the example of 3 minority central university. The question is not on these 3 minority central university. The question is on the remaining 47 minority central universities. Out of total 60,000 enrollment in central universities of Muslims, 50,000 is in these 3 universities. Remaining 10,000 is in remaining 47 central universities. Why Muslims are not able to get enrolled in these so-called mainstream central universities? And this is why the issue of identity-based affirmative action is very important. It provides a space where any community, I'm not telling about Muslims only, the idea of a minority university should be strengthened. It should be expanded to other religious communities also, so that they would find a cultural space where they can freely get the education and find, if we try to explain this phenomena, the Bourdieu's argument of symbolic violence is highly prevalent. Those who are from sociology, they can easily understand this issue. Then, but the blame of minority central universities is that these are devised by Muslims. And I am claiming, this is based on All India Survey on Higher Education, Muslims are in minority universities. If we see the share of Muslims in minority universities, this is from All India Survey on Higher Education, MHRD, 2019-20. The share of Muslim in Jamia is 43.6%. 56% students are non-Muslim. The share of Muslims in Aligarh Muslim University is 46%. 54% are non-Muslim. The share of Muslims in Manu is 98%. Only 2% are non-Muslim. And I think I did not examine it in detail, but I think this is because of the criteria of Urdu in Manu. And this is why Muslims get a chance to get into in Manu. Since these universities are open to competition, so other universities are coming. Other students from other communities are coming into these universities. So I can say that these universities are not heteroized by Muslim community. These universities are representing a kind of diversity where students from other communities are also coming. But there is I think these universities should also introspect, introspect from the question of inclusion. The share of OBC is very low and SC/ST is very low. If 50%, more than 50% students are coming from non-Muslim and still OBC and SC/ST are low, then I think some kind of affirmative action is needed so that the diversity in the remaining 50% could be maintained. For example, if again I am sharing number, in AMU 17% students are OBC. In Jamia it is 13%. In Manu 21%. Among these universities, the share of OBC is highest in Manu. And then I will. So it's over. Thank you. Thank you, Dr. Khalid. Certainly, these findings backed by research will change the way we have been thinking about community development and education. The session is now open to discussions and questions and answers, if any, for the panelists.
Mike. Take this one. Take this. Thank you very much. I'm Dr. Anish Ansari, a retired IS officer. I have 2 or 3 submissions to make. One is that while the House has been able to understand on the basis of the data given and on the basis of the speeches delivered by the prominent guest here, there is a consensus, a general understanding that Muslims, they have lagged behind in education and other sectors. That is the bottom line. What is the way out? That is missing. Perhaps in the next sessions, that issue will be taken up. I have to make a submission on that. The major cause, the most dominant cause of the deprivation of Muslims, especially Pasmada communities, has been the lack of political representation. Dr. Ambedkar was one of the first persons to have come to this conclusion that in a democracy, without political participation and sharing power, marginalized communities cannot progress. Unfortunately, the Muslim elites, intellectuals, either they don't agree to this idea or they suppress this idea. Nobody has carried out the analysis to find out the relationship between the economic and social backgrounds of the Muslim community in the country vis-a-vis the political representation. If Muslim leadership, including those who are sympathetic, could only take up the issue of Article 341 since 1950 and could persuade the government to withdraw this restriction on the extension of political representation to the Dalit Muslims, which is available to them under the Constitution under Article 341, but has been denied by the executive order, which is unconstitutional and unfair in the language of Rangnath Mishra Commission. The participation of Muslims in the parliament and assemblies in the country would more than double. Sayyid Zafar Mahmood is here. He attached a list of the constituencies, about 36 parliamentary constituencies in such a committee, which list out that these are the areas where the Muslim participation in population is either substantial or in majority. There is a seat in West Bengal which has 60% Muslim population, but is accessible only to scheduled caste, which is denied by an illegal arrangement made on 10th August 1950 that only Hindus can be treated as scheduled caste under Article 341. If the Muslim community, I'm throwing a challenge, if the Muslim community, even present here, if they pick up this thread and force the government to remove this restriction, in the next 30 years, Indian Muslims, especially Pasmada Muslims, would be able to jump at least twice of their present socio-economic status. Second thing, there's another myth. This, and let me say very bluntly, this disease of keeping away from politics has come from, originated from Sir Syed Mustafa and was picked up by Abul Kalam Azad. Both of them advised the Muslim community in their times not to go for organized political action. That has done a lot of damage to the Muslim representation post-partition. Please forget those lessons. They did not know how democracy will function. Please forget those lessons. Try to get into politics, all the educated and resourceful persons. Try to persuade them to get into politics as much as possible, depending on their resource. Second thing, Muslim elite intellectuals especially, they are in a denial mode. Whenever there is a question of caste, they say, no, Islam is a very egalitarian religion, which is true, and therefore there is no caste. Now this is the myth. This is a fraud. Actually, while Islam is an egalitarian country, for which there should be no egalitarian religion, there should be no doubt about that. The problem is that the Muslims, like any other community, they don't follow the scriptures. Islam says that drinking is bad, liquor is bad, but there are lots of Muslims among us who drink. Similarly, caste system, which is rejected by the scripture and the practice of Prophet and other Sahaba Ikram, has been practiced for the last 700 years in this country. There are documents started from Jawal Barni.
So this denial mode, let us not talk about caste system of Muslims. That is doing lots of damage because while your study con is proving that there is a layer of, you are being very polite. You are bracketing the inequality coming rooted in the caste system of Muslims into the economic zone. I am telling you that there are two studies by the Institute of Development Studies done in 2017, and another one done by me under the Council of Social Sciences. Both of them, they affirm that there is an operation of caste system among Indian Muslims, like burial grounds, like marriages, like even drinking water in the family. If you come from the scheduled caste community of Muslims, go to an upper caste Muslim, it is likely, more likely, that your utensil will be, your glass will be different than the glass that they use. We should not shut eyes to the operation of caste system, despite the fact that Islam is a very egalitarian and good religion. Because unless you recognize the disease, unless you say, yes, we suffer from it, you cannot find a solution. Once we start doing that, once the intellectuals they start saying that there is a caste system, we should remove it, then there is a big road. See, 56% of Indian population comprises of OBC, 56%, and this is an old data. Times of India says 2 years back, they say that 60% of Indian population comes from OBC. This includes Muslim OBC, about 1/4 of them. 23% population is from scheduled caste. All these persons, they share the same miseries, same deprivation, same discrimination, which are shared by the Muslim Paswada communities. You can make a political alliance, a social alliance, an educational alliance, an economic alliance based on their caste deprivation. Sir, may I request you to Last shut? sentence. Yes, please. Based on caste deprivation. Once we do that, the upper caste dominated discrimination against you, against Muslims, that will be reduced to a great degree. Thank you very much for having patience. Thank you so much, Anisa. Okay, but I would request, I'll just take two more, yes. No speeches in the discussion, please. Just Not at all. Points not or at all. queries. I am an yes. avid researcher and I ask my questions as a researcher. Thank you so much for sharing your data, Dr. Kundu and Dr. Khalid Saab. My big worry is that the data is a data overdose. Very often disguises a lot of, the conclusions, the findings. What I'm interested in is, did you suggest a policy framework? Did you suggest a way forward? Both of you. Because, the problem is there. But as researchers, as educationists, as as evidentialists, we should not stop at just, the data. And this is it. What is the way forward? So I would like to hear a little more of that, if possible. I know the time is short, but as a researcher, that's what my interest is. All right, Thank sure. you. Thank you so much for this question. We'll take another question from the back over there, and that will be all. And then maybe Professor Kundu can address both the questions together. Quick. This is the last question that we're taking for this panel. Thank you, madam. It is well said that easier said than done. कहना आसान है, करना मुश्किल। मेरे दो छोटे सवाल हैं और मैं अपने जितनी भी डिग्नेटरीज यहाँ पे बैठी हैं जो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में बात करी, उन्हीं से मेरा एक छोटा सा दरख्वास्त है। पहली चीज़, हम भी एक स्कूल चला रहे हैं मैडम, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। आई रियली वांट यू टू प्लीज सपोर्ट आवर स्कूल। सपोर्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आई वुड से। सिर्फ हमें जो आपने इससे पहले हम लोगों ने ओपनिंग इनॉग्रेल जो प्रोग्राम था उसमें रखा था कि हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, हम टीचर्स को दे सकते हैं, हम कुछ टीचिंग एड में मदद कर सकते हैं। सो आई रियली रिक्वेस्ट टू दी पीपल सेटिंग आउट हियर, क्या आप ऐसे स्कूल्स को सपोर्ट कर सकते हैं? अगर सपोर्ट कर सकते हैं, वी हैव अ वेरी गुड स्कूल, बट वी आर मिसिंग आउट गुड टीचर्स देयर, वी आर मिसिंग आउट दी टीचिंग एड्स देयर। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूँ, जो क्रिश्चियंस हैं, जैसे सर ने कहा, सबकी मैं बात सुन रहा था कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं हम लोग को अपने आप को एंगेज करना होगा।
अगर आप डेटा उठा के देखें तो कितने आपके जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं वहां पर हम लोग परेशान हैं एडमिशन के लिए, लेकिन अगर आप बात करते हैं उनके पॉलिटिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की या उनकी पोजीशन की, तो शायद वो नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि क्या ऐसे स्कूल्स को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म या वाकई कोई टीम यहाँ पर है, तो अगर है तो प्लीज मेरा नंबर ले लें, मैं उनको स्कूल सजेस्ट करता हूँ। स्कूल हैज अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट वी वांट कि हमें सपोर्ट थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से मिल जाए, जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। I think this is what IDO aims at doing, and in future such networks and such platforms will certainly be used. We are really running short of time. Your question can be taken in the next panel. We have done away with the tea break right now, so I'm so sorry I'm not allowing this question. Well, मैं 4 सेंटेंस कम बोलूंगा। जी जी अगर इनको आप 4 सेंटेंस अलाउ कर दीजिए, इनको खड़े हो गए। अच्छा, I'll speak 4 sentences less, I promise. Thank you, Professor Kundu. Just I'm Parrot. आपने जो दोनों लोगों के एनालिसिस है, मुझे सिर्फ इतना कहना है, एक तरफ गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ आपके एनालिसिस सजेस्ट कर रही है कि मुस्लिम्स आर कंपेरेटिवली डूइंग वर्स। तो जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें कम से कम 500-550 करोड़ का बजट विड्रॉ हो गया इस बार में। माइनॉरिटी जो मोमा की थी वो करीब 16 करोड़ पे लेकर के चले आए। दूसरा जो पसमानदा कम्युनिटी की बात हो रही है, उसमें करीब मदरसा मॉडर्नाइजेशन में 30,000 टीचर उत्तर प्रदेश में हैं, 25,000 पसमानदा कम्युनिटी से हैं। उनकी सैलरी के लिए 243 करोड़ रुपया चाहिए था, 180 करोड़ का बजट था, उसको भी घटा के 16 करोड़ कर दिया, ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया। तो मैं ये चाह रहा था कि इस हाउस से एक स्ट्रॉन्ग सजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाए कि जो स्कीमें चल रही हैं उसको जब तक उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है वो कंटिन्यू करें। दूसरा 30 सेकंड और ले लूंगा, जो आपने सजेस्ट किया है, मेरा भी अपनी एनालिसिस है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ न्यू यूनिवर्सिटी एंड न्यू कॉलेजेस, जो माइनॉरिटी के कॉलेज में भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कैन टेक द लीड कि लखनऊ में कम से कम 30-35 कॉलेजेस हैं, और या अलायंस कैन टेक अ लीड कि उनका जो गैप है वो 15-20% है रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस बोथ। अगर वो हम प्रोजेक्ट ले लें तो मेरे ख्याल में 20-25 कॉलेज जो सिंक कर रहे हैं उनका हम रिवाइवल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Professor Kundu, 2 minutes for you. Yes. And this time, no breaking of the time covenant between you and me. सबसे पहले सैदुल सिद्दीकी साहब ने इनॉग्रेशन सेशन में कहा कि डेटा की बहुत जरूरत है, रोबस्ट इंटरवेंशन अगर आप करना चाहते हैं पॉलिसी लेवल पे, तो रेटोरिक से वैसे सही है, कुछ तो रेटोरिक भी चाहिए, लेकिन अनलेस यू बैक इट अप, इवन द कोर्ट्स डोंट टेक इट। अभी तो वेट कर रहे हैं कि साहब पोस्ट स्ट्रक्चर का कोई एक नया रिपोर्ट आए जो एनालाइज करे। तो आई हैव अ फीलिंग दैट द पॉइंट दैट सिद्दीकी साहब मेंशन, कुरैशी साहब मेंशन, एंड नजीब जंग साहब ने कहा भाई मैथमेटिकल थिंकिंग वो पढ़ाई होनी चाहिए, यू नो दैट इज इम्पोर्टेंट। नजीब जंग साहब, दिस इज नॉट बर्टन रसल बट अर्नोल्ड रसल हु सेज, बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा स्टैटिस्टिकल थिंकिंग शुड बी मैंडेटरी फॉर सिटीजनशिप। मैंने सोचा ये कहीं मैंने हायर लेवल पे पहुंचा दिया जो उनको सिटीजनशिप में बड़ा दखल कर रहा है तो और गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन nonetheless, all that I want to say in response to you, the question that came about the database, you see, हमारी एजेंडा में और क्या है, हम इफेक्टिव इंटरवेंशन करने की कोशिश करें डेटा के साथ में। मैंने देखा है जब हमने पोस्ट सर्जर कमेटी को रिपोर्ट तैयार की, सबमिट किया मिनिस्टर को, बहुत लोगों ने कहा क्या फायदा है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आई नो देयर आर एटलीस्ट 10 PhD thesis, 20 MPhil thesis and at least 15 questions asked in the parliament on the basis of the statistical data that we provided. I think this is the only effective tool of intervention. I know there are difficult times, ये बात सबने कहा, तो मैं तो यही कहूंगा, हो गई है पीर पर्वत सी, पीर यू नो दर्द, हो गया है दर्द पर्वत सा, पिघलनी चाहिए। उसके आगे सेंटेंस यह है, इस हिमालय से लावा निकलनी चाहिए नहीं कहा, इस हिमालय से यू नो गंगा निकलनी चाहिए। I have a feeling IDU should take up this challenge that there are inequalities, there are discrimination, which we have brought it out, and we should try to take it in the policy domain. There are takers. I don't think we should be totally frustrated. There are takers there. I'll just take one more minute. You know the point that Ansari sir mentioned about
the analysis of the caste variation within the Muslim community. Believe me, as a chairperson of post-structure evaluation committee, I went to Giri Institute, looked at exactly the data that you talked about, और मैंने कहा कि मुस्लिम्स में कास्ट सिस्टम है, there are Bangis, there are Chamas, आप उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दीजिए. When I talk to different groups of Muslim leaders in many cities, उन्होंने कहा भाई नहीं ये इस्लाम में कास्ट सिस्टम उसको मत लाइए. अगर ओबीसी में कास्ट इंक्लूड कर रहे हैं, what is the problem? Sikhs can be classified as scheduled caste. Buddhists can be classified, but Muslim cannot be classified as scheduled caste. I fought for it. But I must tell you, ये बात हमारे कमेटी की बात है. हमारे कमेटी के में भी लोगों ने कहा कि नहीं, आप मुस्लिम को डिवाइड मत कीजिए, सारे मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन कीजिए. मैंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ा गड़बड़ रहेगा. लेट अस से एक ओबीसी के अंदर 2 कैटेगरी बनाइए. जैसे कि खालिद ने बताया कि हिंदू ओबीसी और मुस्लिम ओबीसी आर वेरी वेरी डिफरेंट. So you put them into 2 categories, backward OBC, जिसमें मुस्लिम का representation बहुत high होगा. मुझे लगता है इसको I entirely agree with this suggestion that we should put up some kind of an agenda based on dispassionate discussion of the official data. Whenever I confront I am not, undesirable factor in the government. I've been asked to chair, but I say exactly what I do here. I say the same thing as a chairman of the Swachh Bharat Mission Committee. I did say that it is not 100%. I'm sorry, my analysis does not show that, but it is significant improvement. I'm not supposed to be part of the government machinery. Even if you are chairing a committee, I have a feeling we have the responsibility of bringing statistics into policy domain. And in that, I think IDU has taken strong. I have been associated only for recent years. The point that was mentioned by a colleague here, that is it possible that IDU does something about helping some of these civil society organizations in schools? We are preparing a compendium of civil society organizations classified by the purpose of work, funding pattern, the requirements, and hopefully the compendium will be ready. I was talking to Professor Qureshi. He said that हमारा कुछ support system रहेगा. I don't know how much finance. I don't think IDU will have a lot of money to really give it, but certainly connecting the governmental program with the institutions and tell them how to get it. And maybe at some point of time, it will be able to help financially also. But I think there's a major, major step in bridging the information gap. I'm sorry, my apologies. Thank you so much. What a wonderful way of summing it all up. Khalid wants to have a quick word, 1 minute. कास्ट वाले क्वेश्चन पर हम सिर्फ बोलना चाहेंगे. I don't deny the existence of caste-like structure among Muslims. सीधा कास्ट नहीं कहेंगे क्योंकि सोशलिस्ट लोग caste-like structure की बात करते हैं. क्योंकि आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग में ये कहा गया है देयर इज अ फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन फॉर कास्ट इन हिंदुइज्म, जो इस्लाम में नहीं है. लेकिन इसके माने ये नहीं कि मुसलमानों में कास्ट नहीं है. What is existing in philosophy and what is happening in the community are 2 different things. I don't deny the existence of caste among Muslims, but we have to study it deeply to understand how do we explain this phenomenon among Muslims. This is the first thing. Second thing, हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिम ओबीसीज के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह सारे मुस्लिम होमोजीनियस नहीं है, उसी तरह सारे ओबीसी भी होमोजीनियस नहीं है. जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो सारे ओबीसी को होमोजीनियस कहता है. हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम ओबीसी के पास रिजर्वेशन है और मुस्लिम हाई कास्ट के पास रिजर्वेशन नहीं है. दोनों की हालत एक जैसी है. ये खुद बता रहा है कि मुस्लिम हाई कास्ट बिना रिजर्वेशन के मुस्लिम ओबीसी के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन इसके बावजूद बिना रिलीजन बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन नहीं होने की वजह से दोनों के दोनों हिंदू ओबीसी से पीछे रह जाते हैं. आपको मुस्लिम ओबीसी को अलग कैटेगरी की तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर इनकी हालत को सुधारी जा सकती है. और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल होगा वेस्ट बंगाल का रिजर्वेशन पॉलिसी. देखिए, वो जो मुसलमानों के ओबीसी है उसको एक ग्रुप में डालता है और उसमें मुस्लिम का जो हाई कास्ट वो नहीं आ रहा. मुस्लिम हाई कास्ट हिंदू हाई कास्ट के साथ मिलकर के एक अलग ओबीसी का ग्रुप बनाता है. सो वी शुड अंडरस्टैंड द इंटरनल डिस्पैरिटी विद इन द कम्युनिटी, नॉट अमंग मुस्लिम ओनली, within the OBC, within OBC Muslim, within scheduled caste, everyone. Dr. Ambedkar told that there is graded inequality. Caste means graded inequality. ऐसा नहीं कि ग्रुप है. डॉक्टर अंबेडकर ने किसी ग्रुप की बात नहीं की है. डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं कहा कि सारे एससी एक है. डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि तय करता है. एससी के अंदर भी कुछ लोग हैं जो खुद को बेटर एससी मानते हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ग्रेडेड इनइक्वालिटी. उसके मुताबिक अफर्मेटिव एक्शन को टाइम टू टाइम फाइन ट्यून करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी को एड्रेस कर सकते हैं. थैंक यू.
Yeah, I just would like to submit that it would be in the fitness of things if we adhere to the theme of the session rather than digressing the issues. I am not against the open discussion, don't want to scuttle that because things are all interrelated, but I think that we are going to have some very important sessions tomorrow. So I hope that we'll adhere to the topic of the session, because the objective of the conference should not be defeated. And as Qureshi sir has already mentioned, and I endorse it, that at the end of this conference, we should have sufficient matter to develop a white paper, in fact, which should be a guideline for all of us to follow. So that's what my submission is. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Javed Masarat Saab. Ladies and gentlemen, our panelists, no matter how much we are running behind schedule, our panelists deserve to be felicitated with a memento. I will request President IDU, Lieutenant General Sameer Shah Saab, please come forward and hand over these mementos to our panelists. First and foremost, Professor Amitabh Kundu Saab. Congratulations, Kundu Saab. And next is Professor Javed Masarat Saab. And Dr. Khalid Khan, please. Thank you so very much for doing the honors, sir. And once again, thanks to the panelists. This session comes to an end. We had planned a tea break after this, but we are not going to go for the tea break. We move on to the next session. Dr. Jayanti is the moderator from the Amity Business School. I request Dr. Jayanti to please come forward and take the responsibility for moderating this session. Thank you so much, everyone. मैं थोड़ा अंदर चला जाऊँ सामने आ जाइए सर सामने बैठिए आराम से बैठिए आपने पोडियम यूज कर लिया तुमने 46 बताया हेलो I'm saying with authority.
मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि प्लीज थोड़ी देर और पेशेंस रखें। बस एक छोटा सा सेशन और है और उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। कृपया बैठने का कष्ट करें प्लीज। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा और बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। हम लखनऊ वालों की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन, आदाब। I am Dr. Jayanti Srivastav and I welcome you all on behalf of Alliance for Economic and Educational Development for Underprivileged and Integral University to this session 2 of National Conference on Education and Economic Development. I heartily welcome the President, Sir, Executive Director, Alliance Group, Founder and Chairman, Integral University, other honorable guests, delegates, and everyone present here in the auditorium. Today for this session 2, we have a panel of eminent guests. And now I would like to call, with due respect, Dr. Syed Zahir Mahmood Sahab. Yes, Dr. Syed Zafar Mahmood Sahab. Yes. माफी चाहेंगे अगर मैंने गलत नाम लिया हो। सर कृपया आए। डॉक्टर आसिया चौधरी, मिस फराना अलमेर, मिस समीना बानो, Sir, shall we begin? Dr. Syed Zafar Mahmood, sir. Being an Indian civil servant, he was appointed officer on special duty by former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. He also submitted very important Structure Committee report about social, economic and educational status of India's minority Muslim community. And the report he prepared, it was prepared and in form of presentation, it was submitted to Western Reserve University and Harvard University's John F. Kennedy School of Government. There he talked about bridging the gap of economic, social and educational divide of Indian Muslims. He has a number of things in his cap, but currently the most important thing what I found was that he is the founder president of Zakat Foundation of India. While going through his profile, I found that somewhere within his heart, he is an academician too. He is taking lectures in AMU, written number of books and papers related to Harvard University, International Islamic University, Jamia Millia. So with such wide exposure, experience, such a senior person with us, sir, I request you to accept the chair of this session and I would request you if you would like to enlighten us something about your thought on this topic of enhancing youth employability. Sir, you would like to sit here or? All right. Yeah, sure.
I begin in the name of God, most gracious, most merciful, Master of the day of judgment. All praise belongs to Him, and all of us have to return to Him. The topic of our discussion today is enhancing youth employability. Greetings to the enlightened ladies and gentlemen comprising the august audience, and special thanks to Lieutenant General Nabiruddin Shah Sahab, Dr. Qureshi Sahab, Najib Jang Sahab, Shai Siddiqui Sahab, Ansari Sahab and their associates, and very, very special thanks to Professor Sayyid Wasim Akhtar Sahab, Sayyid Nadeem Akhtar Sahab, Professor Javed Sarwar Sahab and their associates, and my greetings to my learned fellow panelists. Here in our topic today, we are using the word employability, which presupposes an employer and an employee. However, ladies and gentlemen, our constitution mandates the common good and warns us against the common detriment. Article 39B says that the ownership and control of the material resources should be so distributed as best to subserve the common good. And 39C says that the operation of the economic system must not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. So the phenomena of common good and common detriment begin from appreciating the significance of equitable distribution of resources in the society. This is also mandated in the Holy Quran, incidentally, 59.7, which says that so that the wealth may not remain confined solely among the rich. However, friends, the sad reality is that both of these constitutional and scriptural mandates are observed more in breach than in compliance. This may be caused by insufficient sanctions and lack of fear of consequences in the human psyche. Thus, breach of the common good does not stir the human conscience. So, one important remedial measure is to keep sensitizing the people. That is the duty of not only the state, but also of the civil society, and more so of the parents and other family members, elders. Adequate upbringing of the children is vital for this purpose. And the state actors too are expected to be the role models. Lowering of democratic standards should not be allowed to degenerate the moral standards. Now, looking inwards, the poet says, Zindagi jehd ast wa istihqaq nes. Life is struggle and perseverance. It's not a right to be just taken away. Zindagi jaddojuhad hai, sangharsh hai, haq nahi hai. Second premise which I am making here for a submission to you, that millat andruni taur par khud kafeel hai. The community is internally self-sufficient, समुदाय भीतर से स्वतः पर्याप्त है. और third submission is that चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से मुस्कुराया करो. That is the solution. उसके लिए we proceed now. We need to invoke the power of charity, coupled with selfless perseverance, which is known in the Holy Quran as Ulil Afwa 2.219. Hardly any people know about it. I also didn't know about it till 15, 20 years ago. So there is the mandate that whatever is required justifiably for you and for your family to have a very good life, that which only belongs to you. The remaining that you have, which I have, God says, which I have given to you, does not belong to you. But I am testing you how much zarf you have got.
how much श्रद्धा you have got to spend it for others. वहाँ कमी है हमारे अंदर. Friends, we are welcoming our upcoming generations to the world of awakening under challenging circumstances. However, the silver lining is that God has blessed many of us, and definitely all of us in this hall, with born capacities to play a useful role in ameliorating the plight of the less blessed. I am educated. I should not allow myself to remain oblivious of the higher spiritual purpose of my life. My mood lesson taken from the current situation is that I have to better understand my faith, and I have to enhance my vigil within the community as well as for the society at large. The real test of a true believer's devotion to God lies in what she or he does during the period intervening two consecutive prayers. That is the reality. So, what is the lesson? We should properly diagnose the malaise and try to change the course of the stream through benevolent interventions. हमें चाहिए कि हम अपनी बेकरारी की तशखीस करें और नेक निहार हिकमत अमली के जरिए बहते हुए चश्मे का रुख मोड़ दें. इसीलिए शायर ने हमको कहा है, और अल्लाह ताला का पैगाम है वो, कि रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का. हम भेज सकते हैं, दैट इज अप टू अस. हम लोग बस ये है कि हम सोचते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दें या हुकूमत पे डाल दें. सो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म आंसर? तवील मुद्दती एम्पावरमेंट थ्रू वेल थॉट आउट सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. जब जरूरत हो हिकमत अमली में तब्दीली कर लीजिए. पॉइंट टू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. अभी किसी साहब ने कहा था तो करना क्या है, डेटा है. मैं वो सब बातें बता रहा हूँ जो करना है. हम में से हर एक अगर कुछ न कुछ करने लगे, और मैं जानता हूँ कि हमारे पैदा करने वाले ने कहा है कि कोई बात किसी को तब कहो जब पहले खुद करते हो. तो मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ वो सब कुछ करता हूँ बहुत दिनों से. सिविल सर्विसेज में एनुअल इनटेक 1100 हुआ करता था, बढ़ के 1250 भी हुआ था. वो काम अभी सुबह जिक्र भी आया, हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, 15 साल से, बहुत कामयाबी है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन एनुअल इनटेक ही कब हो गया, बहुत घट कंटिन्यूअसली घटता जा रहा है यूपीएससी का एनुअल इनटेक. सेकेंडली, देयर इज नाउ लैटरल एंट्री. जॉइंट सेक्रेटरी लेवल जो होता है 16-17 ईयर्स का जब आईएएस ऑफिसर हो जाता है तब वो जॉइंट सेक्रेटरी बनता है. तो डायरेक्ट नाउ अब डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर. उसमें कोई हर्ज नहीं है, गवर्नमेंट की मर्जी है, वो उनका डिस्क्रिशन है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है. लेकिन हमें अपनी हिकमत अमली, अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज दैट? डू एम फॉर द मून बट ट्राई टू लैंड at least in the stars. That is, do prepare for civil services, but also simultaneously appear for central police organizations, state services examinations, staff selection commissions, bank probationary officers, and so on and so forth. There are about 500,000 recruitments, Shahid Siddiqui Sahab, in the country, in different states and in the center. There are 500,000 annual recruitments done at different levels to work for the government. This is other than civil services. And the community is just not bothered about it. We have started this Zakat Foundation of India more than 2 years ago, and I am introducing to you here the convener of Zakat Foundation of India in Lucknow, who is doing this work only, Mr. Atiq Ahmed Siddiqui Sahab. Can you stand up so that everybody would look at you, and we can clap for him also. He retired as Joint Secretary to Government of Uttar Pradesh, and Alhamdulillah has been devoting about 10 hours every day. We have a unit here जिसमें मोर देन 45 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं. ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, रिजल्ट आना शुरू हो गए, सक्सेस हो गई शुरू.
तो ये काम बड़े लेवल पे करना पड़ेगा और इसमें जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल, सबको जुड़ना पड़ेगा। और मैं आपके लिए खासतौर से IDU की तवज्जो इस तरफ दिलवा रहा हूँ। सेकेंड बात यह है कि कुल जमीन की मिल्कियत परवरदिगार की है और उसमें से कुछ हिस्सा कुछ बरस के लिए कुछ अफराद को निगहबानी में, उनकी निगहबानी में दे दिया जाता है। फिर उन अफराद का इम्तिहान होता है कि उनमें कितना ज़र्फ है कि वो अल्लाह की अता करदा जायदाद का इस्तेमाल लेकर ज़रूरतमंद अफराद की इमदाद के लिए कितना करते हैं कि नहीं करते हैं। मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास दर्जनों एकड़ ज़मीन है। तो ये लोग नस्ल दर नस्ल इस ज़मीन में से खुद के लिए सिर्फ अनाज लेते हैं। बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मुख्तलिफ इलाकों में भारी जायदाद है जो उनकी ज़ाती ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। जबकि सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में यह आया है कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया है कि तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है ही नहीं, बल्कि उस पर ज़रूरतमंदों का हक है। लिहाजा जिन अफराद के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन, जायदाद, बिल्डिंग हैं, उन्हें अपनी जायदाद का इस्तेमाल करके तालीमी इदारे कायम करने हैं। दैट इज द सोल्यूशन। ये सब मुमकिन है और ये कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग कर रहे हैं। ये मैसेज जाना चाहिए सबके पास। अब जैसे ये 2.5% ज़कात होती है, हम सोचते हैं 2.5% दे के छुट्टी पा लें। असली इम्तिहान बाकी 97.5% में है। दैट इज गॉड्स स्कीम। वो हम नहीं समझते, इसलिए कि जो 97.5% बचा, वो बचा हुआ हिस्सा किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 10 मिलियन है, किसी के पास 10 बिलियन है। हर एक के लिए ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हारा है, वो कुछ भी करो। नो, सिर्फ ज़रूरत जितनी है हमारी उतना ही हमारे पास है। ये चीज़ जुमे के खुतबे में बतानी चाहिए। जुमे के खुतबे को हमें मॉनिटर करके उसको एनरिच करने की बड़ी ज़रूरत है। ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है? Constitutional mandate is that the state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people. तो हम वो कर सकते हैं, करना भी चाहिए कुछ लोगों को, लेकिन हमें इंटरनली देखना पड़ेगा कि हमें ये मान के चलें कि हुकूमत नहीं करेगी तो फिर तो हम फिर भी जिंदा रहेंगे, फिर भी तो हम प्रॉस्पर करेंगे। दैट इज अवर ड्यूटी। लिहाजा अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में सिर्फ आदम है, ज़मीर कुन फ़का है जिंदगी। इफ यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी रियली लिविंग पर्सन, क्रिएट ए वर्ल्ड बाय योरसेल्फ। Such proactivity is the essence of human life, which must manifest godly quality of creation. क्या करना है? कम्युनिटी रीडिंग रूम्स, कम इंफॉर्मेशन सेंटर्स कायम करने हैं। हर जिस आदमी का घर में एक कमरा फाजिल हो, वो दे दे मोहल्ले के बच्चों के लिए कि यहाँ ये टाइमिंग्स हैं, यहाँ रीडिंग रूम बना हुआ है, इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है। ये करना पड़ेगा हमें छोटे लेवल का। और ये मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वो बहुत इंडिविजुअली एंड इंस्टीट्यूशनली वी हैव बीन डूइंग। We'll have to establish schools, particularly for girls वगैरह। तो रिपीटिशन है। गवर्नमेंट की स्कीमों की बात हो रही थी। HRD मिनिस्ट्री की स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट एंड अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये HRD मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। मैं आपको वो भी दे रहा हूँ, यहाँ लिंक भी दे रहा हूँ। या अभी जो साहब सुबह कह रहे थे कि हमारी प्रॉब्लम है ना, ये स्कीम है। Are we approaching the government for this? अप्रोच करके फेल हो जाए वो अलग बात है, फिर हम है ना मदद करने के लिए। नवोदय विद्यालय के लोगों ने मुझे बताया कि अपने बच्चे, कम्युनिटी के बच्चे अप्लाई ही नहीं करते, उनके पेरेंट्स अप्लाई ही नहीं करते एडमिशन लेने के लिए, जबकि वहाँ एडमिशन जो है उसके क्राइटेरिया के हिसाब से एडमिशन हो जाएगा। तो जो खतीब और इमाम साहबान हैं, they should tell this thing during the Friday sermon. Then very quickly, I'm just running through. We should try that the pre-entry qualification for admission to ITIs is reduced to class 8th. जनरल साहब आपको याद कर लें, मैं आपको आप कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से आपका
कॉन्ट्रैक्ट करवा करके और जहाँ गवर्नमेंट अटक रही है वहाँ कर सकते हैं। प्लीज मेक इट एक इम्पॉर्टेंट इशू दिस थिंग कि ITI में एडमिशन, ये बाकायदा रिकमेंडेशन हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान चुकी है इसको, सेंट्रल कमेटी का रिकमेंडेशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया, लेकिन उसको कम्युनिटी ने फॉलो अप नहीं किया, इस वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ITIs में एंड प्री एंट्री क्वालिफिकेशन जो है दैट शुड बी रिड्यूस टू क्लास 8। उससे आप देख लीजिए कितना जबरदस्त फर्क पड़ जाएगा पूरे मुल्क में। Second, we should try that the scope of ITI courses is expanded to focus on emerging market needs, including those of the retail sector. Skill development, high growth potential जहाँ हो उसमें वो ITI के कोर्सेज में शामिल होना चाहिए। इसकी अगर एक कमेटी बना करके इसके ऊपर वर्क कर लिया जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। The eligibility for ITI admission should be extended to madrasa educated children. This is accepted by the Union Cabinet. Implement इस वजह से नहीं हुआ कि हमने और आपने उसकी कोशिश नहीं की। In private and social life, this is slightly different. In private and social life, people of one community should reach out to the other communities with a subtle purpose to create space in their heart, so that the message of amiable diversity is refreshed. ये भी हमारा एक प्लान होना है बाकायदा सिस्टमैटिक। There is some concept known as alternate admission criteria. कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी गवर्नमेंट ये कहती है हम आपके खिलाफ नहीं है और हम आपके खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, उनको सजेस्ट कर दीजिए कि ऑल्टरनेट एडमिशन क्राइटेरिया ये 100% मेरिट नहीं है, ये भी जस्टिस सेक्टर कमेटी का रिकमेंडेशन है, एक्सेप्टेड बाय यूनियन कैबिनेट, एक्सेप्टेड बाय द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज एक्सेट्रा। फॉलो अप नहीं हुआ, कम से कम उन स्टेट में जहां पर मुमकिन हो ये किया जा सकता है। वो कहते हैं कि 60% मेरिट का कंसिडरेशन होगा टू डिसाइड कि हु विल बी एडमिटेड। फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिशंस स्टूडेंट्स की निकालने के लिए 60% मेरिट, 40% बैकवर्डनेस ऑफ द कैंडिडेट। जो ज्यादा बैकवर्ड होगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, एंड दैट बैकवर्डनेस इज इक्वली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड इनकम, बैकवर्डनेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू विच द स्टूडेंट बिलोंग्स, एंड बैकवर्डनेस और बैकवर्ड क्लास टू विच द स्टूडेंट बिलोंग्स। ये हमने कभी टेकअप नहीं किया मामला, ये इसकी पीछे थोड़ी सी है। Then, sir, we shall be obliged if you could yes, finish up in 2 minutes. Then we will have to consider, the community will have to consider providing hostel facilities for boys and girls in big cities like Lucknow. Okay, then we should also provide tutors for remedial classes. ये तो बहुत आसान है, हर इंडिविजुअल भी कर सकता है, tutors for remedial classes. One more important जो मैं भी आपसे कह रहा था कि we should establish reading rooms and information centers. That we should establish in the masjids. मस्जिद में जो सबसे छोटा कमरा हो वहाँ 5 वक्त की नमाज भी हो, लेकिन वहीं पर एक वॉल टू वॉल कारपेटिंग करके तकिए लगा करके ऊपर शेल्फ और वो इंफॉर्मेशन सेंटर और रीडिंग रूम बना लिया। ये हमने काम शुरू किया है और काफ़ी जगह ये काम काफ़ी मीन्स नंबर वाइज हुआ है, लेकिन जाहिर 91% भी नहीं हो पाया अब तक। तो ये भी आप कंसिडर करें, काइंडली टेक इट अप विद। उर्दू में बुक्स की बहुत कमी है, मदरसा एजुकेशन में आपको बता चुका, मुझे डांट पड़ चुकी है उधर मोहतरमा से, तो मैं बहुत जल्दी भाग रहा हूँ आगे। बहुत सी स्कीम्स जो हैं उसका हम फायदा हमारे बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हम उनको नहीं याद दिलाते हैं। तो हमें बड़ा ज़रूरी है इसकी तरफ तवज्जो देना। ये मैं और आगे बढ़, यस, इक्विवेलेंस टू मदरसा सर्टिफिकेट फॉर सब्सिक्वेंट एडमिशन इनटू इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लेवल। ये सिर्फ जामिया मिलिया, लिविया मसूद यूनिवर्सिटी, हमदर्द और वो करती है हैदराबाद वाली यूनिवर्सिटी, जबकि जो यूनियन कैबिनेट का डिसीजन है वो ये है कि सब यूनिवर्सिटीज करेंगे। उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर 4-6 यूनिवर्सिटीज में भी हमारा काम हो जाता है तो काफ़ी बात आगे बढ़ सकती है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि अब तक आज तो बात नहीं हुई है कभी,
for इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स। अभी क्या है, पहले डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूनिट हुआ करती थी, उसमें बड़ी गड़बड़ियाँ थी। उसके बाद ब्लॉक को बना दिया गया था, प्लानिंग कमीशन ने किया था। वी शुड इंसिस्ट कि विलेज शुड बी द बेसिक यूनिट फॉर डिसाइडिंग कि कहाँ स्पेशल स्कीम लगाई जाएगी। फिर मैं बहुत तेज़ी में आगे बढ़ रहा हूँ। आई थिंक आई एम अबाउट टू कलम ये भी बात आगे बढ़ चुकी, देन ये भी बात हो चुकी है, then I think I'm done. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah says that He will not change the condition of people until they change what is in themselves. So let us get going. Thank you very much. Wa akhiru da'wana. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इतना ज़्यादा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारा समय चाहिए आपको सुनने के लिए, बट आई एम रियली सॉरी टू इंटरवीन एंड बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, अदरवाइज वी कुड हियर यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। सर ने बात की पावर ऑफ चैरिटी, अवेकनिंग द यंग जनरेशन, क्यूरियोसिटी में सर आपने जो एक बात कही वो बहुत अच्छी है कि inquisitiveness and curiosity, if you have within yourself, then definitely it can change the direction of your life and the thought process. और जब ये हो जाएगा तो आपके हालात और आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाएगी। Thank you very much, sir. Next speaker, before I invite Dr. Asya, again very humbly I would request all three of you to please keep it brief, so that we can have a panel discussion. I have certain questions to generate interest of everybody, so that we'll do afterwards. I would like to invite Dr. Asya Chaudhary, who is a pure academician. She's working as a professor in AMU, Aligarh, 14 PhDs, 36 research papers, books, projects, and many more she has in her pocket. She has recently signed an MOU with the University of Houston for the implementation of SHARE program in the Department of Commerce in AMU. Basically to promote entrepreneurial education, hand-holding and networking to establish the business of under-resourced communities. My humble request to Dr. Asya is to please come and share her thoughts with us. Dr. Asya, please give her a clap. A very good evening to all the dignitaries sitting here on the dais and off the dais. So we have to talk in this session about youth and employability. So being an academician and being in youth since last 17 years, I have lots of experiences which I would like to share with you as recommendations maybe. So how do we define a youth? Actually, youth is maybe we can define it as a transition age from childhood to adulthood, that is from dependence to independence, or maybe a phase when one completes his education and moves on to stand on his own feet. And this is very crucial period of his life cycle rather. And this transition age is differently defined. For example, UN defines it the age between 15 and 24. National Youth Policy in India, 2003, considered 13 to 35 years, but later on revised in 2014 between the ages of 15 and 29. Today, India stands with the biggest population in the world, with 65% of Indians being dynamic, young population under the age of 35. And we call them dynamic because youth is the most energetic and productive section of any society. A country's ability and potential for growth are determined by the size and strength of its youth population, which, as already said, that they are the demographic dividends for the country. Which means, that this calls for an economic trigger maybe when the country has more hands to work, which are available at present, than more mouths to feed.
and therefore we are at an advantageous position, but it is believed that this large youth population can see tremendous growth only if the government or we invest in young people's education, skill and health, and protect and guarantee their rights. But unfortunately, after the COVID-19, or maybe during the COVID-19, it hit the employability rate throughout the globe in general and India in particular. According to the Global Employment Trend for Youth 2022 report, India experienced severe unemployment during 20 and 21, and we are still lagging behind. I won't talk about the difference in unemployment between Muslims or other or minorities or other categories, because in general the situation is very particular, and the nature of employment that India is witnessing is very peculiar. It has some very peculiar features. The first one is that we see the data that the unemployment level was as high as 28.26% in 2021 in comparison to 23% in 2018, in spite of the fact that India witnessed substantial expansion in the higher education sector, that is from 38.5 million students studying in 2019-20 as compared to 29.2% in 2011-12. That was a substantial increase, and that is GR has improved, that is gross enrollment ratio, it is improved by 7.9%. So actually, when we look at this data, there seems that there is no problem with the demand and supply of graduates as far as quantity aspect is concerned. But in reality, all the graduates are unable to get suitable in employment, and simultaneously what we see that the industry also struggles to get a suitable candidate. And this situation can be attributed to maybe skill mismatch or maybe skill gap that is existing. There exist three types of skill mismatch. The one is overeducation. At the individual level, overeducation is defined as a form of a skill gap where overqualified people with tertiary education are hired for jobs that are not required for such qualification. For example, maybe a postgraduate in economics is hired as a bus driver. This is because of oversupply. And then they are underpaid also. They have to compromise because of oversupply. Second is skill mismatch in technical education, where people have received the higher education in technical field, maybe in agriculture, engineering or technology, but they end up in working or compromising that do not require that training. Maybe we can say an example that an agricultural scientist is appointed as a director in a firm because the screening was done on the basis of his higher education degree. And the third skill gap is the quality skill gap. For example, a graduate from commerce, he has to do he has to be trained in following the accounting procedure of any particular firm. So because he is educated, he is in commerce, we cannot take it for granted. And then the companies have to spend money on training that person for taking care of the accounting procedures. So, actually the situation is something like a note from the BBC came up, that is, the more educated a person is, the more likely it is that they will remain jobless and unwilling to take up low-paying and precarious informal jobs. Another feature is jobless growth in India. It is a very peculiar feature. The share of salaried employment fell from 29.9% to 21.3% in the last 5 years. And the one of the major anomaly that is witnessed is in these years, that is jobless growth, in spite of the economy growing at more than 7% during that period. The Center for Monitoring and Indian Economy, CMIE, explained that the stagnation in salaried jobs and the sharp rise in entrepreneurship indicated the self-employment people drive much of India's entrepreneurial growth. Actually, see, to become an entrepreneur, maybe the objective is not to create employment, but maybe to get self-employed. We find, usually, I can give you an example, freelancers.
There are so many freelancing journalists these days. So getting so popular. For example, maybe I am going for a conference and there are freelancers from mass communication department. I don't have to pay and he is not jobless too at the same time. And this is because between 2010 and 20, India saw a remarkable rise in the adoption of digital technologies, aided by availability of cheap data, low-cost mobile phones, etc., etc. And it's really surprising that in 2017, freelance workers from India had a 24% share of the online global gig economy. These numbers grew further due to drop in full-time jobs and the rise of remote work during the pandemic. And the third feature is that 70% of the workforce is still engaged in informal and unorganized sector, including self-employment in micro, that is MSMEs, which is, it does not provide a very stable job opportunity or maybe earning opportunity, and it is also, it is not that assured platform. And despite of so many government policies, that is Skill India Mission, maybe Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, etc., youth are still unemployed and they are persisting to a large extent. So the problem is big and it is complicated. Now the question rises on the quality and the pedagogy of a primary and higher education system and the quality of technical and vocational and education training infrastructure. Actually, what we all have already discussed and observed, the general education system is too much focused on grades and careers instead of being oriented towards innovations or entrepreneurship. While industry which craves solution to their problems, academic institutions, they are generally too busy performing routine academic exercises, churning out educated manpower that is often ill-suited to their innovative industries or entrepreneurship. Actually, skilling in India, it is a massive challenge because of the wide rift between the traditional primary, secondary education. Skill deficit can be attributed to many factors. Maybe, the government has made lots of efforts to bring a change in our new education policy, but I think that will take a lot of time because impact can only be seen after it has been implemented. So what we need to do is, the first thing that we need to do is change the mindset. Let us just start with very small step. Just now, Zafar Saab said that parents' mindset have to be changed. Yes, I fully agree with him. As soon as we get our children registered in the school, we have the objective focused on securing a very good job for him. Maybe, he is made to believe since childhood that you are studying to become a doctor or engineer or teacher or maybe a civil servant. What about other things? All are not equally talented. All cannot qualify civil services. All cannot become doctors. So I insist here that the attitude and perception call for a drastic modification. Mindset needs to be shifted from getting a decent job to creating a decent job. Or maybe acquiring something for oneself. But then again, freelancing comes. But that's not a solution for an economy on a large scale. I think the syllabus at the primary and middle school must include entrepreneurship and self-employment activities. It must include internship, skill development activities. For example, maybe they should be trained in production, manufacturing, selling, costing, negotiating, maybe advertising, marketing, because we have to find out the talents, we have to identify the talents from the childhood onwards. Then motivational case studies regarding the entrepreneurs and corporate sector are completely missing from our syllabus. That should be included from the school level, from the primary level itself. The skill deficit in India requires a policy and institutional framework which is based on a partnership between government, industry, educational institution and the civil society. It is very important. We cannot keep away civil society apart and frame anything for them. We have to take them into the partnership. University and colleges are threshold for youth to enter the employment market. So steps are already taken by the government. So many policies are coming in.
I think we have lots of them, but what is more important is required is the earnest execution and implementations of those frame policies. They are not being followed earnestly. Root level तक उनका फायदा नहीं पहुंच रहा है. Another my submission here is that it also becomes, nowadays necessary to blend theoretical and conceptual knowledge. Last semester in all the colleges, because so many people are from academics here, last semester they have, whether science, art or commerce or management, in addition to compulsory research or project work, they all have training, project work or internship already है. और उसके बदले में उनको credit score भी मिलता है बच्चों को. What I suggest is that a student must be provided with an option of startup also. That is, if a student comes up with a marketable research product or research idea, sometimes, in engineering student, they come up with brilliant research output products. If they come out with those ideas, then he should be allowed to initiate a startup in return for a credit score. This thing is happening already in the developed nation. One good example is from the Ecole University in Switzerland. It is the world leading hospitality management university, where we have the dual education approach, that is combining the practical and theoretical learning. Results, it has resulted already in a very high youth employment rates there. And in Russia also, I have some case studies. I have personally known people who have started in the last semester their businesses. They are allowed to do that. The university provides all the aids, that is banking, management, accounting. All the support system is provided. Once the student starts up his own business, he is given scores for that, credit marks for that. And after that, it is his choice. And obviously, एक बार start कर देता है बंदा business तो बंद नहीं करता है, वो चलता रहता है. May I request you to wind up, please? Yes, please. May I request you to wind up, please? Just 1 minute. Right, sure. Okay, and then the next submission is that blending of theoretical and conceptual knowledge also calls for teaching the subjects practically. All the subjects must be taught practically because, our academic system is learning, mugging, and it is, I always call it a copy and paste system. Because we are just mugging and pouring it out in the exams and getting scores, and 90%, 99% we are brilliant. No. We are just cramming things. All the subjects must be taught practically. For example, the MOU which ma'am mentioned just now, that is entrepreneurship is taught to the students of commerce in the University of Houston. That is by supervising and guiding an entrepreneur under himself. A student is guides and they teach them how to start a business, and that's where they make some underprivileged community people to start their businesses. And fortunately, I got this MOU signed, and we have already implemented in the AMU in the Department of Commerce, and we have gone through 2 workshops with very successful results. The commerce students become the consultants. They help the people who want to start a business from underprivileged communities or engineering student, and we have very, good results this time also and previously also. So this must be a part of curriculum now. It's high time it must come in India also. And finally, I would say that the CSR mandates must also be liberal for an appropriation of entrepreneurial skill development workshops and university program. So to conclude, India has a large demographically diverse population. However, investment in science, technology, and innovations are not yet translating into the desired growth reality which was needed. So realizing that innovation-led entrepreneurship development holds promise for growth, the government has already taken major policy initiative, but its success depends on its implementation and execution. However, the new direction reflects a strong growth aspiration and resonates with the zeal and zest of the youth, who must be prepared for the adventurous path of innovation-based entrepreneurship. Thank you. Thank you, Dr. Asya. Thank you very much. Thank you for such a comprehensive talk. You have covered so many things and in a very interesting manner. Thank you very much.
I have an interesting question and I would like to discuss with you once everybody is through. So next, our eminent guest is Miss Farhana Alwell. She is an academician. I would call her an innovative academician as she is into the training of NDA, which prepares the scholars for the defense services. She's from Pune and contributing and helping the students in a very innovative way or motivating them to join defense services. Plus, she's told me that she's also doing something for the competitive exams. Ladies and gentlemen, let's hear it from Ms. Farhana. Please clap for her. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good evening to all the dignitaries on the dais and off the dais. Before starting my speech, I would request, I would certainly promise to few of the dignitaries sitting in the front row, especially Kundu sir, if you can hear me, and some of the dignitaries, I promise that I would not make you sleep during my speech. I understand that this is a very cozy environment for everyone, but a few minutes from my end, and I hope Kundu sir is awake and available. I would like to take few minutes from you regarding. Thank you so much, sir. Regarding the topic of today, enhancing youth employability. अब employability क्या होता है? The Indian youth, if we see through the statistics, yes, Kundu sir gave a very, very statistical PPT in his presentation. And the youth, as mentioned by Zafar sir also, that 65% of Indian population is of the youth under the age 35. And out of the 65% of population, 50% of population lies between the age of 19 to 24, which is a major gap. And out of it, the community, what we are talking about, हमारे community के अंदर ये बहुत एक setback है कि उनमें से 80% of the community, 80% of the youth are not aware about what are the employabilities available here provided by the government of India for the youth. I, serving as the academic head for an organization called as Anis Defense Career Institute, train the students from class 1 to graduation for all sorts of competitive exams and defense services. Under this program, a very, very effective scheme is being run by Government of India. Most of you all might be aware of it, and President Sir, Lieutenant Sir would be aware of it. The Agnipath and Agniveer scheme provided for the youth of after 10+2 equivalent. अब 10th के बाद मोस्टली हमारे कॉम में लोग बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं हम मुलाजिमत नहीं करेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम हमारी जिंदगी के खुद बादशाह है, हम करेंगे तो तिजारत करेंगे, चाहे वो केले का ठेला ही क्यों ना हो, हम ठेला बेच के कमाएंगे सारी उम्र 60 साल तक. अनफॉर्चुनेटली नॉट टू से बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, उनका क्या होगा वो अल्लाह ताला देखेगा, हम हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट अवेयर ऑफ द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट. अग्निवीर अग्निपथ में आपको आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जज नहीं किया जा रहा है कंप्लीटली, आपको आपके फिजिकल अपीयरेंसेस के बेसिस पे और 50% ऑफ एकेडमिक्स, अगर आप 10th पास है 12th पास है तो आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप ये स्कीम्स के अंदर जाए. और इसका फायदा क्या है? ये एक लौता गवर्नमेंट का स्कीम है जहां पे गवर्नमेंट खुद पैसे दे रहा है यूथ को कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, आपको सैलरी मिलेगी पर ईयर. स्टार्टिंग द सैलरी, द फर्स्ट ईयर द सैलरी फॉर एन अग्निवीर और अग्निपथ कैडेट और कैंडिडेट is 21,000 per month. Second year it goes to 23,000, the third year it goes to 25,000, and at the end the fourth year it goes to 28,000, amounting the sum to around 11 lakhs. After the complete candidates is 11 lakh rupees in addition, which goes to approximately 22 to 23 lakh rupees in after completion of 4 years. ये हम
लोगों को, हमारे यूथ को पता नहीं रहता है। What they consider is माँ के लाडले रहते हैं, वो हम सरहद पे क्यों जाए, हमारी जान क्यों लुटाए। Instead of that, हम ठेले पे केले बेचेंगे। That is much more secure for us. सोच बदलने की जरूरत है यहाँ पे लोगों का नजरिया बदलने की जरूरत है। NDA, National Defense Academy, is one such course for all the youth, including the girls from last year. Thankfully, the girls are also allowed for the NDA course, and this is the only course which gives employment immediately after class 12. आपको graduation तक की भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम लगे रहते हैं ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो। जैसे मैम ने भी कहा, there are 3 different categories of employment. The first category is the higher education category, जहाँ पे एजुकेशन ज्यादा हो जाता है और एक कंडक्टर का काम कर देता है इंसान। कंडक्टर पर से याद आया, हमारी जिंदगी, हमारी यूथ की जिंदगी एक कंडक्टर की जैसी है, जिसका कोई गोल नहीं है, कोई एंड नहीं है सफर। वो सिर्फ एक बस से दूसरी बस में जा रहा है और अपनी जिंदगी बिता रहा है। In comparison to the 80% of different community people who are striving hard towards the growth in terms of educational criteria. Our education is not taken ahead for employability. That should be the focus area. And under my mentor, Sir Anis Kutti Sir's mentorship, he has taught me that we should always be learning to give ideation to execution. Ideas तो बहुत सारे मिले, इस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे डिग्निटरीज ने अपने अपने आइडियाज डाले। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि इसके कॉजेस क्या है, लेकिन एग्जीक्यूशन इज वन पार्ट विच वी लैग हियर। हम बातें तो बहुत कर लेते हैं, कॉजेस तो बहुत निकालते हैं कि ये कमी है, वो कमी है, हमारा यूथ आगे क्यों नहीं जा रहा, उसके ऊपर हम काम क्या कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूशन क्या कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन एक छोटे एज से शुरू होना जरूरी है। हमारे स्कूलिंग सिस्टम में भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। हम जब बोर्ड्स पढ़ रहे हैं, बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं? As ma'am rightly said, हम रट्टा मारना सिखा रहे हैं। We are giving them rote education, and thankfully the NEP 2020-22 has certain focus towards the skillful development of children by the 5334 scheme for children. We look ahead कि NEP कुछ changes ला सकता है। हम हमारे बच्चों को एक सेट स्टैंडर्ड से पढ़ाते जा रहे हैं और उसके अंदर 3 लोग जिम्मेदार होते थे अभी तक, स्टेक होल्डर्स, द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स से एसोसिएटेड एक पेरेंट होता था और एक टीचर होता था। स्टूडेंट अच्छा करता है तो टीचर बोलता है मेरी वाह वाह, पेरेंट बोलता है मेरी वाह वाह। स्टूडेंट बुरा करता है तो टीचर बोलता है घर पे ही सिखाते नहीं है, पेरेंट बोलता है टीचर ही नहीं सिखाती। But this system has to go ahead. That's why we are teaching the hexagonal theory to the students and the teachers. Very, very important here to enhance and enlighten our teachers. We believe in educating the educators. हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉम है टीचर्स का, who are having the degrees, the paper degrees are there, maximum degrees available रहती है, लेकिन जब वो क्लासरूम में सिखाने के लिए जाते हैं तो वो उतना डिलीवर नहीं कर पाते। They do not know what to be delivered specifically for the students. We are still going into the aged and traditional way of education. Here we would like to enhance, especially from my team of ADC, I would like to enhance the importance of competitive examination in the life of a student. We should not restrict our children only to be good into our academics, schooling curriculum and academics. We should also give them the enhancement of reaching out to various competitive examinations. These competitive examinations starts from a very, very early age of class 3. Even now, as I was going through the prospectus, there was an advertisement of NTI for the Olympiads. Yes, Olympiad is also one of the category wherein a student from class 1 can go ahead in terms of education in comparison to the peers.
So enhancing competitive spirit in the students, especially of our community, is very, very essential and important. For that, the government has provided many competitive examinations. I will certainly like to name some few, like the RMS examination, RIMC examination, Sainik School examination. Sir rightly said about Navodaya examination. It happened to be that Navodaya examination is being conducted throughout the India, pan-India today, and in the morning session from 9 to 1 o'clock, the Navodaya exam is being conducted. This is the examination, this is one of the only examination run by the government of India, wherein a student who clears the examination gets a scholarship of 5 lakh rupees, inclusive of the stay, educational, stationery and food. क्या हमें ये मालूमात थी? और हर नवोदया, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदया है, उनमें से हमारे कौम के बच्चे कितने आगे बढ़ पाते हैं, कितनों को उसकी मालूमात रहती है? हमें मालूमात ही नहीं है, इसीलिए हम एक सेक्ट ट्रेडिशन में जाके बढ़ते जा रहे हैं. There is a point where we should pause and think upon. 1 more minute, please. Yeah, last minute. Now, talking about the girls also, in the community, there has to be an upliftment for the girls, especially. Most of the parents believe that after a certain age of time, the girls should not be studying. And if they are very, very scholar student, इत्तेफाकन ऐसा हो जाता है, मैं बहुत बार स्कूल विजिट्स के लिए जाती हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ, स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग गाइडेंस के लिए जाती हूँ, तो एक स्कूल आई थी, एक गवर्नमेंट स्कूल थी, गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल, वहां पे बच्चियां थी 12th स्टैंडर्ड तक, उनको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका एम क्या है, व्हाट इज योर एम आफ्टर क्लास 10th and 12th. Unfortunately, this was the first time where the answer came in which I was not expecting. Out of a group of 150 girls, 25 girls raised their hands to become doctor. 25% of the students raised their hand to become doctor, rest all. And this was a community school. बाकी सारे 3 काम में लग गए. उनके जिंदगी का मकसद था 3. फर्स्ट, मेहंदी का कोर्स करना. सेकेंड, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना. थर्ड, सिलाई बुनाई करना. That was very, very unfortunate to hear कि हमारी बच्चियों को एक सही प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है. जो बच्चियां डॉक्टर बनना भी चाह रहे, I should not be a better person to tell you about the medical streams, the years which a student inculcates and the amount of money which goes into medical field. I would like to enlighten about one particular course called as the MNS course, Military Nursing Service course. एक ऐसा कोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जहां पे क्लास 12 के बाद आपके नीट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको MNS का ग्रेजुएशन डिग्री मिलता है. यू गेट अ 3-star ऑफिसर ग्रेड जॉब along with stipend per year for studying, and the stipend goes approximately 1 lakh per month. ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, ये सिर्फ बच्चियों के लिए. लेकिन हमारे बच्चे को, कितने बच्चियों को इसकी मालूमात है? There are degrees provided. Just last, there are degrees provided by IIT Madras. ऑनलाइन घर पे बैठ के बच्चियां पढ़ सकती है. डेटा साइंस का कोर्स आप अगर सर्च भी कर सकते हैं. डेटा साइंस का कोर्स IIT मद्रास प्रोवाइड कर रहा है. घर पे बैठ के बच्चा IIT जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट से BSc डिग्री प्रोवाइड कर सकता है. that can enhance their employability. There are many such courses which needs to be enlightened, and we should be working together. Only then we can grow together. As ma'am rightly said, I need to wind up, and I hope my little speech was beneficial for all. Thank you very much. Indeed, it was. It was very good. Thank you very much for such an aggressive session. Farhana ji, I would like to add one thing when you said that students gulami nahi karna chahte hain aaj ke bacche. So I think it goes beyond the boundary of the caste, creed and any regional this thing. You know, it is the problem of the young generation. The complete generation wants the easy money. Or there is a category who attains good degrees, who get good jobs, but find out where they are after 1 year, after 2 years.
they will not sustain that. Because वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, उन challenges को bear नहीं करना चाहते, तो वहाँ से वो withdrawal start होता है. So that is also one of the issues I wanted to add. Thank you very much. Our next guest is Samina Bano. Samina is an Ashoka and Acumen Fellow, Gates Foundation Goalkeeper. She is in the recipient of Abul Kalam Award for Innovation in Governance. She is the founder of Right Walk Foundation, which is working in the field of right to education. And I think she is working in the field of students bringing in the mainstream through the Right of Education Act. Samina, I would welcome you to please give a talk. Thank you very much. Thank you. Being the last one, I'm sure not many have the patience to hear me out, but I'll keep it very short and to the point. Thank you very much for inviting me here. And I'm so glad to see some familiar, illustrious faces over here whom I have seen only on TVs. So thank you so much for being here and inviting me on this platform. I'll keep it very short. I think I would not like to mock our youth because the kind of situation and kind of environment they are facing is entirely different from the childhood that we had. And I'm not very old. So just one generation difference is so much. This youth has smartphone, internet, social media, Facebook, Instagram, Twitter. The kind of pressure, imagine the kind of peer pressure and everything they're going through. It's extremely difficult and different. I would not call them that they do not, they're irresponsible, they don't care about their life, and they just want easy money. I think it's far more complex than that, and we need to understand, they are going through a completely different scenario. And this is the era, this is the age where a generation changes in 5 years. Because of the technology advancement, technology is changing so fast. So today, so imagine from 1900 till 2020, all the data that we have produced in those 100 years, the data and information we have produced in those 100 years, today we produce every 15 minutes. There is information overload, there is data everywhere, there is technology change every moment. So we also need to be cognizant of the fact that youth is experiencing a completely different environment that we have seen, and we have to be a little empathetic about that. We need to understand them, what they are going through and what they really want. So ChatGPT, you must have heard about that. How many of you really know ChatGPT? It's like another internet, like internet revolutionized the entire system, entire world. ChatGPT, that AI, artificial intelligence is going to do that. I mean, the world of employment and jobs is going to change so much that we are talking about youth employability. Yes, it's important. We also have to be cognizant of the fact that employment is going to change so much. So we have to keep in mind how the employment of future is going to look like. So ChatGPT, today, a lot of my work getting done by ChatGPT. I mean, I can write my speech, I can create art, I can do creativity. I mean, I'm saving like 2-3 hours, 4 hours of my time on ChatGPT, AI, and this is just the first generation. Imagine just in few years, 2 years, half of our jobs will be done by AI. And then the kind of jobs we are doing is going to be extremely different. So we have to be aware of, we have to adapt ourselves to those new realities. Like Zafar Saab said, that new age technologies, new age courses should be taught in ITIs. And I'm not just working in right to education, I'm also working in employability skills, I'm working in apprenticeship. And I'll talk about that. That we have heard all the statistics here, so I will not repeat any of the statistics. We have heard all the challenges with youth employment, skilling, employability, and everything. I will not repeat any of those things. I'll talk about solutions. Yes, employability is a challenge today. There are companies, I work in apprenticeship scheme and I work in implementation of government schemes. So there are multiple schemes, but we are talking about, people don't know about it. And that's where we come in. My organization, Right Walk Foundation, is dedicated to identifying such government schemes and taking it to people and making sure it's getting implemented. So there are 2 schemes we are currently working on. One is Right to Education and another one is Apprenticeship Scheme. An apprenticeship scheme is a brilliant scheme of solving India's skilling and employability challenge together. So I'll talk more about it, but here, before going into that,
I wanted to touch upon how employability is like where exactly the problem lies. So one side we have industries and establishments who are looking for manpower, and on the other side we have students who are unemployed and they're not able to find jobs. So what is really happening is the employability gap, and this employability gap is happening because of our poor education system in schooling, and then it gets aggravated in our higher education and then vocational education, and the result is we have unemployable youth. I run my organization, I have more than 70 people in my organization. When I try to hire, I have got people with MBA degrees and they can't utter a single sentence properly. They can't do simple plain mathematics. So, and it's not their fault. I don't mock them for not being able to do that. It's not their fault. The fault is our education system, our government schools, the kind of education, the quality they are providing. Even many low-cost private schools, the budget private schools, all these school education, I mean, they're not providing high-quality education. And all the rich guys, all big bureaucrats and everyone, all people with privileges, they're sending their children to elite private schools, which are exclusive spaces. So as long as we are exclusive, we are not allowing poor people or underprivileged people to come and use our spaces of schooling and skilling, then until we do that, we are not going to change. And I'm one of the examples. Like my parents, I come from a very orthodox Muslim family. None of the girls in my family went to school, and they had no plans of sending me to school. So thankfully, because of Indian Air Force job of my father, he went into various cities and we got access to Kendriya Vidyalaya. And Kendriya Vidyalaya is one fine example of government school, which is also inclusive. So a station commander's child and a peon's child will study in the same classroom. So that is the beauty of Kendriya Vidyalaya. It's government school, it's affordable and it's inclusive. And that's what gave me the opportunity of completing good quality education. And then I went on to doing engineering and MBA. I did MBA from IIM Bangalore. I worked in semiconductors. I worked in the US as a management consultant. And today I came back and I started my own organization and I started working with governments to implement government schemes. So right to education, why I'm working on right to education? Because this provides 25% seats for poor children in private schools for free, 10 years of free schooling from nursery till class 8. This is one opportunity I would urge everyone. This is my call to action. I would urge everyone, if you find any child in the age range of 3 to 6, this is early childhood education is extremely important for later employability skills. Yes, I'm finishing. If you're calling me out. So, yeah, so if you are, I mean, it is a call to action. If you're finding any such poor children in your locality, please apply, help them apply for RTE seats. Applications are still going on. And 10 years of free schooling, they will get good opportunity. And today, in fact, we have several students who've completed 8th standard from extremely poor background, all Hindu, Muslim, Dalits, all kinds of children. They are doing so well. I mean, because they got opportunity to study in a very high class DPS, CMS kind of school, then look at their confidence. They were speaking in English. An 8th class, 14-year-old girl. She said she spoke in English. We launched one RTE Scholars Fund yesterday, and it's all over in newspaper today. Today, Hindustan Times, you should check. We have a story. So she's speaking in fluent English, and she started a business of her own. And she started her business because she joined some digital course somewhere and she learned about Instagram business model, and then you can sell your stuff on Instagram and you can start making money. So, and she became employable pretty much at the age of 14. And then you have apprenticeship scheme. There's another scheme which we are working on. Any establishment with more than 30 people in their organization, be it government, non-profit, for-profit, any organization, even Integral University, you are required to hire 2.5% to 15% of your manpower, apprentices from ITIs, DDU, GKYs, and PMKVYs, all these skilling and vocational institutions, like Sir spoke about ITIs. So this is one program where we are working. It's a policy which exists for a very long time, but not getting implemented. And it's an amazing, beautiful policy. So you're getting all these children, say students coming from ITI, they can be hired as apprentice in any institution for a period from 6 months to 36 months, and they get stipend ranging from 7,000 to 9,000 per month. And out of that stipend, 1,500 comes from central government
And some of the states are providing top up. Like UP is providing another 1,000 rupees. Maharashtra is providing 3,500 per apprentice per month. So in UP, if you're hiring an apprentice and you're paying, say, 7,500, 2,500 is coming from the government. Your cost is only 5,000. You're getting cheaper workforce. You do not have to comply with any PF and the ESI kind of things. And you can train them and skill them. They are getting some experience, and after that, now just finishing it. Yeah. So once they complete, now it's an important piece of it because here there's a call to action. So once they complete their apprenticeship, they become employable. They get a certificate, and they can be employed either in the same company or they can be employed in another company. And their employability, the overall capacity to earn money goes higher. And we have enabled like 60,000 students from UP, get apprenticeship in various companies. We are also working in Odisha, Maharashtra, Kerala, and Gujarat as well. So this is one opportunity. You can identify any youth from ITIs and you can help them get into apprenticeship in any establishment of your choice where they can actually get paid and they get an opportunity to learn as well. So yes, I will not, not speak any further. So thank you very much. Thank you very much for a comprehensive talk. And with this, we come to an end of this panel's, thoughts and expression of opinion. I would invite a couple of questions if you have any. Yeah, I would request the host to please provide a mic there. Yes, you may please. Kudos to this almost female panel, sir. Excuse me. Nice to see women part, and you guys were excellent. Very, very engrossing session. You girls were excellent. And you can also shout. I can say without. You start by the time mic reaches you. Yeah. Okay, my name is always Larry. Okay, and I'm the director for Travel Business School Dubai, UAE. So I would just like to add on what Dr. Asia said for entrepreneurship development, right? So we are already running a program in UAE Dubai for entrepreneurship, wherein we are giving all the input that she is suggesting here to be done in India. So we are already doing that in Dubai, right? So it consists of 1 year of personality development and personality transformation for students, and mental and physical health regulation. All right. Then there is also membership for business networking club that we give to the students. And the good part is that at the end of the program, they need to submit a project for establishing a business. And the best project is getting a startup seed funding from our institute itself. Oh, that's great. I think, we are looking forward that we have such things in India also. Is it from a school level? This is a management institute. No, yes. See, these kind of programs at our IIMs, we also have it. Yes. But do they reach to the grassroots level? No. Yes, exactly. Yes. And the charges, the fees are so hefty, it's not affordable for everyone. So my submission was it should start from the school level. For example, I remember in my school we had fete once a year, I think. There we had to make something and sell. Exactly. That was, I think we learned some business activities from there. So my idea was that you practically inculcate since childhood. I'm not saying do away with doctors, engineers, teachers. No, my submission was in addition to that. Yes, it's really good. This talent must be identified and explored, and it should be nurtured since school. Okay. We want to start the same thing in India itself. We're looking for to partner programs wherein not only the elites who can afford the education in Dubai, but even students from India who are working over here and have sincere submission to entrepreneurship, come up with the project, and we would like to finance them. We would like to help them in seed funding for that. So that is me, because I'm doing the same in the SURE program. That is great. But I'm not charging money from them. We won't do that. Okay. I'd like to connect. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, gentlemen. Thank you. Any other questions? Yes, please. May the mic be provided to her, please. Thank you.
Hello, Assalamu alaikum. My question is to Mr. Zafarji. Although I should first introduce myself. Myself is Zakia Khan, and I'm the founder and director of Zakia Hamdard Foundation. We are much more into women's empowerment, and I have handled more than 40 POSH cases and domestic violence cases. My legal activities are very strong because that work on the understanding. There is no payment involved. But apart from that, since we have started into hospitals and now into education as well, once that challenge comes, a big round of zakat is required, or any kind of fundraising is required. Okay, we have put it in every kind of efforts, but apart from three, including me, my brother, and one of my aunt who is in US, I'm not getting any kind of support. So, what exactly a help could be arranged? I don't want any kind of financial. Maybe like I have worked with madrasas also, and I need projectors and laptops things so that we can conduct online classes for them. A lot of madrasas are involved. I'm also searching somebody who can connect me with the licensing for those madrasas, to convert those madrasas into primary and secondary and nursery schools. Why? Because establishing a separate institution is not going to give us a solution. But if we can conduct from there, and according to their time zones, like we cannot start the classes from morning 8 to 1 2, because in between there is salah, everything. So we have to go according to the time schedules there. We need volunteer teachers. That all I have. I need only the interest thing. uh, how you could be, or anybody in this could be a support for us. Two things, for the infra and for the licensing purpose, to get all kind of. You want basically the support in kind. In kind of like projectors required, laptops, and the license Which process. can support the women. Not only women, Not only women, anyone. Everyone, and not only including Muslims. We have a lot of. In general, you want At zakatindia.org. I believe I have connected with that, but I didn't want any. I think let us not get into the debate. You write a mail on that, and maybe give a reference of IDO session being held here now in the subject, and write the details. You can keep us also in the copy. Sorry? Behind. Sir, can we take two questions or one? You are the chair, you decide. Last two questions. So the girl, please. We are coming to you after her. मेरा क्वेश्चन समीना मैम से है. मेरा नाम अंजलि ताज है. मैं नवनीता फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ. मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते, पर हम उनको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं. करीबन अराउंड 100 स्टूडेंट्स हैं, पर हमको इतनी गाइडेंस नहीं है कि हम उनको कैसे स्कूल में दाखिला दिलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लैक हो जाते हैं. हम 5-6 बच्चों को स्कूल में पढ़ा तो रहे, प्राइवेट स्कूल में किसी न किसी के स्पॉन्सर के थ्रू, बट हम बाकियों को भी पढ़ाना चाहते हैं. तो उसके लिए हमको आपसे गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए कि आप हमको गाइड कर पाए. तो उसके लिए हमको आपसे कनेक्ट करना है. जी बिल्कुल. अगर आप जिन बच्चों को आप सपोर्ट कर रही हैं वो अगर 3 से 6 साल की उम्र के हैं, तो उनका एप्लीकेशन तो इमीडिएटली भरा जा सकता है, और हो सकता है अगर उनका आरटी में नाम आ जाए तो 10 साल तक की फ्री एजुकेशन उन्हें मिल जाएगी. और अगर उससे बाहर की एज के हैं तो उसे अलग तरीके से हमें दूसरी स्कीम देखनी पड़ेगी. और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, मेरे कोलीग हसन वहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे कनेक्ट कर लीजिए एंड हमारी टीम से आप कनेक्ट करके विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन. थैंक यू. The gentleman at the back. Assalamu alaikum. I am Fazlur Rahman, belong to a village, district Azam. I am running an inter college. May I talk in Hindi? Yes, please. I can talk. जी. Yeah. मैं एक इंटर कॉलेज चलाता हूँ और
लगभग 20 साल से, एंड आई वाज यंग। बच्चियों का स्पेशल मैं इंटर कॉलेज चलाता हूँ, ये मान्यता प्राप्त यूपी बोर्ड से है। मैं उस कंडीशन को फेस करता हूँ, शायद आप में से बहुत सारे लोग उस कंडीशन को नहीं जानते हो, न देखते हो। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नजीब जंग साहब का, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ बैठी हुई पर्सनालिटीज के बीच मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। और सैयद जफर महमूद साहब, इनकी मैंने बहुत सी स्पीचें सुनी है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में मदरसा बैतुल उलूम में गए थे, तो मैं वहाँ, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब का मदरसा है, वहाँ बहुत अच्छी स्पीच दिए थे, तो मैं उसका तस्करा करता रहता हूँ। इनके सजेशन वहाँ बहुत लोग आज भी चर्चा करते हैं, तारीफ करते हैं। थोड़ा सा अपना क्वेश्चन शॉर्ट करें जी। 2 चीजें, हमारी बच्चियां जो गांव से बिलोंग करती, जब मैंने स्कूल खोला तो मोरबी वेयर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। एक तो एकदम मुखालिफ हो गए, फतवा लगा दिया, बच्चियों का स्कूल खोला, और एक ने मेरा सपोर्ट किया। तो बच्चियों का खोलने में मुझे काफी दिक्कत हुई, बच्चियों के स्कूल चलाने में, इंटर कॉलेज चलाने में काफी दिक्कत हुई। तो अब 2 प्रॉब्लम मेरी है। बच्चियों के अंदर सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ, कुछ कर पाने की क्षमता इस वक्त जितनी पाई जाती है, इससे पहले नहीं थी। और हम जैसे लोग जब स्कूल खोलते हैं तो हमको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उन बच्चियों का एक खास चीज ये है कि हमारे इलाके में कोई ऐसा आप लोगों के पास कोई प्रोग्राम है कि हमारे यहाँ की बच्चियां अगर नीट वगैरह टाइप की कोई तैयारी करनी चाहें, तो कोई ऑनलाइन कोई ऐसी चीज कि वो उनके पास टैलेंट है, तो उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, उनको कैसे वो चीज प्रोवाइड की जाए कि वो वहीं बैठे बैठे उनको देखिए, एक सच्ची बात है कि उनको गार्जियन आने नहीं देगा, पर्दे की वजह से। वो हमारे ही स्कूल में बड़ी मुश्किल से आई है, फोटो खिंचवाने की वजह फरहाना से। जी, I think you can take it up. Please answer the question. थैंक यू। आप फरहाना जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी कराती हैं, आई थिंक वो आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। It will take a second. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आई होप मेरी आवाज आ रही है आप तक। ये इनिशिएटिव जो आप ले रहे हैं और इंटर के बच्चियों को जो पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम इस तरीके से मदद करना चाहेंगे। हम ऑनलाइन कोर्स ADCI की तरफ से, अनीस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री ऑनलाइन कोर्स आपके बच्चियों को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए, ताकि हम कोई भी बच्चे यहाँ पे, स्पेशली द गर्ल्स आएंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ हम एक और इनिशिएटिव चला रहे हैं, जैसे सर बता रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो भी बच्ची पैन इंडिया 12वीं पास कर चुकी है और उसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पढ़ाई करनी है, ADCI पुणे महाराष्ट्र में वो फ्री आ सकती है। फ्री अकोमोडेशन में उसकी फ्री पढ़ाई और तालीम करवाई जाएगी। तो ये भी एक इनिशिएटिव हम जो चला रहे हैं। बट हमारे इधर की बच्चियां को कहीं जाने की इजाजत आज नहीं, ये मैं दूसरों के लिए ऑनलाइन ही कुछ हो सकता है। ऑनलाइन के लिए हम वही जरिया बन सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हम फ्री में आपके बच्चियों को पढ़ाया सके। उसके साथ साथ एक और बहुत उम्दा चीज है कि टीचिंग दी टीचर्स, एजुकेटिंग द एजुकेटर्स। जो टीचर्स भी आपके पास देहात में होंगे वो उतने क्वालिफाइड शायद ही होंगे कि उनके पास कोई जरिया है पढ़ाने के लिए। हम पैन इंडिया फ्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स चलाते हैं, जहाँ पे हमारे टीचर्स, एकेडमी के टीचर्स आते हैं और आपके स्कूल तक आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आप हमें आपके यहाँ पे एकोमोडेशन का थोड़ा सा अगर जगह दे दे रहने के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, तो हमारे टीचर्स बाकायदा फ्री में आएंगे। और हमारे यहाँ पे जो टीचर्स है माशाल्लाह 85+ टीचिंग स्टाफ है, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स, IIT लेवल के, NIT लेवल के टीचर्स हैं, जो आपके यहाँ पे आके पढ़ाना मुनासिब समझें। Thank you. Thank you very much, Farhana ji. Thank you, gentlemen. You asked the question. Thank you, audience. And now, have one more. अच्छा, आप कुछ पूछना चाहिए, बस प्लीज कीप इट वेरी ब्रीफ। हाँ प्लीज। जी जी जरूर। मेरा वैसे मुझे सारे जवाब मिल गए इन तीनों से, बट स्टिल मैं जफर साहब से पूछना चाहूँगी और फरहाना जी से भी कि बिहार और समीना जी से भी कि बिहार में इन चीज़ों को हम कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। बिकॉज बिहार में विलेज है हाजीपुर में, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ बिल्डिंग है, मॉस्क है, मदरसा है, बट देयर इज नो अदर फैसिलिटीज। देन हाउ
मैं कैसे उनको मोटिवेट कर सकती हूँ, और मैं ये सिर्फ मदरसा वाली पढ़ाई नहीं, उसके साथ बेसिक स्टडीज प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। और फरहाना जी, आपसे एक सब सवाल है, जो कि अग्निपथ और अग्निवीर की बात हुई, जैसा कि अभी सारे चेंजेस हो गए हैं, बिकॉज नाउ 21 साल के बाद वो नहीं कर सकते, वो 4 साल का ड्यूरेशन हो गया है। तो उसमें आई मीन ये इसको अगर जो बच्चे, और इसमें वो बच्चे आते हैं जो बहुत ही बिलो पॉवर्टी से मतलब बहुत मेहनत करके मुशक्कत करके आते हैं, बट 4 साल वो काम करेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो इसका फिर आज की डेट में क्या फायदा है? चलिए आपका आंसर लेते हैं जफर सर। जो आप कह रही हैं बिहार में कैसे हेल्प हो सकती है, वो तो आप अंसारी साहब को ईमेल करेंगे, आईडू को, है ना, and we'll connect you with the NGOs in Bihar who will be able to help you. info@idu.co.in. Bihar chapter of IDU will help ये लेना। Regarding the training for the students and teachers, जैसे मैंने कहा कि टीचर्स के लिए हम आपके टीचर्स को ट्रेन करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हम फ्री में ऑनलाइन के जरिए आके आपके टीचर्स को सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, ताकि आपके टीचर्स आपके बच्चों को पढ़ा सके। As far as Agniveer and Agnipath goes, there is one more clause in it that after the completion of the course, 10% of these students are directly being recruited into the Indian Army, Navy and Air Force. And after the 10%, the remaining people are being taken by under the CSR schemes of top level MNCs, like Tech Mahindra has already started, and Tata Services has already started taking the employees who has served for 4 years under Agniveer and Agnipath recruitment. They are giving them direct services. So this is also a consideration which we should be considering, irrespective of going and living a mediocre life. Thank you very much. आईडू की तरफ से हमारा एक रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, तो वहाँ पर अभी हमने एडवर्टीजमेंट दिया है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जर्नल में, और हम 10 रिसर्च स्कॉलर्स को 50,000 रुपया का जो है सपोर्ट करेंगे, और 10 जो है रिसर्च पेपर्स अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करेंगे। तो जो सोसाइटीज या जो रिसर्चर्स हैं वो चाहे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। Thank you, Khalidji, for providing us the information. I think the lady is satisfied now. You can proceed further. So, thank you very much, ladies and gentlemen, and the dignitaries present here. With the permission of the chair, sir, can we conclude the session now? Yeah, so I declare the session as concluded for today. It's time to felicitate our guests who came out with their precious time. For that, I would request Lieutenant General Zamiruddin Shah, sir, to please come up at the stage and felicitate our guests for the day. Sir, I would request you to please felicitate Zafar sir first. Thank you, sir. Dr. Asia, please. Thank you, sir. Farhana ji. Farhana ji photo. That is very important. Samina ji. And sir, excuse me, sir. So with the permission of the host, would you like to felicitate me also?
I am not an outsider here. I'll tell you. So, Akhtar sir is not here, but whosoever is here, kindly convey my regards to him. I am an alumni. I did my PhD from here. I think Junior Akhtar sir is here. So I was just, forwarding my gratitude to the university by saying that I am not an outsider. I passed out in 2017. I pursued my PhD from here while working in the other private university. And I got all the love and affection and so cordial relation here. That is why when Khalidji approached me and I asked that, which is the venue? He said Integral University. So I said, no, there is no issues. Of second thought, I'll definitely come. Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you very much for the evening, and I hope that you will have a wonderful day tomorrow also. Thank you very much. Good night.